Cambodia, they understand for them to be able to have a good fight against Malaysia, they got to take care of Lo Leo, making sure that the Faraga armor is not there. It looks like Detective, even him by himself, should have enough damage. Engaged. No more damage for Team Malaysia. 1-4-1 condition. They use Wadu again. With Ting picking up the collection. Can't find Lo Liao, but Cambodia are in control. Oh, Lo Leo, this is a very dangerous spot. Has to flicker out. And now Sakai gets pulled back by Wadu. Opie having that divine glaive all the while. Yums is preventing a push by actually pushing down mid. And now look at the damage here. Even though Detective is only doing about 25k damage, but I feel like it's substantial amount of damage because it's on the right target, preventing Team Malaysia from actually having a good fight. They're also stopping Stormy and Yums from joining the fight too. So Momo is left on an island with Lo Liao to go for these big dives and opening up windows for Wadu to hit the backline. Stormy was instantly erased from the fight. That's why we didn't even see the Kimmy having an impact, making it like a 4v5. Zing! Find a kick, Zing, quick, but is it quick enough? Not this time against the Sky Prince. Boxy now in danger, but Yums makes the call to fall back. They don't need to overextend. Lord is up. That was a good catch, and this is why it's dangerous grass. The moment you're caught lacking, you will get caught, but Cambodia, as long as Wadu is there, even without Zing, he should be able to influence so that Malaysia will at least have to hesitate or take just a little bit too much damage than they want. Speaking of which, Momo is only about 30% health. Yeah, Detective is really hurting. Last Insanity committed. Momo, he's looking for Oppie. Wadu gets taken out. Detective can't get into the pit just yet. Yums kicks him away. Detective still will try, but Sun Guys this time will get it done. Boxy hops in with the conceal, has the immortality, but Malaysia will disengage after losing Momo. Oh, but Detective is not done just yet. Sun Guys just dupes him with the shadows. Clean coming in from the Sky Prince, but again, Cambodia, it was good that Yums was able to slow down Detective, making sure that he's not there to contest for the Lord. But we can see the damage as well as the elusiveness that Detective has. And look at Yums as well. He's pushing down bot. He's basically playing like a Cho damage, but only having one damage item with the Blade of Heptases. So kind of playing more macro for this one. He's the reason why Cambodia are split when it comes to taking objectives and making macro move, because Yums is creating lane pressure. Boxy is gonna eat the cake. RWM as a response. Oppie will be able to take out Yums alongside Boxy. Lo Liao tries to escort the Lord, but Detective is so dangerous. Lo Liao flickers away, but still, the Thorn Rose finds him. Traction Pulse comes in, keeps Wadu away. Lo Liao disengages with the last Insanity, and the siege from Malaysia gets halted. The only casualty is Yums. Everyone else had to use everything to actually get away. Detective on this Lancelot is very, very dangerous. And Wadu is, even though he is dying, but you kind of have to throw everything at him, right? Yep. Unless Lo Leo commits the last Insanity, the Phobius is just way too tanky for Team Malaysia. And now, he has the Winter Crown. So he's even harder to take him down. You definitely feel a bit scared if you are Stormy this time. Yep. So many ways to get on top of you. Momo tries to wait in the wings. They light up the jungle. They know where Cambodia are at, but Cambodia can just keep walking on forward. It's on Yums now. He really has to take care of Detective. Boxy taking a lot of damage, but he still has the immortality. Malaysia will not overcommit. The Lord will spawn in 1 minute. So both teams have to start controlling the side lanes, making sure that every single wave is pushing towards their opponent's side, or at least stagnating around the mid. And Team Malaysia, they're still splitting up here. The Cho is moving away from the rest of the team. And now he even has a Blade of Despair. So yeah, he is transitioning. He started off as a tank Cho, but now transitioning into more damage. I'm realizing that they definitely need a bit of extra kick there to take out their targets. Yeah. All right. Oppie Winter Crown. There's 2 Winter Crowns now for Cambodia. The ideal way to approach this is to try and pick a fight when you see Yums on the map, because he'll be a 4v5. Maybe that's the plan.
foiled by Momo. You should be able to get out. It's not a problem. They get the traction post. Boxy. They're not going to commit the kick. Oh, Yums found the target. And that's Oppie. Detective, Winter Crown tries to bail him out. They lost the guys already. And now Oppie unleashes the RWM. 2 dead from the side of Malaysia. Yums ends up going down. Cambodia taking that fight. Absolutely spectacular. Shane finds the double kill. And Cambodia now turns to Lord. That was impressive coming in from Cambodia. Malaysia thought they got it. A kick being committed by Yums, but the star item here, man, the Winter Crowns. Cambodia is able to ignore the majority of the big bursts coming in from Malaysia, completely outplaying that team fight. And now we can see that Detective is going to be on the Lord, while the rest of the members getting the inhibitor and Loliel, he has to let that go. He can't commit for this one. And now Cambodia, they are clearly in the lead. 18 minutes in with 5,000 goal lead. Cambodia is looking good to win game number 1. The fact that they were able to catch Sakai's too. The kick onto Oppie should have been it. But like you said, the Winter Crown was a game changer there. 6K goal lead for Cambodia. Detective with the Queen's Wings. And Lord spawning top lane in just 14 seconds. This is the first time we see Team Malaysia on the back foot and pretty far behind too. I'm going to say, I don't care about the numbers, man, but Wadu is an MVP. How many attempts have he stopped with the Dark Wave? And how many times has he caught Sakai's? And how many fights has been withstanding everything that Malaysia is throwing at Cambodia? This pick, this Phobius, is a headache for Malaysia. Yeah. The fact that we floated the idea of the Phobius early on in the draft too makes it even more surreal. Let's see if Malaysia can defend against this siege. The damage from Jing has to be respected. Oppie too. So they will work on the inhibitors. The guys instantly forced back. Detective trying to run away to find a kick. It's a full commit. They need Detective dead. And now the determination is there. Stormy though, chopped to half by Boxy. Lolia explodes in the face of Jing. They really needed Bruno. Yums wants to get in, but he's zoned away. Lolia disengages. Dark Wave pulls Momo back. There are still waves that needs to be dealt with. Yep, Momo is waiting for the Bravest Fighter as well. But all inhibitors of Malaysia are down. Zing is healing up with the Hoskalaw. Sakai is waiting for an angle, same as Momo. Momo now does have the Bravest Fighter. Does Malaysia have it in them to go for another attempt? The Shadow stuck onto Jing. Shadow kill very early on. Here comes Lolia with the commitment. It's Jing that's the target. They block Boxy. Oppie goes into Winter Crown and Wadu in no man's land, but he's very durable. Gets kicked underneath the Crystal and executed. And Momo turns around with the Lash Shaker. That's Jing with the immortality gone. Malaysia hold the fort. Cambodia trying their very best to end the game at 20 minutes of the game. But Team Malaysia able to juggle as well as time their ults together. They were waiting for Sakai's, Momo, and Loliel for everyone to have their ultimates up online. And once they do, they all commit on it all in, forcing out the Winter Crowns, able to deal enough damage to not only clear the minions, but also take down Cambodia. Now Zing is gonna spawn in about 20 seconds. Detective as well as Boxy are using the conceal. They find Yums. How are they gonna deal with him? I think it's okay, right? If Yums dies, but they get the Lord, it should be manageable. But Yums will try to buy as much time as possible. Find a kickback. They even expand the RWM for him. Yums loses immortality. Can he outmaneuver this? Boxy No way! Can't get him, Yums. No way! The great escape, but Boxy not so lucky. Throwback to Yums in Snapdragon Pro Series, man. Back in SBS. Made a lot of clips with the great escape from the base all the way to the turret. And now Yums having that wind talker as well. Malaysia is looking to use this Lord to end the game. But look at Detective. Yums, he knows that Detective is nearby, is letting the team know. How is Malaysia going to use this Lord? Look, LaFell, in WEC, we haven't seen a comeback with no inhibitors yet. This could be a Detective so dangerous. He gets away, Lolia cannot chase him, but Jing, with the Wisdom Nature, stays alive. Some guys with the Shadow kill. Some guys won't get him. Malaysia at the cups of game 1. Detective trying his best. With Wadu around, but Stormy denies that. With the Lord still healthy, Malaysia will take game number 1. What was that?
What an opening to the grand finals. Both Cambodia and Malaysia trading blows for blows. From the early to the mid to the late, neither team can hold their lead. And that was only game number 1. From the depths of the abyss, Team Malaysia pull off a miracle in front of a thunderous home crowd. The celebrations have definitely begun, and that's the first step to the back-to-back. But I gotta say, we wanted a challenge, we wanted a challenger, we found one. Now that's the kind of game that we've been waiting to see. Cambodia and Malaysia standing toe-to-toe. This is where the mechanics are the same. Yep. The drafts are good. It's all about that decision making, the patience. Malaysia only got that because they were patient enough to wait for their ultimates, wait for their cooldowns, and jump into Cambodia. But we got to talk about the items, the picks. Wadu going for full tank Phobias, doing absolute work, and all the winter crowns that have been bought by Cambodia, making it so that they can survive Stormy, Sakai's, Loliel. It's absolutely amazing. Even with their best efforts, I gotta say, how Team Malaysia, they keep track of the cooldowns, the way that they juggle these fights and keep giving Cambodia that false sense of security, thinking that the cooldowns are out, only to pounce right back. Loliel, we said that this is not gonna be an easy game for him to play matchup-wise and as a whole, but he only went down once. And even towards the late game, on the chase to get Yoons, Boxy invested in a Heptasis. Because the whole goal was, if he can cleave Sakai's or Stormy in half, the job is done. But it came a bit too late. Who would have thought the failed attempt on Yoon's life would turn to be a victory for Team Malaysia? Let me just say, the only reason Yums doesn't have a lot of highlights on the show is because he hasn't been getting the show. And every time he gets it, there's some kind of highlight that he makes for himself. First pick show, by the way. First pick show. Denying it from Boxy. What if Cambodia, they're like, hey, you know what? You know what? Show first pick is sounding pretty good right about now. The greatest level of honor. Hall of Famers on your screen. Sakai's as the Go Hunter and the GOAT. Momo on the Lapu Lapu doing God's work as the tanker. And Oppie also the best mid laner award in WEC as the best support for his team. And this is why we say Momo says, he doesn't say no. Arcada is basically saying like, you're gonna be the tank. You're gonna be the front line. Yums is gonna build damage. And he's like, sir, yes, sir. Yes, Kuya. If you want me to 1v5, take all the damage, I will. Sorry, what you say, sir? Execute? Okay, no problem. Petrify Lapu Lapu? Sure, I'll do it. And now we gotta look at the MVP for game number 1 is going over to Loliel. 5-1 and 9. Team Cambodia had to play around this X-Borg, despite the X-Borg being countered time and time again by getting his Faraga armor bursted down. He just comes back in and explodes harder. He's only been playing X-Borg today, by the way. It's not touched any other heroes in the GOAT League. Only X-Borg. I mean, this is the thing about Team Malaysia. If you don't ban it, what else am I gonna play? It's Claude, but better. Yeah. Sort of. Well, we gotta look at the highlights, and I gotta say, there's a lot of it. And we're starting off, again, like the thing that I like is blows for blows. It's not like Malaysia has a good moment and then they just stay there, right? Yeah. Cambodia, they figure out a way to come back. And then Malaysia, they gotta figure out a way how to come back. Yep. We did highlight the importance of the roam role, right? Like both roamers did a fantastic job, but I gotta say, you also gotta give the XP laner some credit because the entire game, all these flashy kills that we see from Detective and Sakai's, they were all enabled by the support pieces of the XP and the roam. Boxy and Wadu creating space for Detective to dive the backline. Momo and Yoons creating space for Sakai's to plaster his shadows on the Oppie and Jing. But the fact that they're able to find these close angles makes it very frustrating for Cambodia to deal with. And look at this, the great escape from Yoons that converted not only onto a kill on the Boxy, but an eventual win with a Lord push. 4 people went onto him. He escaped and he got a kill. Yoons, man. That's aura farming. That's
I gotta say that's the legend of Malaysia, man. Like ever since his debut, same as Stormy, honestly. Ever since their debut, they've had an amazing career. Look, if they lift the trophy tonight, check his Instagram. That's a new post. Oh yeah, He only posts trophies. He only posts He only trophies. posts yeah. trophies. Yeah. Well, shows how hard he's working. He doesn't really have time to. Yeah, so every single post is a trophy, by the way. So start counting. Either way, that was an amazing game one. There was a mistake coming in from Cambodia. Yep. Well, mistake-ish, right? Because they really wanted to end the game, and they had the siege. They had the Bruno, right? But it's just Team Malaysia just biding their time, goes in, turn things around. That might be a better call, just to back up a bit, you know, restructure how we're gonna approach the ending. Yep. Because that's really how Malaysia truly came back into the game. It's like you've already gotten the base, right? The whole base is barren. You could take control of the map, but I agree, it was a bit forced. It took so long that not only did, you know, Lo Liao and Momo cleared out the way, but their ultimates came back up. They started re-engaging onto Cambodia. So I agree with that. Definitely a bit of a forced one. There are definitely better ways. I think when you have a win angle, maybe it starts really getting into your head. You feel like that is going to be it. And unfortunately, it got turned around. But I gotta say, if they picked up Yums in that bottom lane, maybe we would have been still in game number one. So either way, Cambodia and Malaysia have given us a great opener in the grand finals, and I bet we got a long night ahead of us. It's still young. The night is still young. Yeah, and in this case, I kind of don't want to think that much. I just want to shut down my brain. I just want good games. And then just enjoy the journey, because I can't, like, it's hard to blame Cambodia for forcing that one, because the string of events that happened leading towards clearing out all the inhibitors, being inside the base, they're winning team fight over team fight over team fight, and Malaysia tried to kill them and was not successful for that, what, 2 to 3 times? Yep. And having one successful blowout, and then they started to take control. So you can see the logic of Cambodia staying there, Yeah. considering that they've won the past 2 to 3 engages. And this is where we circle back to the question that we have been debating a couple of times on broadcast. Which one is easier to recover from? A 5-minute stomp or a 20-minute comeback by an opponent with no inhibitors? Clearly, we have the answer right in front of us, and now it's down to the mental game. We're looking for Team Cambodia to bounce back. And I think they can. I really think they can, because that is an eye-opener, because for both teams, they've been having quite a smooth run all the way to the grand finals. This is where finally both are seeing, like, okay, now both are being challenged at this point. Now you see they're like, okay, Yeah, did it went from this to this? it's like, wow, now we're in the correct weight class, you Yeah. know? And no one's tapping out. Yeah, no one's tapping out. We are running at the clock in every single round. So, anyways, like, for moments like this, I think one of the hardest roles is, funnily enough, not the players, but more on the coach. Yes. Like, after watching that game, now you gotta think back. It's like, okay, hold on. Do we stick with the strategy? Do we change? Do we have to have a different ban? Do we need to change priority of what should be picked? Because in my head, both had amazing drafts. They don't really have to change that much. But at the same time, you always have that in the back of your head, like, if it wasn't for that one hero, we could have won. Or that one hero almost made us lost. Dangerous grass again. we're getting so much dangerous grass, man. What is this? So there's 25% for every single map, and we keep getting dangerous grass. What does that mean? It means that we are promoting to the rest of the world, in order to make more oxygen, make more grass. So funnily Touch enough, grass. there is this attempt to invent, I wouldn't say a technology, but to invent a product that's called the greenhouse helmet, Okay, right? So as the name suggests, it's a helmet that you wear. that is When- green. Yeah, when you do sports, like you go out and jog or something, right? And then there's plants inside that
cycles, the There's recycles. plants inside the Yeah, helmet. so it's like wearing a mini greenhouse to recycle the carbon dioxide into oxygen, but clearly it wasn't made because there are not going to be enough plants inside the helmet for you to wear that recycle enough oxygen for you. But you get what I mean, right? I mean, like if they talk to Belleric, I'm sure they can figure something out. Look, humans have very cool ideas, cool concepts. It might not be practical, but you gotta admit it was pretty cool. Speaking of cool, we're jumping into the draft. This is cool. Now, we're starting out the draft here looking like the same set of bands and honestly the same size. But this time, Malaysia's like, okay, you know what, Hoppy? You won best mid. And we agree, we're taking out that Eve. That was a bit too much. Yeah, it's like, alright, this Iesf was a problem, right? Like, we made Uppy go like 0-3, but he's still causing us a lot of headache. Now let's see what he has up his sleeve. Cambodia, I'm looking for a potential change too. They did ban the Yi Shin in game 1, and they're gonna do it again. No YSS. So do they still ban out the Boxia here, or are they gonna trade by giving over a Boxia and then maybe pick up something like the CC? I mean, Malaysia, they have played the CC not too often, but considering that a possibility of a Phovius gonna be brought out, I think they're thinking of that idea, like at least considering it. What if it doesn't matter what Cambodia picks, Malaysia still takes a Cho? Unless Cambodia goes Cho first pick. Now that would be spicy. That would be spicy. It's a direct response, a direct challenge. But I would be sticking with a Boxia. Oh, they banned the Jushin. Banned the Jushin, okay. Maybe they're thinking these are Oppe's comfort, and maybe try to just make it feel less comfortable. It could be Lancelot again for Detective. I wouldn't blame him. Because Detective had a brilliant game on Lancelot. He was out of this world. So is it gonna be Cho Kimi here? It worked game number 1. What about Kalea? What about Kalea? Why not about Kalea? Kalea can't build BOD. Oh yeah. Right. Yeah. Maybe she can build Lightning Transhyung. The true power of the Tsunami RKO is if it one-shots you. Exactly. It's not a true RKO if you survive. Yeah, it's not a true RKO if you don't break the spine of your enemies. And in this case, maybe the Lancelot. I watched WWE growing up. And that was a lie because I never watched it. Well, this time they go for the Hilda and the Kimi. I mean, this Hilda has mostly been used by Momo, but Yunes has used it before as well. So this is a flex. And at the same time, maybe Yunes was discussing with his team. He's like, I already got one highlight. I'm good. Yunes telling his team that, coach, trust. They're gonna show here. And I'll be ready. If all else fails, just give it to Momo, right? Momo's like, yes, Yunes. Yes. Yes, Yunes. Whatever you want. You want me to pick up yeah, whatever. What if like Momo has been requesting, coach, can I finally play Arlet? Coach was like, no. Yes, coach. Well, we're trading all around here. We Cambodia, before the Granger gets banned, picks up the Granger and gets the Lapu. Well, we know for a fact that we won't see Momo Lapu here. But again, this Hilda is pretty flex. Maybe Malaysia can just pick up their jungler here and just keep the Hilda mystery all the way through. Not only that, we saw how the Bruno Eve was quite a headache for the Xbox to deal with. You know, he doesn't get his way, right? He doesn't get to walk in front of you and just spit flames. Ranger does the same thing. Yep. You hold him at an arm's length. He walks forward, you Rhapsody him. He tries to burn you with fire stick, pull you back, you Rondo out. So Hayabusa will be the pick, so not much changes on Malaysia's side except for the Hilda. I think they will consider, last pick for Loliel. If it looks like an okay game, he might consider going for that either Marksman or the Harif, or maybe even the Lunox, because we still have to remember one of Loliel's signature pick is actually that Harif. If it does seem like a good Harif game, then maybe they will go for that. Because in terms of the banning out the Eve as well as Jushin, I think that's already giving the opportunity in case Loliel wants something like a Harif or a Claude. I would like that, right? I mean, Loliel has some pocket pick too. That's a Kalea ban by Malaysia.
So maybe a Cho follow-up. Cho, I mean, Ruby is also one. At least we know there's no Phobias for the side of Cambodia. Esmeralda banned out. Why does every game I feel like Export is a good pick, even though there are answers to it? Maybe Loliel is just having too much fun. What have we not seen him? I mean, Lunox is always an option, right? We talk about this. Yep. Even though there's already Kimmy there, Lunox doesn't feel exactly the most important option, but if all else fails and you need someone that blows through tanks, it's always there. It's one of Loliel's signature too. I think they are considering whether they do want to ban out the Cho, or maybe see something crazy like a Hellcurt. It has been banned out before. Yes, on dangerous grass too. Cho ban. I think it's the safer approach as well. The Ruby ban, we did float that. So at this point, the Hilda will kind of be exposed where she's going unless they pick up a gold laner here, and specifically a marksman. But I don't know if it's in Malaysia's interest to show it a little bit early, considering you still don't know what the mid is going to be, because the Farsa is still open. The Valentina is open as well. So yep. I feel like picking up an X-Board can be countered by the Valentina. Picking up something like a Hive might be annoying going up against the Farsa. Unless if you want to commit to double fighters, there's a CC available. Oh yeah, true. Yep, that's one approach to it if you really want to hide it. But either way, they do have that last pick, and it's Cambodia's choice to go for first pick again in game 2. Yep. So it is going to be the CC for Team Malaysia. I feel like that's a Loliel CC. Look at his smile. Look at my best gold laner in WEC. So what is Cambodia going to pick here? Because Farsa is a premium pick, but almost every single person from Malaysia can comfortably counter the Farsa. What about Selena? Selena will be pretty Lunox? good. I think Lunox is the safest because you need some way to deal with the Hilda, and the Hilda does counter the Granger quite a bit, but down gets picked up, and the Farsa as well. So they will be trying to burst things out. Okay. Keeping it simple, you know. But they still have to be careful of this Hilda, because the Hilda, if she's tanky enough, she'll stand directly in front of the Granger, and then the damage will just not be there. I mean, there's a world where you send the Hilda to the XP lane too, right? Yes. And then you pick up a roamer here, or you put CC XP and then you pick up like another gold laner. Like a Claude. Like a Claude. You're alright. It's not the easiest to catch, honestly. Yep. The best person to catch him is Detective. Even then, he can be slippery, but do you want to go that late? I think that's the question. You're running 2 marksmen that take some time. Hellcurt! Oh, so they are the one that brings out the Hellcurt. Okay. Alright. Hey, we're pretty good at this drafting thing, huh? So them banning out earlier, the Hellcurt ban early on against Indonesia was a feint. Because something was smelling Hellcurt. I just don't know which team. It looks like Malaysia is going to pick it up. Yeah, it must be the nighttime here. Yeah, yeah. Dark Knight Falls. Dark Knight. Boy, that was pretty good. So this is going to be another damage roam for Yums then. Well, he's the one having the most fun. I can see that. Coach Ark has favorites. And I guess the less fun is Momo. He's like, okay, whatever. Momo's okay with it, don't worry. He's just happy to be here. Yeah. Oh wait, no. Wait a minute. Wait. What? Wait a minute. Is this really Hellcurt EXP? What did Momo tell Coach? We were setting up that the Yums is gonna have fun. Or maybe Coach was like, Momo play Hellcurt. Momo was like, yes sir. Yes. I've never played it, but yes. Never Hold say up. no. Let's check it out. Is it really Momo on Hellcurt? Hold on. Oh my goodness. It is! Oh my god! All right, we What? got a game on our hands. What? That could be the most genius pick. It is the most genius pick. Okay, I gotta be no. I'm sorry, Momo. Genius or not genius depends on win or lose. You know how the internet works. Genius is very subjective. If it works, you're a genius. If you lose, you're crazy. Well, don't play rank tonight, right? Don't play rank No, tonight. just for your own sanity. I've been avoiding rank for the whole week. Well, Wow. Boxy taking just a bit of damage here. Yums gets onto Oppie, taking quite a bit of damage from Yums. Stormy is not gonna overextend there. And Momo is actually doing quite a lot of damage onto Wadu. Wait, one more stinger. Can... He's gonna get it, Momo! My God! Oh, Momo! What? Yo, Momo. That's our boy. Momo and Lolia keeps getting first blood 1v1. What is going on with the side lanes? You saw the stinger stacks build up, and I'm like, that stinger is gonna kill Wadu.
Yo, avoid rank for tonight, because Do not play rank. Helkert EXP, man. I bet all the solo rankers who have been doing that for a long time now feel vindicated. The Helkert is now a thing. Rule number 1, never fight him like that. And Wadu learned it the hard way. Stormy gets bailed out by Yums. I mean, I'm sorry. Round 2. Oh, that's Wadu's a lot dead. of damage. Wadu's dead. Good night. I'm sorry for being excited, but this is something new. This is something fresh. Look at Momo. He's nonchalant. Look at his face. Yeah. He's like, just another day. It's like, so this is what this button does. Wow, I get to kill people. Oh. In game. Look at Boxy. Oh, and you check Bush. Oh my goodness. Oh, Boxy. Oh boy. That was, okay, so Momo saw Boxy going in. He didn't see Momo. Probably was concealed there. Lolio, Zing, probably thinking now he has to show up too, considering Momo is doing quite a bit. Oh, Wadu. No. Oh, Wadu. Oh, talk about denying a farm. Oh, and no. Asakai's is there. Gets Oh, they stopped got by Boxy. Wadu gets the kill. All right, that makes the most sense. Never mind. Momo does not care. And they got off mid. Can they at least kill Momo? Yep, they can. Boxy finds a very important shutdown in the XP lane, but damage has still been done to Wadu. Momo, like... By the way, it's not a show match, right? Yeah, For anyone wondering, they're actually playing for a trophy. Okay? No. Here's the thing. We've been setting out how Momo is just good boy, good soldier. Okay, coach, whatever you say, I'm gonna use it. Like these are the games that really convinces us of that. But now let's talk about Cambodia, right? We're excited enough about the Helkert, but now we got to talk about what Cambodia has to do here, because they have a lot of bursts coming in from Lancelot, the Farsa, as well as the Granger, and now Yums gets caught. Should go down or be pulled back by the traction pulse. So guys, a bit more careful this time because Boxy is around. For that, all that early aggression built up by Team Malaysia seems good, but it's all about the conversion, Yes, right? yes. Cambodia are not by any means far behind. I feel like there's a timer for Momo. Honestly, it's a timing for Team Malaysia, because we did see how dangerous it can be when a Farsa as well as Granger is giving a lot of space. Boxy not able to get out of that. They're gonna jump onto Momo. Wadu wants revenge, and Momo says, hasta la vista. And Wadu keeps on fighting. He has to flicker away. They get the feather edge by stun on the Sakai. Detective kills him, but Momo finds Oppie. They can't see him though. Momo in the shadows. Momo finally ends up going down, but Detective now needs to wait out. Jumps on top of him. That's a shutdown. Dude, trading blows for blows, man. Cambodia, I feel like they were surprised, but once they started to settle down, they're like, it's just a Helkert, big whoop. We got to fight back. And Detective 3-1-0. It's unfortunate that he gave a shot at goal, but it is over to Yums. Still dangerous because you're making this roamer much tankier. But now look at this. The turtle is gonna get contested here. Sakai has to be careful. Momo can turn on the lights whenever he wants to. The land trigger only lands on the one, but Sakai still good on the retribution. It doesn't really matter. Cambodia expended some resources. Malaysia still get the objective. All the while, the gold laners, they've been farming up. Lolio does have the war axe. And Zing, free farming, no disruption at all. And Yums gets caught. And Detective, can he get a kill? Oh, Yums is saved by Momo. Momo is the true roamer here. He's going to be able to transition into a roamer. And that Dark Knight Falls will probably be a nuisance for Cambodia. Sky Piercer out for Jing, tied up by the current call. And you know they're ready to bounce. Here comes Momo on the Boxy. Boxy will have to give his life up. At this point, I want to know Momo's settings, Momo's items, because I did not thought a level 2 Helkert can deal that well in the lane. And now Feather S-Strike, and Momo gets taken down. Lolio trying to jump around, saving himself from Zing as well as Oppie. Oppie making sure that he doesn't get away, gets stunned up, and Oppie secures the kill. And Cambodia have weathered the storm. Stormy. Speaking of, okay, looks like Stormy was found out by Zing. Yeah, Cambodia have weathered the storm for sure. All that advantage, the aggression that Malaysia put up early on has been quelled. And now we get an even game. And I dare say it's in favor of Cambodia a bit more than it is for Malaysia because of the pick. Yeah. Because at one point, the Farsa as well as the Granger will make it... Actually, this is basically a battle of interaction. Because if Malaysia gets on top of Oppie and Zing, first Malaysia wins.
if Zing and Oppie is free hitting, then Malaysia will be bound to lose. So Yeah. honestly, Malaysia win or lose is based on Momo and Sakai's, because naturally these two will have the best access point to actually get to the back line. Not only that, when you jump someone with the Hellcurt, that miss you create, it disoriented them for a little bit. And that could mean the difference between life and death. Stormy forced away from the fight. Momo able to chunk Wadu out. He turns off the light. Yum still gets stunned up. Can't get away this time. He boxes around. Momo on the Oppie. Can Momo catch him? Gonna flicker forward. Oppie. Good footwork there. Momo and Yum ends up going down. Shadow kill not doing enough from Sakai's. 3 dead for Malaysia. Yeah, now looks like they're able to deal with the Hellcurt, and Boxy able to get Sakai's, and Zing gets the kill. Right now, Cambodia, they are in the lead in terms of kill as well as gold. And now they're gonna extend it by getting this turtle. Malaysia looks like the surprise factor has run out, and Cambodia are back in the driver's seat. 100%. This Badang is starting to be a problem, and Wadu, he's done with taking the brunt of damage. He is now online. He is able to make plays. Where does Momo go from here? Because damage is the only way. Maybe this is the way back in. Do they have enough though? Oh, the thorn roll. Ooh. You could not have asked for worse timing, at least for Malaysia. That's instinct, man. That's why he's the detective. He knows. He sees the paper trails. The breadcrumbs left. He's like, it's quiet. Too quiet. Too quiet. Oh, does he know this? Oh, he knows! Dude. Okay, he knows. Detective has spider sense. He can smell the dangerous grass. I don't know, man. I feel like the Neo B skin was made for Detective, you know? Detective Fredrin on the case. Maybe. Maybe. Anyways, right now, Cambodia with almost 2,000 goal lead. You can hear the silence now in the crowd, because now it is game, Cambodia and Malaysia. This is like game number 1. They make sure that each team is going to adjust the scales. Boxy finds Humes, but unable to catch him. Yeah, the game has truly begun. Took us a while to get here. Momo, doesn't want to go for the push. The top tier ones should still stay up as Wadu and Jing arrive, and they're making sure to check every nook and cranny in case there's a pesky Hellcurt staying in the bush. And as much as, you know, you're gonna win some nature or some defensive items, you can still get one-shotted. So the first item for Momo is going to be that Blade of Heptases. Sakai's does have the Malefic Roar. They see Boxy. And they don't see Loliel, though. Sakai's gets onto Oppie. Oh, Oppie. Wow, good flicker into the bush, but Loliel makes sure that it doesn't matter. The lights get turned off. Here comes Momo onto Jing. Momo now looks to get away. Gets pierced through by the Phantom Execution. Boxy helps him out. Detective trying to maneuver this. Gets jumped on. Loliel with a pickup. Wadu late to the fight. Cannot look for anyone. All of them are out. Wadu flickers forward. Jumps on Stormy. Hits him. But is it worth it? Because Malaysia are showing strength and composure in this fight. A shutdown for Loliel. And that's a wipeout. Malaysia has taken down Cambodia. And it all started with Sakai's able to get the shadow directly onto Oppie and dealing the most amount of damage, forcing out that flicker. Loliel following up. And this is what we like to see, where the teams are outplaying each other by their positioning and basically always being there around their own teammates. No one is getting caught by Cambodia or Malaysia. Whenever someone is getting taken down, the follow-up is always there. It was a minor lapse of judgment from Oppie. Didn't expect the guys to just turn around and stick the shadow onto him, because Oppie was taken out of the fight pretty early. He forced a flicker out of Yums, including the Dark Knight Falls. Oh, Momo is hunting for a prey. Detective will force him away. Another feather airstrike used defensively as Boxy barely gets bailed out. Loliel, does he want to continue this? He's running into the entirety of Cambodia. Loliel actually gets out. The flicker forward again. Malaysia makes the play, and they find 3. Wadu left to fend for himself. Stormy and Momo on top of him. Momo with the deadly stingers couldn't find a kill, but it does not matter because Sakai's is in, and Malaysia finds 3 bodies. Almost got taken out there, but Malaysia able to get a lot, getting killed. The Lord is still very healthy. Detective now having the endless battle. You got to be careful about that. Sakai's with the War Axe. Momo is just waiting. Momo is looking for an opportunity. Almost found Detective. They commit onto it. Detective needs to target.
able to somehow get out of harm's way because that looked pretty scary. Feather airstrike committed, flicker forward, but it's just not enough. Stormy is already out of range. Ooh. Confidence now being shown by Momo. When's the last time you see Momo recalling in front of opponents? I have a feeling Sakai's pressing his phone. Sakai's leaned over and just start pressing. I guess Momo has been waiting for this pick for a while because rarely do we see Momo using the emotes, Yeah. the recalls. Look at this. This is his moment. He's waiting for this his whole life. Makes split pushing incredibly hard too. Not split pushing, but more of defending side lanes. Yep. Dangerous grass for things. It's a headache for Cambodia. They'll have to stick together. Loliao easily maneuvers around that. Stormy sees Boxy, and now Boxy's out of position. So guys, straight to the back line. Great stun. And that's what Cambodia needs. Momo to the back. Look for Shing. He's gone. Momo turns on the lights. They lose Stormy though. As Detective goes to work. Loliao now has to somehow disengage Jums. Is there a way to bail Loliao out? He misses the hop. Loliao with the current call stops himself from going down. The conceal gets used by Loliao. Continues to run. Boxy and Wadu on him. Wadu hops in with the bravest fighter and the raging slash. Loliao with a great escape again. I don't know how he did it, but right now Cambodia, they're able to take the mid tier 2. And right now Detective, man, you gotta look at this guy. His last line, game number 1, was game-changing. Game number 2 here is game-changing as well. As impressive as the burst coming in from Momo, we got to talk about how Detective is dancing around the battlefield, dealing damage safely. Yes. How is it that he's in the middle of everything and dodging everything at the same time? And not only that, it hinges on Momo whether he is able to at least take out one core from Cambodia, because if Jing was still alive in that fight, that could have 100% been a team wipe in favor of Cambodia. So Momo will play a very big role as well. That fraction of a second when the lights get turned off, thanks to the Hellcurt, is the window that Malaysia has to skew the odds in their favor. Now, I can't believe it's only been 13 minutes. Which felt pretty... With all the action that's been done, I thought this has been a longer game. The Lord has spawned. It looks like Cambodia is first on the scene. Team Malaysia, can they respond? Because Cambodia, they're bursting it down. They're trying to stop Sakai's into the shadow kill. Can't get it this time. Jing, great secure, but they got Detective. Somehow, Sakai's still makes the best out of it. Oh, look at Momo, though. He's trying to go for a push. Team Malaysia, they're trying to stop this. Yums gets onto Oppie, and Oppie survives by Zin. But look at the guys! Momo, he got the bot inhibitor. He was split pushing the entire time. It's still a win for Malaysia by the end of it. Would have been nice if Yums found Oppie, but Jing bailed his teammates out. But still, this Lord is a net negative. Momo can clear the bottom wave, and the rest of Malaysia can deal with this objective mid. And they gotta be careful. Sakai is coming in from the flanks. Oppie is recalling. Sakai sees it. Unable to get a shadow inside of any member from Cambodia. I feel like the biggest win from Malaysia was actually taking down Detective. Getting the shutdown gold is gonna be huge for the team. But we know that Cambodia can come back from this because in terms of the objectives, they still have 2 inhibitors and 1 good team fight. And I feel like Cambodia can take the tier 2s, and that's going to put a lot of gold onto them. And this is a good time for you guys to check Momo's item. A lot of bursts, but having that Demon Hunter sword as well, making it so that the Deadly Stinger deals additional true damage as well. The rapid boost also important for his rotation. Momo, let's see Boxy now. Boxy will take the push beside the pin. He's going to run into Yums eventually, so again, the positioning from Malaysia still on the point. Immortality for the Hilda. Now tension will rise. Boxy. That can kill instantly. Nice. Found by Yums. Nothing much that he can do, even though it's a good attempt. The guys looking for Jing. Wisdom Nature forced out already. Starting to look dangerous. They get immobilization, but Guys is out. Feather airstrike. Bravest fighter expended. Dude, Wadu has been amazing. Keep stopping Sakai's time and time again. But that was a clutch Wind of Nature coming in from Zing. But for about 180 seconds, it won't be there. Oh, so by the time the Lord is up, he won't have it for quite a while. Momo's gonna see Detective. Oh, Momo. Not able to find a kill, but enough. The lights are on. Momo back into the bush. The three-man land shaker from the side of Wadu. They take out Loliao, and that is crucial. But Jing traces life for it. Detected now in the fight. So guys, he finds the kill, but they lose Momo. 2-for-1 in favor of Cambodia. Yep.
Wadu right now, 5-5-5, but he's making it so that Malaysia can't really clump up when they're trying to deal damage onto Cambodia because he deals it back. And just like Momo in game number 1, he's basically the tank here. He's going to be the one taking aggro, going to be the one baiting out, and then Boxy will, well, as his name, box them in. So Cambodia and Malaysia, they're on even foot. Stormy has to flicker out. Boxy is able to push him toward the wall. But by all means, Stormy is still safe. That's a bad position for Cambodia to be in. They have to get out from here. Traction pulse is charged up. Wadu is still only getting whittled down. Sakai is so patient. Shadow stuck on. Here comes the Shadow Strike. Wadu escapes. Sakai is now Kwa Shadows. Finds on the RP. Stormy supports him. Oh, look at Detective. Gone. Detective. That's finally our can. Detective. Can he get out from there? Detective doesn't get out. Oh, Momo Zing, saved again. Zing found out. Stormy guns him down. And disaster starting to become apparent as Wadu falls. A double kill for Stormy and Malaysia have a clear way down mid. That was a dangerous attempt from Zing. He already saw the members of Malaysia, but he walked into that bush. Sakai gets onto Oppie. Oppie stays inside of the base. And now with the minion wave coming in, Boxy trying to protect that. Look at Oppie! Oppie can't really do too much. Malaysia, one step closer to glory. As a final wipeout on Team Cambodia, they strike. And 2-0 now for Malaysia. Match point for Malaysia. But I gotta say, for all you folks that only look at match results, man, you gotta tune in. You gotta look at this match. Game 1, Game 2, it's making everyone sweat. Oh man, that Hellcurt XP lane. Who's the mad genius behind it? I mean, if we want to pick it, remember, dangerous grass only. All right, not broken walls, not expanding rivers, dangerous grass. I mean, you say that, but do you think people really care? Like let's be real. If people get like a expanding rivers, they're like, this is close enough, right? It's close enough. There's bushes. Yeah. But let's calm down because here's the thing. That this series is exciting with all this crazy development going on, but Momo level 2, I did not know level 2 a Hellcurt can take on a Lapu Lapu. Now talk about being a trendsetter. Yeah, you can, because Deadly Stingers, right? We were watching the counter build up. Momo calls for regang after that. Wadu was stuck at level 3 for the longest time ever, but Cambodia, they did have a good recovery. We saw the adjustments where Wadu called for Boxy to help. They got the guys in return when the third gang came through. It did take some effort, some fine-tuning from Cambodia, but if not for these adjustments, we wouldn't have had a close to 18-minute game. We wouldn't have had it so close where Detective was about to carry the game again. But I gotta say, man, whoever thought of that pick deserves a medal. A cookie, at least. A cookie in the middle is a pretty far from each other, but either way, I'm gonna sing Cambodia's praises here because Detective, Oppie, despite Wadu basically being shafted in lane, he recovered and he provided a lot for the team. Like that, I didn't thought Malaysia would be the one like showing cheese here. They came up with this Hellcurt. They've been hiding this the entire time. But now I want Cambodia to win so that we can see what else is there. Yeah, just to give context, right? We still want, our motherland, our home country to win, but we want more games, right? Make it exciting, When the games are like that, when Detective has the highest goal and dealt the most damage, even though they lost, you know that his Lancelot. Now, his Lancelot is insane. I have no idea when they're that behind, he's able to neutralize everything back. And not to mention that Team Malaysia willingly gave the Lancelot 2 times in a row, right? I think reluctantly, actually, they were like, please pick up Joe first. It's like, I guess we don't have a choice, It's like, come on, give me the Lancelot. He's a bit too good. Look, if we get Dangerous Grass, do you think Hellcurt will get banned? That's all I want to know.
Sorry, I'm drinking water, but yeah, Stormy, my boy, getting the MVP and dealing consistent amount of damage, but the only reason Momo is not an MVP is because the KDA is abysmal, but the damage is pretty good. And I would say if Cambodia won this one, it would be an easy detective MVP. Oh yes, 100%. Without a shadow of doubt that beyond the scoreboard, the matches were as close as it could get. Sometimes the tension is so high, you could hear a pin drop in the arena. Even the highlight reels tells us a very good story of Momo absolutely skewering Wadu in the early game. The regank as well, Wadu just could not catch a break. But then, we did see adjustments. Boxy being called in, and this catch on the Sakai's was sort of the tempo stopper. They put a cork on the bottle and made sure that Malaysia doesn't get to run away with too much. And that's sort of how they stabilize the game. I need you to help me, Husky. Yeah. Because I'm tempted. I'm very... Like, I play Rome, but I'm like, can you give me XP once? Yes, 100% yes. Yeah. Either ways, I wonder if the idea for Malaysia is that Sakai's job, almost exclusively this entire tournament, is to take down the mid laner, right? They ban out the Iesf, they ban out the Jushin. Maybe after seeing how OP plays, especially on that Iesf, that kind of shuts down what Malaysia wants to do, which is take down the mid. Because that has been proven that Oppie is kind of like Detective in a way that he stabilizes the team. Yeah. So moving forward, maybe Malaysia will keep batting out this Iesf and Jushin. So Cambodia needs to figure out what they want to give to Oppie. Because his Sparta is good. It's really good. Yeah. But Sakai's will find a way to get on top of it. I mean, I gotta say, Boxy and Oppie this game, they have bailed their teammates out so many times. But that was one big mistake, though. Yeah. Remember Zing, after seeing Detective get taken down by Momo? Oh, yes. As a Hellcrit, and he, as a Granger, walks up to that bush. Like, yes, there could be a case where they were low enough and you can get multiple kills, but that was very dangerous considering a Hayabusa, a Kimi, a Hellcrit. He should not have gone up on that bush when he has knowledge of the people there. Yeah, the stakes were too high, and this kind of goes back to this game, man. These are high octane moments, right? We did say that when the odds are that high, when the pressure starts building up, you really get to see who cracks first, right? Who starts tunnel visioning, who starts losing focus, and it's just like game one. It wasn't anything that, that Cambodia dropped. It's like not that they dropped the ball from the early game, but it came down to one moment. Game one was a forced siege, and game two was just a bit of a lapse of judgment. How would you prepare for that? For Hellcrit? Yeah, like as Wadu is like, I fought multiple fighters before. This should be fine. But I've never fought Hellcrit in the XP lane. Yeah, so it was a bit of a surprise. So you know what? I would be like, hey, well played to them. They almost got him though. I feel like because of WEC, Momo and Lolios will start to have their own fan base at this point. You're telling me they don't have fans? No way. I mean, like, here's the thing. In Malaysia, they really just gravitate towards the one that's been winning a lot. And Momo has won a lot with MV, but I feel like after those, they're like, okay, I like the teams, but now I like you especially. Yeah. Tell that to Loliao too, right? He had a rough year. Rough year. Yeah. A few years, actually, yeah. Yeah, a few years, right? I mean, 2023 was not too bad, but 24 and 25 has been extremely rough. Hey, he survived relegation by changing team. But still, he has been one of the gems, right? He's one of the few that lifted the trophy in Rio last year. That's why we got him again. They got him again, not me, but they. It's okay, I was there. Either ways, what does Cambodia have to do now? Because, I don't know. No, because they've been quite close, and the problem is, I think what's going into their mind is, do we want to trade this Yisun ban for a Haya ban? Because Yisun is strong, and the early game when Sakai says that Yisun is dangerous, but at least he doesn't get to jump onto Oppie.
I agree. I think that's one approach, right? That's one approach. That's to go at about least being considered. Yeah. You have to take first pick though. Then you can hide the Yi Sun-shin pick until the very last. I think. Actually, it really doesn't matter. No, I feel like just ban out the Fanny and ban out the Gatot, and then maybe ban the Hayabusa and still get the Lancelot first pick. Because if Detective is playing like that, I do not want to get him on any other hero. Yeah. And then just let Sakai pick up the Yi Sun-shin and then just try to fight the Yi Sun-shin instead. Because I think the biggest problem is just that if OP basically just survives the entire team fight, I think they will have more than enough damage, right? To burst down the Kimmy, maybe even burst down the Hellcurt even faster. So I don't know. At least you gotta consider that. It does start getting into your head when, you know, these ways that you've been executing and has been working well just fall short of one crucial moment. It does start to wear you out. You did say that you are very confident they can bounce back. We saw them bounce back after a horrendous start to game 2, but now you're put in the same spot again. A long game where you're going toe-to-toe, and it's just one instant, a fraction of a second, a lapse of judgment, a dangerous grass again. Okay, so all right, this feels rigged. Wait, what? Okay, this is like what, the 7th time? You know what? I think this is God's way. Like maybe Momo has been praying. Let me get the Hellcurt, and then God's like, I will give you dangerous grass every single time. So the option is there. I don't know, but look, there's a 1 in 4 chance to get dangerous grass, and we've been hitting it 7 times today. My luck isn't that good. Malaysia now, first pick. Already changing things up here. Husky not only is Malaysia first pick, but they ban out the Cho, and Cambodia themselves bans out the Lancelot. Okay. This has to be a high OISS ban, right? Do you want to take that challenge? Do you think Cambodia is trying to get a Fanny? Because Fanny first pick is very dangerous, but second and third, not bad. Could be too. But it should. I mean, depends on what they ban second too, right? Because okay, so I would say they should consider banning out the Baxia, but Malaysia themselves ban out the Baxia. They ban out CC, and now I feel like they need to ban the Grok. Do not let Yums on that Grok. Yeah. And there's a possibility of opening up the YSS and Hayabusa matchup too. I wonder if Malaysia will ban the Eve here. Because OP is very strong. I feel like it's very worth considering. Yeah, I think you open both YSS and Hayabusa and you ban the Eve here. It does make a lot of sense. So you're not short of junglers, but you also get to force a Grok ban. I wonder if I really feel like Eve is good. This is where the point where you see a Gatot ban, maybe even another assassin ban, so that you have exclusivity on that pick. Yep. But yes, they ban out that Eve. Gotta respect Oppie on that pick. Cambodia, they have options. The Yi Sun-shin is there, the Hayabusa is there, the Grok is there. The problem is if you ban out the Grok, Malaysia can first pick that Gatot. So that's also an issue you gotta circumvent around. Or you just open all of them and you ban something else. Right? You ban Lapu Lapu. What's your command? The Fanny had to go, right? So the other 4 are open, sort of what we predicted. So no matter what Malaysia gets, Cambodia can respond with 2 of the priors and leave the last one for Malaysia. So Malaysia should be picking up Grok here, and then Cambodia will third pick the Gatot. Yep. So they get priority on like a Haya. Either Haya or YSS, yeah. right? It's like a YSS or Haya +1. And then maybe they will pick up a Jushin or a Kimmy. There's also a Lapu available. Yeah. Right? So the options are there for Cambodia. It's Malaysia, they have to be the one that kind of set the tone of what Cambodia is going to go for. But the fact that Cambodia is on red side means that they will always have a good way of responding. So the Grok first pick goes to Malaysia. I feel like they need to pick up a prio mid here. Either a Jushin or a Kimmy. I want to say Jushin Gatot. That's one way to approach it. Gatot Kimmy is also another way. Gatot you can pick third. So yeah. So maybe either Lapu plus Jushin or Kimmy. Yes. Yuzong is there if Wadu is feeling like it. Lapu Kimmy doesn't sound too bad. If you don't really care it takes too much, away Malaysia's picks. Yeah.
Although I would say then you have to trade either your jungler or the Gatot, right? Priority now will have to switch a little bit. So these first two picks, I personally want to prio mid here. Fight for the So they go for the ultimate Hilda in my instead. sight. Hilda as well as the Kimmy. Yep. But the thing is, if Cambodia picks up the Gatot here, then you're showing where the Hilda is going. Yeah. Again, you have to, it's a bit of give and take, right? You have to pick your poison. And for them, they feel okay not taking the Gatot. I mean, it plays true to the DNA. Can play fast, has a flex pick there, great pressure, priority either way. Jushin Grok now is a possibility for Malaysia. Yeah, Jushin Yusun Shin, Jushin Haya, even Jushin Lapu, Oh yes. right? Maybe Sakai has more in his pocket, so he doesn't mind being chosen a bit later. And if they don't pick up the Lapu, you kind of have to be slightly worried about a Hellcurt appearing again. Yeah. They take the YSS, keep it simple for Sakai. Along with the Lapu Lapu, so the mid lane, not a concern right now for Team Malaysia. Yeah. Stormy even smiling. I wonder if he's just Nana. saying Nana. Yeah, exactly. Yes. Yeah. Don't know if it will get picked because Stormy does have a pretty wide hero pool. We gotta remember Selena as well. Yeah. And the Hayabusa does get picked up here. So in terms of the bans, I wonder if they're gonna consider banning out Loliel or Stormy. The thing is, Loliel has shown less heroes compared to Stormy. So Axborg, He can still X-Bore no matter what. Granger Hive, you know, that route. Jushin banned first. Just as sort of what we have been discussing so far, that has to go. I think. I think just to be safe, if you want to ban out mid, consider Selena. You have the heal that can clear the traps, but Yep. at the same time, it could be scary. Yeah, the Yuzong ban. So they're very, again, we just say that sometimes you could manipulate certain heroes to get forced into the lane you want, right? Exactly, and in this case, they're trying to really clamp down on this Hilda pick to see if they can force this Hilda onto Boxy instead of Wadu. And limiting prio picks like Yuzong is a very, very good choice. Also protects the guys too. The Ruby is an option. Ruby, Esmeralda have been big bans in this grand final so far. Payback. All right, they ban out the Farsa. Okay. So minimizing the amount of damage that the Stormy can put out, but throughout the tournament, he has used picks like the Lu Yi, the Nana, the Selena, and we know he has a pretty mean Novari as well. So there are a lot of options, but considering that he does have the Grok, I'm thinking he wants some kind of prio, so maybe prioritizing just a little bit more on that Selena. I agree. I think no matter what, the Selena is a go angle to go towards. Just because you have that instant stop button, right? You get hit by a Selena arrow, it's guaranteed light stop, but not only that, you are not alone in terms of the setup. You have so many ways, and not to mention, Yi Sun-Shin gives you vision. That split second with the Mountain Shocker goes off, that's enough for you to get info, and you get to redirect where you want your opponents to go with the Grok too. This Alice ban really is starting to make it hard for this Hilda. Like Cambodia have a lot of thinking to do where this Hilda needs to go. The Gatot is still open, so if they want to put Gatot in Rome and basically put Hilda on EXP, and I feel like it's still an okay matchup going up against the Lapu. It is, but the Gatot will suffer. We've seen how Team Malaysia handles the Gatot. With the Grok as well, it's gonna be tough. So they do go for the Esmeralda, which has been a hot commodity so far. Doesn't really reveal yet where this Hilda might go. I wonder if Malaysia want to think about a Lunox here. A Lunox Gold. Even Honestly, mid would be Lunox okay. mid as too, well. yeah. Or you could go for Granger, right? Yeah. Granger Selena. Some great long-range artillery fire. Yeah. A lot of siege between Yusun Shin, Selena, as well as the Granger, so... They could go back for X-Borg and it would be good, honestly. Not a lot of ways to deal with the X-Borg right now, but the Granger is still open in case Cambodia picks What it about up. Ruby? I think the Ruby is not bad. It can really protect the Yusun Shin. Let's see, so they do go for the Ruby and the Lunox, so pretty much sort of within our predictions, the forecasting. What about the end? What about the end of the event with like a 70% prediction rate? The Terizla now of Cambodia. We have seen this before.
from Indonesia, courtesy of Iran. But this time it will be Wadu wielding the hammer. The execution coming in from Cambodia has to be perfect here. Because with the Lunox, there are ways to answer the front lines, the Esme, the Terizla, the Hilda. But again, Lunox have to target one at a time, so she can't deal with all of them. So maybe Cambodia, their idea is just to charge through. Someone has to be the black sheep, but then everyone else, you just got to move through and try to take down as many people as you can. Maybe the idea is just to power through the pain and use that to fuel the energy to potentially get to a game 4 and stay in this grand finals. Because Malaysia are one game away from a trophy lift. Ladies and gentlemen, it's time to head into game number 3 of the grand finals at WEC here in Kuala Lumpur. Team Malaysia on blue side, Team Cambodia on red. This is potentially the final match because this is match point. But there are opportunities for Cambodia to make a comeback here and extend this best of 5 all the way. And again, both junglers are studying on the same side of the map. But look at this, Api is already moving forward and looks like it's unable to threaten that. But Api, Boxy, as well as Detective, it looks like they want to, show a little bit of pressure here. Api even taking that golem, and Sakai's having to go straight for his beetle. Boxy, Zing, as well as Detective, they're being a nuisance here. Yus will try to flicker away, but they're going to jump onto him. This is like a first blood angle. Detective, good secure, and the pressure is on for Cambodia. This is what we want to see. Oh, they're upset. Oh, they are. They're angry. They're going straight into the jungle. They're like, okay, you know what, Sakai's, you keep hitting onto Api. We got to make sure that you don't get a farm. And look at this. They're brute forcing all of this invade, taking away the farm from Sakai's. Is not going to be having a good time here. Yeah, because Lunox doesn't get to help you defend, right? She doesn't necessarily have the damage. Even if Sakai's doesn't go down, as long as they can stall out his leveling and start getting objectives is good enough. You have a sandbag in the XP lane thanks to Wadu. So no cheeky ganks will come true, or at least it will be so much harder to pull off. And Boxy can keep doing this. You draw the attention of Stormy and Yums away. As the guys who need extra protection, I think Api might have gotten that. But I'm loving that Cambodia has a lot of plans up their sleeve. They got plan A, B, and C. And so far, all of them are actually being executed quite well. Rolia going up against Zing here, but the turtle has spawned up top. And looks like Cambodia are first on the scene. And it doesn't look like Malaysia can really respond. Sakai's just going to prioritize getting the farm first. Look at that, Detective's already level 5, and Sakai's hasn't hit level 4 yet. They're going to come and try to, again, brute force to Team Malaysia. Take the jungler, flicker, pull back. Boxy flickers to safety. Loli out now. He's the falling star, but a lot of damage coming in from the side of Cambodia. The shadow used as well. Wadu in with the penalty zone. Lolia goes down. Wadu swings away. Stormy gets flattened. Boxy gone up by Sakai's. A trade from Team Malaysia. Now Momo to the rescue. Api with the Purify. Can't get away. Bails out Sakai's. Both teams showing incredible teamwork. All 5 members starting a fight at 2 minutes and 30. Wadu getting chased by Momo, and now even dodging Yums on that tectonic charge. Cambodia starting things off with a 1,000 goal lead, and both teams already having big team fights in the early game. All in all, very good stuff from Cambodia, but can Jing get out of this because it's either Land Shaker, Momo stuck around in the bottom lane to try and create an advantage. Zing needs to navigate this, and he needs help, but help isn't coming anytime soon, so he's just gonna buy time as Momo picks up the kill. And on Yums, he should know that Boxy is there. Api as well as Boxy are doing an amazing job as this mid duo, stopping Team Malaysia from farming freely, moving around the map. Stormy taking quite a bit of damage, healing off of the minions. And now Team Malaysia, they're just trying their best to survive. They box Boxy in, and he has no way out this time. Eats the boat in the face. Wadu tries to re-engage. They get a 2-man room, but Wadu now eats the Land Shaker. Can Detective get something done? Momo, good frames with the flicker. Sakai now takes the gun from Api. Api cannot finish the job. And Yums sort of missing the tectonic charge a little bit as the crowd have their hands in on their heads. That looked a bit dicey. Hey, he predicted he was jumping inside of it, okay? The crowd in front of us were like, oh my god, he missed it. That was a good attempt, respectable. He
was predicting. Yeah. Sakai's doing an amazing job fighting as many farm as he can. Can I just say that Hold on. Momo has been quite a big roamer. Another Purify out. The wall is dead. Here comes Yumes. 2 dead and 3 for Malaysia. Double kill for Sakai. And up top, looks like Momo goes on to Wadu, trying to get his 1v1, but the Terizla is very, very tanky. Healing back up with the hammer. And all the while, Detective trying to get the buff. It looks like he's able to get it. Momo finds him there. The wall. Oh, the wall! He has no hits. shadow. Detective needs to get out. Wadu will fail him. That was a very clutch wall. Maybe Yunes is like, hey, watch this, okay? That was just one bet charge. Everything else is going to be good. Yeah, give it the Croc away. It's always a scary thing. It's a scary risk. So far, it hasn't paying off Cambodia. Mountain Shocker Vision granted to Sakai. Who wanted the Detective to stagger him? Oh my goodness. No way out, even with the shadows. I mean, at this point, just a little bit speechless here. Oppie just waiting for Team Malaysia to charge in so that potentially he can fight back. Momo opening up the map. Yeah. Finds Wadu as well as Oppie should be able to clear the minions, no problem. All the while down bot, Zing is getting as much free farm as he can. This Ruby is a problem, and another tectonic charge. Boxy is straight up gone. This Grok, man, it's... What a recovery from a slow start for Sakai too. Every single time you see the Grok play, you remember, okay, no wonder he keeps getting bad. Yep. It's such an important game for Cambodia that led one of the most powerful picks through. It is a scary thing. Even Jing now, forced to take farm in the top lane, Loli out easily, just wheeze out of that. And all the while, the turtle has been started up by Team Malaysia. It looks like we'll be able to get it. And now extending the lead. How the heck that Sakai still hasn't died? Oh, hold on, look at that! They force Oppie back, and Wadu is still looking for a window, but Momo is not gonna wait. He's gonna swing on Oppie. Momo gives his life away. Wadu gets pulled back, and now tectonic charge from Yumes. Malaysia coming right through with 4. Detective able to get away. But still an amazing engage coming in from Team Malaysia, and Momo sacrificing himself for the team. That was an amazing setup. And now Malaysia, 15 kills to Cambodia's 4. Detective is trying his very best to deal damage in the previous fight, but again, everyone's so clumped up. It's just not enough. Looking at items here, he only has the Hunter Strike. Look at Sakai's. He was the one pressure, but now Hunter Strike, endless battle. But now Detective does have the War Axe. But still, in terms of items, Sakai's is in the lead. Can I just also note out, Lavelle, that this is the biggest goal lead we've seen a single team have in the Grand Finals. Boxy just got solo kill by Sakai's. Detective wants the buff. Doesn't get it. Loliao stole the orange buff away. Malaysia continues to siege the wall, put up Jing. Where's he gonna go? Because Loliao is there with the Don't Run Wolf King. They try to suck him back, but he's gonna flicker out this time. As Wadu tries to hold the fort, forces out the brilliance from Stormy. Malaysia continues to terrorize jungle with Cambodia. Purple buff stolen. And this is very difficult because Cambodia, in terms of scaling, honestly, they can't really contest the scaling of Malaysia here. Oh no. Oh no. They saw Detective. But able to get away. Momo is not close enough. And Detective knows it. Forcing out the bravest fighter, but should be available in the next Lord fight. Zing is going to proxy the wave and going to come in soon. Team Malaysia, with that Lunox, they might be able to take it under the nose of Cambodia without them even realizing. Look at how fast the Lord is getting taken down. Malaysia is going to secure this for free with the help from Stormy. They have a good idea where Zing is as well. Look at them toying with Wadu. It's the boat. Yup. All they want is that penalty zone out. And the Lord is marching in. It's 9 minutes. It's going to be the first Lord. The Holy defense is still up, so they should not be able to get any inhibitors here, but they just want to get as much structures as they can, get a lot of gold, extend the gold lead, and now forcing out a flicker out of Boxy. Yeah, just trying to make Cambodia flinch every single time they show up on their screens. Someone will have to expend a crucial resource just to stay safe, and this siege
it's going to be dangerous because Jing is not going to be allowed to go home. Momo will hold him hostage in the bottom lane. OD defense pop, another ball put up. Boxy dodges the bolt, even uses the conceal to get away. Detective will try to keep him safe. And the siege, for now, has been halted by Cambodia. Yeah, Zing is doing quite a job here, stalling as much as he can. But Sakai's is here on the scene. A level 14 Yisun Shin against Zing on this Esmeralda. It's not even close. Look, guys, look at this freestyle. A bob and a wave, a punch and a jab. A falling star Moon Yu's, but the only one falling this time is going to be Jing, and Sakai knows it. Eats the bow in the face, and the base is under danger. The Lord does end up getting slain. Another holy defense dropped. Team Malaysia now assume full control of the game with a close to 8K goal lead. Oh, Oppie is able to get out of there. But look at this. They get a pullback. Wadu swinging to safety with the enhanced movement speed. The siege still continues. Catapult is around. Landshaker dodged by Oppie. Finally, Cambodia gets to breathe a little bit. Yeah, Malaysia can't make a mistake. Overstaying their welcome is potentially going to set them back for quite a lot. They're going for the mid-tier 2. Sakai's, he's Wadu in dealing quite a lot of damage onto Wadu. Lets him eat the boat. Traction pulse used. Falling star move from Jing. Only as a means of a deterrent. Boxy conceal, doesn't really matter. Yum just stops him like a brick wall. The next lord up in 45 seconds in the bottom quadrant of the map, and Team Malaysia have assumed full control of every single territory. And it's up to Boxy to open up the map, but that's all he can do, provide vision. Malefic Roar has been built by Detective. Now he should have enough penetration to deal with Momo, Loliel, as well as Yumes. And looks like the wall is not able to get onto Boxy. Boxy gets stunned though. It's gonna be the turtle boat. Damage follow-up isn't there just yet, but it's not about killing Boxy, it's about forcing him away and making him ineffective in doing his job. Even Jing, he used the Purify already. He's just gonna try and buy as much time as possible, but he's in no man's land. Yep. Loliel and Stormy are chasing after him. And Zing trying to buy as much time as he can. Oh, Sakai's is there. Tries to get on to Zing again. Where is he gonna go, Jing? He has nothing. And they know it. The Sky Prince is legendary. It was a good attempt by Cambodia to slow Sakai's down. But he comes back max speed. Now level 15, 9-0 and 5. I don't know, man. That was a good attempt coming in from Cambodia. It's actually quite impressive that Malaysia is able to survive that and eventually scale back up. Almost a 10K goal lead, 13 minutes into the game. The Lord in hand for Malaysia. An endgame angle is very, very possible. This could be the final blow that Malaysia lands to get themselves at the trophy and a two-time championship title. For 4 of them, it's a back-to-back. And Momo will be the latest addition to the Hall of Heroes at the end of this. At least they're not making the letter V. Yeah, I think you need to make the letter M. So it's sort of V in reverse. I don't know if you can do it with 5 people. You might need the help of Cambodian players. That's gonna be too much. But either ways, Lord is marching in. Cambodia, in terms of wave clear, honestly not looking that great. It's only on Oppie and Detective. Yumes being in the front line. Loliel looking to pull anyone in. Boxy is there. They see it. Again, the Mountain Chocolate has so much value, man. They get the crash from the Lord in the bottom lane. There goes to inhibitor. Let's see if Cambodia can defend it. It's not going to be easy to get the crash. Oppie dangerous. Wadu, 4-man penalty zone. Momo hops to the back line, assassinates Oppie, and Loliel now tries to hold the fort. Detective is looking for the window in. Loliel still escapes. Boxy and Jing on the chase, but they get turned around. The base still in danger, though. Momo finally ends up going down as they take out Jing. 2 day for Cambodia. Detective barely makes it out with his life. 3 members left on both sides. But Wadu, the MVP there. 4-man penalty zone, allowing Boxy to get on to Sakai. It looks like they're going through. Look at this. And they got Boxy, the mighty swing to another penalty zone on 3, but the Brilliance is going to keep Stormy safe. Oh, Detective into the shadow kill.
Can he at least get Lo Liao or Stormy? Stormy ends up going down, but Lo Liao comes in with help from Yumes to find it. Detective on the run. An Oppie responds in time to extend this game. Loliel almost got taken down as well, but the fact that the minions spawn is actually bad for Cambodia because he used that to heal up. That's how you know that they're having fun. Got this in the bag. It was quite a goal swing in favor of Cambodia, but we have reached a point of critical mass, the crescendo of this grand finals. Team Malaysia have hit their peak terminal velocity in terms of impact. This could be everything. But they need to be careful of the suction coming in from Api as well as Wadu. Because at any point when they're clumped up, Cambodia can turn things around with a clutch team fight. And the Detective at this point, 4-1-1, should have enough damage to deal with Skies, to deal with Loliel. He just needs a setup from Api and Wadu. There's the bottom wave too, they had to do with it. The moment Detective shows on the map, Malaysia goes on to the Lord. As easy as that. Lord number 3 for Team Malaysia. And I would say that was a mistake. It should be someone else. Someone else should have been the one to clear the wave. When Detective shows his face, that's a clear sign for Team Malaysia to just take the Lord away. Yeah, they definitely know how to have fun. And that's what matters. Even in the toughest of competitions, What if Cambodia makes a B? Really use it reciprocating. Yeah, that's what we like. All right, ladies and gentlemen, this could be it. Yep. Good sportsmanship coming from both teams. The Lord is marching in. Team Malaysia, they're going for a last push. Slowly out of a two-man pull, and they're going to chain everything onto Wadu. Wadu is already gone. Boxy and team tried their best, but I think this is it. With the world as their witness, Malaysia is inevitable. With courage and perseverance, the white of purity and integrity, harmony bathed in serene blue, and the radiant royalty that shines in gold and yellow. The sons of Malaysia will fly the Jalo Gemilang with pride tonight. Tuan Tuan, Tan Puan Puan, your back-to-back champions, Malaysia! Congratulations to Malaysia! Once again, winning World Esports Championship live from Kuala Lumpur 2025, defending their title for 2 years. History has been made, first ever. Two-time and a back-to-back, Lo Liao, Stormy, Sakai, Yumes, and now Momo. That was an amazing best of 5. Even though you only went 3 games, but every single game, you feel the fire, you feel the pride, you feel the emotions in the game. And now, to properly celebrate our champions, we'll go to the stage. The crowd was only theirs to begin with. Back to back, because once was never enough. Tuan Tuan Dan Puan Puan, this is your World Esports 2025 champions, Team Malaysia! Successfully defending their title, Team Malaysia, you may head to the throne and claim your crown. You may lift your trophy in a count of 3, 2, 1!
victory. But before anything else, let's have a little chat with our winners tonight. So guys, how does it feel like to win back-to-back in your home soil? I feel amazing because this win dedicates to all Malaysian MLBB fans and especially to Momo and Lolius because during MPL there's a lot of dogs to them and this win proves to them that they deserve the slot at the SSF. A very well-deserved slot indeed. You know what, Momo, come here. Momo, congratulations on your first World Esports Championship trophy. How are you feeling right now? Feeling so happy today. Yes. Is there anything you want to say to everybody who have doubted you or even supported you in this journey? Thank you to all fans yang datang sini dan siapa di rumah. Thank you so much. So we will do our best dekat SEA Games nanti insyaAllah. Momo, who do you dedicate this win to? What? Sorry? Who do you dedicate this win to? My, for my family and myself. Yeah. A well-deserved victory, Momo. Finally, his first international trophy. Loliel? Loliel, I know there were lots of doubters in your journey, but now that you won and proved to them that you do deserve the slot, is there anything you want to say? Anything at all? I just want to say thank you for all the one who support me until now. I still in this industry because of the support. Yeah, thank you. Who do you dedicate this win to? To all my close friends, of course. Wow, to all. So much for supporting everything that I do. I love you. I'll see you soon. This is such a heartwarming interview. And of course, it's a very well-deserved victory. And now it's time to throw it back to the casters just for a little bit as we prepare for our awarding ceremony. Throwing it back to the casters. It's not over. It's not over yet. They gotta celebrate this one. They've been training hard. It's very evident with all the crazy picks that they had, with the chemistry that they have built. Yep. Like when if they tell us they've been training nonstop, I believe them. Because how do you get this good without, like, I don't know, three to 5 scrims a day, man? Yeah, and we know that, you know, they get a couple of days worth of break and then it's back to the grind, right? Like the knowing when they're flying 4 days away. 4 days away, which isn't a long time. For me, it's 3 days away. But still, again, it's a great grand finals. Credits to Team Cambodia. They gave us one hell of a grand finals, and they made it close. They made it exciting, and that's the important thing. And again, they were all good sports. Like, it's crazy for me because in my head, it's like, yeah. Don't give Sakai's the Hayabusa, then you have a better chance. And then he gets the Eastern Shin, and then he does all of that. And then we've been saying the whole tournament, Grok is kind of scary. Don't give it to Yums. And Yums gets Grok. It's scary because Malaysia at this point have a few signatures that you can't ban at all, and they have the pocket picks like the Hellcurt. Yes. Plus X. What if they still have a bit more? I have a feeling. Maybe Loliel has been hiding a few things, and Arcadia's like, hold on. You don't need to show it yet. You haven't seen his Claude. He has been practicing it for sure. Wait until he busts that out. So I would say that all things considered, it does show one thing, right? This roster is not unbeatable. This roster is not invincible. There are definitely ways to get through to them. But when push comes to shove, when all the odds are stacked against you, all the decks, all the cards are on the table,
who makes the battle call, and today is Team Malaysia. We're gonna look at the Hall of Famers here. How did Sakai get pressured so much in the early game, denying him of the farm, and he's still the gold hunter, 886. He's the GOAT. At this point, like, Sakai will be the face of Malaysia MLBB. Yeah, It's either him or Yums, man. talk about bouncing back, right? Like you always say, it's not how you start, it's how you finish. And what a spectacular finish it has been. Ran through the finishing line with a march down mid, red carpet laid out by the Lord of all things. Today is a historical day, man. It's all these 5 days is worth it. It was worth it to get to this. This is the peak of MLBB. Wadu being the tanker, and honestly, Wadu and Detective are the biggest problem for Malaysia this entire grand finals. And you know that Malaysia really had to earn it. Like game 1, game 2, those were not easy games. Yes, those were not. I mean, these two teams, especially the roster of Team Cambodia, we've met them a couple of times. They've given us a headache every single time, and they have been one of the few opponents that has pushed us to our absolute limits. Today they fell again, but every time it happens, they bounce back stronger. And I know we will be seeing them very, very soon. The MVP, your Sky Prince Sakai in the jungle, 12-1-7 on that Yi San Shin. Do you remember this guy getting criticized? Remember they say stop the squad. I mean, do you think you just play a regular match and hope for the best? Or if you happen to realize that this team's there, you go for them? What do you think? I don't know. You know what? Genuinely, it's down to every team what they want to try and execute this game. Could you try and target the top teams? Yes, but I think they're just going to try and play their own game and try and just get a good finish here. Make it top 3 is going to be very important for these squads. So I'm looking at so many teams, just don't take early skirmishes. Avoid it like the plague. Keep the team alive until circle 5, 6, 7, and maybe you have a chance to make that redemption arc and go into the top 2. You're right. It's just too close. Too close at this point, guys. We're going into the desert here. Last 2 matches. Who could possibly get one of these last 2 spots? Casters, take it away. Oh, it's so close. It is just so close. Right down to the wire for all of these teams. Their feet stumbling over the rocks of Erangel, over around the prison, into the chaotic fields to the west of Pachinki. And now we find ourselves in Miramar. We always knew it was going to be here, but the standings, they are certainly one for the ages. The top 2 spots at this point blank really could be anyone. Well, not anyone. There's top performers here, Narvalo and Redux from Falcons. Obviously, the Falcons having some of their best performances here on Miramar so far. Very controlling positions they've had. But yeah, very close. Very, very close towards the top of the table. I don't think we're going to have a clear winner at this rate. It's going to be a case of few points here and there ahead to get towards that top 1, top 2. And I think that even topped first and second place is going to be very close together. It does seem that way. It does seem that way at the moment. I mean, we were talking about it, you know, getting over 100. You're starting to get in the conversation. Getting over 110, you're feeling okay. Over 120, you're feeling very safe. But those numbers are slipping down and down as time goes on, Blank, with only 2 maps left to play. And we've still got, you know, maybe 20 points or so still to add towards those tallies. It's really not looking like I wouldn't be too surprised if we don't even break the century. I think that that's definitely a possibility moving forwards. I think 88 points, 12 points in 2 matches, it may just not happen. Heading over towards the northwest side here. Overall, Alter Ego has had some good splits on this map. But again, it's that greed that they need to really rein in a little bit. Team like Smaug at the moment. Flash only 1 point behind on 80. Influence Raid on 77, tied within a circle. Goodness me. I mean, I'd be happy if Weibo, Alter Ego, the Flash, Influence Rage, all in a circle got into the top 2. No matter which one of those teams get in, I'd be very pleased to see them in the grand finals. I think they all deserve it at this point. All of them so close towards the top. Just
a little bit sad. I think I'm most sad about some of these squads not making it through in the gauntlet. And we could have had a very ridiculous lobby going through in towards the grand finals. I mean, I think no matter what, we kind of do have a pretty ridiculous lobby going in towards the grand finals. It's just a question of who will make up those last 2 spots. We've already decided the majority of our players, and actually some of them are already over there blank, getting stuck in, getting ready, prepared on site. They'll have time to settle in, which would be nice for them, but it is very much more unrested here at the last chance stage. Weibo looking to defend that top spot again, and 2 opportunities now to have come up big in matches that could have really changed the tide and locked them in, but it's not to be. In the circle, starting in Picado, not a bad approach to the north side of the map around El Pozo. Falcons get to start early there. They do enjoy this spot. The Wolves in Monte Nuevo as well also have a good run out towards this position. Alter Ego and Weibo a little bit further out, and they have to deal with that wall of squads around Power Grid, San Martin, as well Hacienda. So a little bit more difficult to rotate through there, but still possible. Still very, very possible. We'll wait and see, though. I think that, again, this next 5 minutes probably going to be very quiet, very slow, methodical on the rotates. That's what you hope. That's what you hope to see. But it is now really do or die in the desert here. Influence Rage after that chicken dinner sit right now 4 points behind the bubble. Definitely in with a chance in a circle as well. The exact same spot, but losing the tiebreaker right now. I think the most interesting additions to this middle of the pack are Arcred and Geeke, right? Geeke, I mean, I don't know how they did it, but last match may have been just a little bit too slow for them. They did massive, massive performances at the start of the day, but it has petered out just a little bit, and they find themselves 58, which, you know, being 22 points behind the bubble, or 23 points behind the bubble now. Yeah, that's a tall order when everybody else is ahead of you, also trying to chomp down on that lead. Yeah, look to make some cash on these next 2 games. Like I said, going to be slow here. El Pozo, kind of a regroup going through from the Falcons. They still have an outpost over on the eastern side, up on the mountaintop. They are sort of on a 3-1 split. I think IQ knows, though. You can see here on our screens. He has a good idea of where a player from the Falcons is playing. Pretty typical spot to hold as well, so fair enough for him to immediately point that out. Novalo on the high ground, already out to the east side. A little bit split from the rest of the team, and let's hope that they don't maintain too much of a split for too long, Blank, but I mean, the Falcons should be done. There's no real chance of them making it their way on in, but they are top performers here on Miramar, and that is mostly because of their one massive game on Miramar. That only comes from the stats from yesterday, and we saw what they could do with the high ground. Will it go to the high ground again? I mean, it's not impossible. Oh, Redox, he might not be going to the high ground, though. He tried. He tried his very best. Skating it down the hill. Fair enough. Yeah, we're definitely just waiting for the first circle here, because this first circle, or second circle, I mean, but this first circle can contain so many players. It's really not a big deal for a lot of our squads. It's unlikely we'll see initial skirmishes. It really depends how aggressive teams want to get. It looks like for Alter Ego, that's very. They're going to try and chase this one down. Dammy trying to heal up, trying to get a little bit of healing on board before the fight comes to him. Alva's here. They will not give him the time to do so. He steps out and not even going to take any damage in response. Has to step back in. The rest of Gen G are taking shots out towards him, but it's too late to save Dammy. You're not going to be able to recover that one. And first blood is drawn. And it is on our second place bubble team. They get that point. They're now one further point ahead. And as we know, single points make the difference. It can make all the difference. If the Wolves
One additional point was awarded from yesterday, but they're not quite there yet to make that additional point count. So we will wait and see. In the circle down towards that south side, you can see here, you have a little bit of a wide split on. It's not quite as ridiculous as some of the splits we've seen, but they are trying to control a lot of space on the south side of El Pozo. Now we got 20 seconds now before we see the first zone shift. And this could be quite diabolical, right? Could head over towards El Pozo. Oh my God, Alter Ego is just not stopping. And they're going for Influence Rage as well, Blank. The team in 4th place right now. The nade over is good though. And they may be delivering them points when it matters the most to not allow them to come on through. The circle shifts out to the east side, Blank, out towards San Martin. And Weibo Gaming sit right in the middle of it. But the nades keep on coming. And Alter Ego and Influence Rage may just tear each other apart here. You've got Gen G on the south side and Alliance on the north. Both teams could have access to this location and get a third party stuck in. Alter Ego being extremely aggressive. I think I like this decision from them. They just leave. They just leave. There's no reason to stay here anymore. They'll play on us 3. For them, they understand that right now, probably 6 to 8 points is what they're looking for, right? Anything lower than that is going to hurt their chances. In a circle, move over towards the Burmese ghouls. Yakker with a nade inside the building, switches to the S12K, looks for the big spray down, but not quite finding any value just yet. He's going to step out into the open, and Geek here in the hills around it. Falak spots him as he bounces the nade off the backboard, and Noki able to slam dunk it. The alley-oop coming through from inner circle to be able to find the first. Over onto the Burmese ghouls, who have rocked up on the north side of things, and no knock sent back towards. Siyang ina-update ngayon. राम्रो पिक्सहरू ओपन भए तापनि जङ्गलिङ पोजिसनमा त्यही अरे तो नहीं होगा एंड थोड़ी होगा तुम लोग मैच में हो हो जाएगा हम लग रहा है तुम लोग मैच 4 मिनट बचा है सिर्फ और तो कोई डिफेंड कर लेगा ना मिड मैं निकालने जा रहा बॉट And each team is out for blood, bringing out their absolute best in the draft. Shinryu, which team do you think is going to have that edge? I think for the early game is definitely Team IQS12. They have a lot of pressure to build up. You can already see it's going through. The Hayabusa wants to go in with the quad shadow, but does not have the shadow kill yet, so needs to go back. But the warnings have been given, and Witch as well as Afraid needs to back out, and Witch actually needs to recall, so a little bit of EXP denied to him in certain way. But again, for the side lanes, the leading matchup is not going to be too well, I would say, in the early game at least. But talking about the emblems, do you see anything different that stands out for you? And looking at the emblems, I think nothing new is really coming up. The situation is pretty straightforward. In the Epic's, Ling is going in for that war cry, so he has a little more damage when he goes in for that, you know, Tempest of Blades. Yeah, at least it is not a tank build Hayabusa, man. I would have been disappointed with that as well. But again, out there, Apex is trying to zone out Afraid, or not Afraid, Joseph actually, but look at the Ling. This is the problem, isn't it, with the Hilda against you? That is the whole doubt. I mean, like, against the Hilda, why the Ling? Like, your early is getting slowed down, but as we speak, Apex supposed to flicker out. Right before the turtle too. Now, I think the side of Team IQ and TX might have a slight edge. They can just try to take down the turtle, but both the junglers does not have their purple buff. Look at Witch though, really low on HP. Oh wait, Anti goes in with the flicker, takes down Witch. And now I think the side of Team IQ and TX will have to consider leaving that buff completely away. The shadow kill connects. Oh no! Whoa, 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 whoa.
Joseph survives by a slip of faith. Whose jungle is that? Whose jungle is that? SATUL's jungle? It is, right? And now comes the Black Dragon, Radium. Not Radium, Okay. J will get fallen now. Vario wants to lock on towards Radium as well, but not Radium, but look at Radium. He's marking on towards Wish, picks up a double kill, but Apex as well as Anti can back out too. So the jungle taken away, the kills taken away, now the gold also taken away. So what do? RNTX, they are now onto the back foot. RNTX, not the best start. You know for a fact, you see the Hilda, you know there's an engage coming, and you just push too many bodies. If it was just 2-3 people kind of zoning Apex away, it was fine. But the second Apex saw that, these guys are over committing onto me, they've used up a lot of skills, let me just bring my own boys over there. And the game turned around. So, I mean, and no one has taken the turtle just yet. Jay? Oh, Jay? He walks out. Oh, look. What? I mean, look at the rotation coming in from both the teams. Look how they're rotating. Always, you see 3 people together. Look at Apex, so he's going in 1v3. The Petrify connects onto us 2. The RWM used up, and Apex falls. So Free takes on the kill, but the members are low. The shadow kill onto was Joseph, but does not really connect. It transferred to the turtle, but still Joseph needs to be running around before he gets taken down. Survives still, but you know what? That was a bit of overcommitment from the side of Team IQ SATUL, I would say. Yeah, I mean, they spent too many resources and now they can't effectively contest that turtle. They have to hold on for just a little bit more time. But they know that Joseph's buff is going to be up, as Radium did give them that vision. But instead, they're going to go in for the engage. Flicker is going to be used up. Apex got too low, but there's the turn. The brilliance used up by the Lonox over there. Anti double decimate gets the killing spree with the Flicker. Makes it happen. The Tempest of Blades. Aaron gets the shutdown on Anti. The Blades too hot to handle as the members of SATUL pushed back by the Death Sonata, dealing out an absolute monstrous damage onto Anti and Asuna. Once again, the brothers being taken down by their own namesake with the name. I know, right? But the thing is, I feel for Aaron, like, it's more about Aaron in this game than Joseph, because you see the Tempest of Blade connected, but the damage was already there from both Witch as well as Aaron that took down the kill. And if he has a Sky Piercer by now, I think Aaron will be able to do a lot more. But Apex falls for the 3rd time. And I feel the Hilda's code has been cracked by the side of Team IQ RNTX in this game, because Radium, not Radium, but Apex is not really working too well. But look at Radium, he might be in trouble here. Oh my god, absolutely shit. Oh, Decimate. No, he gets the kill. He can get another one. Can he make it 3? No. He does not. He backs off for now. I mean, that's just the most annoying part, bro, of that Martis. He has to press a button and you disappear. That too, like, no matter how, if you're the tanky member, if you're the squishy member, does not really matter, right? He takes on you equally because of the true damage. And now the good fact for IQ RNTX is what Aaron is doing. Is still taking down the turret. Joseph might be going for a 1v1, but it might soon turn into a 2v1. But Joseph is trying to bait out Jeho, but he will instantly go back with the quad shadow. Did not have the shadow kill, so does not want to delay that for too long. But onto the portal in Radium versus 2 members, but Aaron getting locked on by Apex, and he takes down Aaron. And now, afraid all by himself, the RWM lockdown slowing him as well, but the HP has been chipped. The button HP away does not survive. Asuna gets the last hit. 2-member falls, the gold lane especially, and now IQ SATUL again has the ball in their court. Once again, despite that early throw by Apex, he makes a turnaround. Right now, the 4 members, no escape for Witch. He's gonna go in, but he's not gonna stay back alive, as it's gonna be Martis who cleans him up, but Mirio will get the clap back. There's the comeback coming in. Joseph goes in for the re-engage. Will they go in for the dash? There's OG Shadow Kill, but he catches up 3 with the Tempest of Blades. Joseph popped out very low, trying to dash out, but the killing spree. Joseph is down. It's only Aaron and Afraid trying to sustain against the world. But Asuna looking for the void manipulation. Hayabusa with the OG Shadow Kill. The Shuriken is not going to be enough to take him down. Witch holding on with the brilliance. And this is a game at hand, folks. RNTX holding on somehow. Oh my god. Aaron could have been in trouble, but Radium cannot be melted down at this point. So this Esmeralda is doing too much, and the damage is not being enough, from which he's 1-4-0. So he does not have the Sky Piercer, he just have the glowing wand, so it's not really enough yet. But for the side of, Aaron, I would say he has 2 items locked in, so just consider him
keeping him safe farming in the lane, because if he gets taken down once more, his farm will be reduced exponentially, and that will be causing a lot of problem. Top tier anti takes down the tier 1 up turret, so now the Turtle 2 will be going into the side of Team IQ. SATUL, but look at Afraid getting overloaded with the damage, but there's a heal backup. Will it be enough? Does not seem so. The shadow kill there, but Iranian picks up the kill. A mega kill for him. The Black Dragon used up by Mario too, but just for the escape. And the side of Team IQS2 is just expanding their own domain much more in this game, and IQR and TX, they cannot answer back much more, but look at Jing again going back in, shipping the lane, with Adam Lip comes down, there is the brilliance used up by Witch for the escape, and the map just given freely to the side of the Does have fleeting time? Does he have fleeting time on that? Because why is he getting the RWM every 20 seconds right now? I don't know. I mean, yeah, he does not. Then how is he getting it that quick? I mean, it does not make sense. But I think the real question is Jay playing Assassin or is it Radium? I don't know, but again, look at the top lane there. The Tempest of Blade used up, but Aaron picks up the kill. Anti-falls though. This is bad. You do not want to give Aaron gold. He's just going to run away with the game. But the thing is, I think even with that kill, they cannot really convert it into any kind of objective because the tier 1 will stand on top. But Anti does just have 12 stacks, so he fell back-to-back twice. So that kind of reduces his stacks a lot more. So I think at this point, he might just slow down a little bit. This might just, stop the rampage of the Smartest a little bit, which could be a good sign. They need some time to, IQ, RNTX, they need some time to come online because the lane is not the best from the early to mid game, but from the mid to late game, he can do a lot more, maybe with the split push as well. And again, onto the middle in the shadow kill. Oh, Aaron! So close from being taken down. Oh my god. Aaron needs that Wind Talker as soon as possible. Wind of Nature as soon as possible. Oh, wait, what? Oh, what's gonna happen over there? Joseph forced to dash out. Brilliance also popped up by the Nox as they're gonna try to siege another turret. It's gonna be Mario holding on, but even he has to back off. The damage coming in is just too much to handle, and it's only 9 minutes in, and the Divine Shield is taken down. I mean, yeah, what is happening? I feel like RNTX has the kills, but they have no gold or objectives contested. I mean, it's not looking good for them. Yeah, free Lord you can see for IQ SATUL because Joseph is pushing Look at Radium's heal rank. You just saw that? Did you see that? He had 100k heal close to, and no one else is even touching 30. Oh wait, I mean, what the... I feel for Radium, he's having a gala time in this game because nobody has been able to take him down, and even the counter which was picked for him, the Lunox, he has to force his brilliance just to survive from the RWM, completely getting outranged by the Eve. But look at Radium, man. He's going in all by himself, getting RWM. Oh, finally. Radium falls. Finally, he falls. But they lose out. A little too deep. Way too much. Way too much. I mean, you do not... I mean, it's a little too late. I mean, you're hitting the 10-minute, 11-minute mark. Wait. So, Jay? Does not have the shadow kill anymore. No way out, man. If he falls. What was that damage? I think Radium... Aaron is stacking up. Aaron is at like 40 stacks if I'm not wrong. He's like 44 stacks right now. Yeah, yep, there it is. 44 stacks. But his passive stack is just 400 in. He just has less passive stack, I would say. He cannot spam those skills. So that could be a problem. I feel like RNTX should start funneling the gold onto Aaron, so that even if the rest of them are down by a few hundred gold, 1,000 gold, your main carry, the guy who's dishing out the most damage for your team, apart from the Lunox, is having sufficient gold. I feel like Witch and Aaron should get a full lane to clear for themselves. The problem is, Joseph is not getting those kills, right? He does not have the Sky Piercer. He just has 7 assists. And on an Assassin, you need the kills, right? Because you're not getting enough gold. And even though for, Aaron, it's a good thing that he is getting the skills. But even for, I think Joseph, he needs a bit more farm to be viable in this game. Every time he's going in, he either has to burn up the Tempest of Blade defensively or just, to give the utility to the team fight, the knock-up, just that is it. He's not getting the assassination down onto the backline. He cannot mark Asuna so easily. Okay. So, looking at the situation right now, looking at the gold ranking, Aaron comfortably up top, and there's no one nearby apart from that one guy, Radium. J is in a different ball game altogether. I mean,
that's a pretty significant gold lead. I mean, difference. But the issue is, Aaron is the only one with all that gold. He's the only guy with all that gold. All the other ranking slots are occupied by ABM. I mean, even Apex is on that list. But you can see the goal difference at this point, right? Anti is leading in term against Mirio, but it's the goal laner that will be mattering a lot more in this game. But what if Aaron falls? Oh wait, top Joseph though. He's using the Tempest of Blade, but RWM locking him down, and no, JO takes it down. The Shadow Kill comes through, but now onto the back line. Mirio goes in, but oh, the gun down will be there, and Anti falls. The side of Team RNTX, they're trying to chase down the members. More gunning coming in, but the Shadow Residue will take down Mirio, the last one. It's still not the last, but the two of the members still trying to run away. Apex is low, but Mirio's still trying to stop or force Radiant back out. But look at JO's position. He's trying to find an assassination done. But okay, Anti's not Anti. Radiant is not done yet. But okay, Aaron gets the shadow kill. And he falls. A huge shutdown. This might be the mayday for the side of Team RNTS to go back once again. The game is saved without Aaron. I think they cannot do too much in this team fights. They have just done what they needed. They denied them the Lord. They took the goal lead away. They turned the tempo and reduced the stacks on the Marksman. I mean, if that is not the team fight you want, S8UL going in perfectly right now. And looking at the other side of the game, I mean, Joseph trying to get a little push in. Apex just went to give him a warning. He didn't push him. He just stood there. He's like, yeah, I'm watching you. But yeah. Looking at the situation of the builds. Oh wait. Yo, what's a huge fight going in on top. Mario forced to use the Black Dragon. Afraid getting zoned out, taking in a lot of damage. RWM catches out too. Afraid forced to heal up. As Jay using up the shadow kill. Brilliance gets baited out. And he goes back to safety. And look at the damage. Joseph! Goes in all by himself. What are you doing? He still goes in. What? But he actually pushed them all low. But like, why? I think the Lord. I mean, the Lord is all the way at the bot. So I think that was a bit too rushed by him, right? Not really required at that point, but a lot of skills waited out, man. Yeah, I mean, it could go anyway. It is. I think RNTX, they can defend this lot, but S8UL, they will be back with more minions stacked in for this push. So how do they keep their inhibitor stacked on, standing on for this lot push? Because they're trying to clear it out with Aaron, but one engage by them will be a lot of problem. But look at Apex was afraid here. They're still going in. Okay, there's the Lord. They're going to try to divert it onto the mid side. Will they succeed in doing so? No, because the turret doesn't even exist anymore. But Afraid and Mirio still stand, so they have frontliners who can tank all that damage. Joseph being chased away back to the base by the guy Apex himself. And looking at the scoreboard, I mean, it is so close. It's so close in terms of kills, but no, Afraid over there. Going into the dual raging stance match. There is Mirio. And I feel that was a false engage. They did not need to go. And the second Mirio used up his Black Dragon, you're going to see Apex going in a lot closer for the engages. Definitely, that will be a way for them. But for the side of Team RNTX, they need to hold on to their top inhibitor. But RWM will be used up, and Aaron is trying to deal out the damage while also trying to keep a safe distance. But look at the HP chunk down onto us. Afraid he will fall onto the backline. There is Joseph going in, but cannot secure the kill onto Asasuna. He will be the one taking him down. Two of the members from the side of Team RNTX falls. And this could be a clear sign for Team S8UL to push in with this wave that is coming from the mid and the bot lane. Oh nah, RNTX, can they pull off a defense here, Valdu? What do you think? Oh, it's gonna be tough, but Aaron, I mean, they don't have lane clear. I think that's the biggest issue. Who is gonna clear the lane for them? You have the Lunox who's popping up the Brilliance, but by that time, the base has been exposed and it will shatter with the already being active, and oh, the Revitalize being popped up by Apex already. So a little bit of early resource being baited out, but now comes the Litho and Team RNTX. They still want to fight for it. The Retribution will secure it. Joseph getting the Retribution properly on point. And the small wins, will kind of give that early lead or early level 4 for this Hayabusa, which could be very important here, Baldu.
Oh, definitely. Considering the fact that it's just gonna be too hard to kill these players. And looking at what that Thamus is running, he's going in for that attack speed with the Brave Smite, going to opt for sustain rather than any sort of DPS. And it's Yuzong who goes in for the Quantum Charge. We usually see Yuzongs on the Quantum Charge or, the Warcry for damage. And that Quantum is basically to chase down anyone who's a little too mobile, which is basically every single pick from the side of RNTX. And 20 seconds to go for the turtle. Uh, I did not get to pay attention to what Jay was building. I mean, was he going in for damage or, like was his emblems damaged based or was it like a tank one again? I didn't see as well. Okay, let's see now. I think he's going for the tank again. Oh, You it's see the tank emblem? Amon. Oh, nah. But again, a skirmish out there. The damage is getting through, and Joseph with the first blood onto the hands of Anti. And now this will be giving a comfortable win for the side of team. I Mirio? will want to this turtle, but again, Mirio is trying to just provide the front lining. But is it the right choice? Oh, the land shaker does not really connect, cannot get the taunt. But again, oh Way wait, too they are late. still going in. Oh, it's okay, still fine. I IQ mean, are in that TX. jump from Mirio. I mean, the brave fighter was the directionally challenged fighter over there, but on the top Whoa, side, whoa, whoa, Aaron, whoa, whoa, whoa. the Black Is it right Dragon though? baited What? out with the reposition over there. Oh, Aaron putting no. on a show. Radium gets completely baited out over there and uses up the Black Dragon form. But Apex is still lurking near at the top. He does have the AOG. He knows for the fact that Aaron is on cooldown with his ultimate. So at any moment we might be seeing a gank, but on the mid side there's a lot of bodies. There is Apex coming in with the set, which is low and not for long as he's sent back to the base. He's sent back to the base, and you can already see the level ranking and the side of team RNTX. They're not doing too well. It is kind of team IQ SHL getting all the lead, especially onto the hero like Armin and Jeho will completely abuse that early lead because the more lead he gets, the more he can farm. And again, you can see Afraid wants to open up the map, and Midwest as well trying to provide him some of the assistance, but it's inside their own jungle. There's nothing much that they can do except for provide Joseph some space to farm around the map, which will be very important because his Hayabusa has already fallen once, and now if his farm gets reduced once again, it will be very problematic. But look at Anti's first item here. He's going for the Thunder Belt, so he's trying to stack on this one, and I think he really loves this Thunder Belt, man. He really loves this Thunder Belt. I mean, Thunderbelt would be the perfect build for Athamus, considering your entire kit is based on physical attacks. And at the same point, we know that this game could be dragging on to a very, very long time, considering that all of them need like 3 items in like level 6, 7 to get to that stage. I'm so sorry, I shouldn't be doing that. But yep, Afraid being pushed away by Jay and Asuna. And looking at the rotation, I think S8UL with those early 3 kills, they're a lot more confident in terms of the engage. But what is happening? Mario all against the world. He wants to go in, but look at the engaged Black Dragon wants to go in, but oh no, Asuna is low, he falls, and Wish takes down the kill, but Air picks onto the other hand, takes down Afraid, Roamer gets taken down, but now Media still wants to help him survive, but look at Witch, he's kind of absolutely out of skill, and now the side of team IQ SHU will completely punish the entirety, not entirety, but at least 3 members from the side of team IQ1 and TX, and this is looking bad because the gold is now into the lead for team IQ SHL. Yup, and IQ S8UL 6-1 in their favor. Anti goes in with the ultimate once again, Afraid being taunted out by Apex, and make it the 7th kill for the members of S8UL as RNTX is being subject to misery after misery. Absolute tragedy in their backline right now, as Joseph has been punished twice already, and he's not even tried to contest for the turtle. I mean, that's the worst part. You're being pressed in your own jungle within the first 5 minutes by an Amon. I mean, that's just not right. There's something not right about that. He's making the Wind Talker the first item. I know, right? And this is not the best way for Team IQ RNTX to actually win out this team fight because they are trying to mark down Asuna, yes, but what about the front line who is very difficult to be taken down? And even though,
Aaron is farming up to the top lane, but he's not joining the team fight as much he needs to. And even if he joins, the damage would be lacking because we are talking about an early game, Nathan. So the itemization has not yet been reached by them, and with the lead not having, with the economy not being onto their side, so this will be not the best game for Team IQ and TX to take early fights for, right? And with this, the mid tier one is also low on HP, so this is like a very bad start, I would say. But again, a 1v1 Jeho versus Joseph. But oh, wait, the damage goes through, but does not take down Joseph yet because of the tank emblem. But still enough for the side of Team IQ SATL to take or get the advantage over this turtle, and they're doing it quite perfectly well while also zoning the rest of Team RNTX completely off the pit of turtle. And I think they might just take down some more turrets because they have nobody to defend up to in the top lane here, Baldu. What I find crazy is that why is Witch going in for the Black Dragon form when you could pick up the Chemical Blast from Asuna? You have the Kimi's ult set. You could go in for Apex's ult. Because with the Black Dragon form, you'll still have to go in the midst of all that damage. And you're not going to be able to heal like the Yuzong. You're not going to be able to sustain like him. So I think that's a very risky pick because it doesn't guarantee you a set. It doesn't guarantee you a kill. So it is a very risky play coming in, which has to be the one. Even though he did get the kill, he is doing his job. He needs to actually ensure his team is being led because right now they're being pressured away from the mid turret. And I think that is the most important neutral objective of the game after the Lord. That first mid lane turret right now instantly opens up that jungle completely for RNTX, to the invades from SATUL. I mean, they're already doing it, and now there's just nothing to stop them. Because RNTX has to take the long way back from a buff now. They can't just walk under their turret. Yeah, even though the side of Team IQ, SATL are not taking unnecessary fight, but they're giving enough warning shot to the side of Team IQ RNTX to just keep them away from whatever the side of Team IQ SATL are doing, because one, they were taking neutral objective already zoned out, and again you can see instantly flicker from Afraid, and he's not really trying to be a part of the fight, but again they are doing it for more, and seems like they want to take another fight here. Oh my god, I think this might be it. They've lost 3 members. It's only Witch and Aaron standing. Make it 4. The doc is working out perfectly as RNTX cannot make sense of what's going on in this fight either. Completely collapsing under the pressure that S8UL is putting on the ultimate, but luckily for Witch, the damage is not sufficient. He does live to see to tell the tale. But dude, it's only 9 minutes in. The Lord is also taken down. We're gonna have a Lord March in the next 1 second coming in. 15. Okay, not 15, Yeah. 45. 45. What? It was supposed to come. 15 and 45 is the spawn times. Unless it's the 10-minute mark, so I guess it hits then. But yeah, crazy. I think there's still time for that. But the fact that the side of Team IQ SATL, they are not taking massive fights. They're taking some fights, but it's just they're getting so much lead with the goal that they have. Thus, the damage is being outdone by them. But again, you can see the bot tier 2 will be falling really soon. And with this, the side of Team IQ RNTX will lose a lot of map space. And this is like a slow death that they're getting slowly. Their resources are being taken away, the structures are being taken away, and the gold, it was never theirs to begin with. And you can see that they are now getting out damaged by the side of Team IQ SATL. So everything is working against them. They have the holy defenses, but I think it's just about in few seconds that it'll also fall. With the Lord marching from the mid lane, Team IQ SATL, they're trying to crack open the base already. They're ready to take down the holy defenses, and the Lord HP is chunk low, but still the side of Team IQ RNTX, they're looking for some fight. They're looking to defend this at all cost, and thankfully they will be holding on to all their inhibitors here, so that's a good sign for them. And I think that was a pretty solid base defense considering that gold lead is so much in their favor. RNTX doing a pretty solid job in terms of how they've been able to hold on. But the fact that they're the ones who gave up that lead in the first place, we don't talk about that. So yeah, so 2-11. The goal difference is going to be touching that 10k mark.
with these next set of waves being taken down. All your holy shield, divine shields have been taken out. Asuna popped down quite low over there. But there's the engage coming in. Joseph AOG bit off a little more than he could chew. Massive AOG. Will the turret get the damage? Yes, it does. Which is the one who reaps the reward of the turret doing its job, protecting its teammates under under its divine protection. But there it is. Will we be seeing an engage? The ultimate used up on which he's popped down very low. Asuna coming with a lot of damage. Radium with a massive dragon tail. There's the black dragon with the shard residue as Asuna gets the mega kill on Afraid. And RNTX lose their inhibitor, and the game has barely begun. Anti coming in with all the damage in the world. Will he be able to sustain? No, he does not, as Mirio with the brave fighter will be taking down the demon. And look at that, Black Dragon on the other end. Jay is going in, just no care for the damage. Pop the recall and backing off in style. You know, the endless shards are not doing so much of a damage, but it's doing enough, right? Even though he's on a tank build, Jeho is not, dealing that massive damage, but somehow it is still going through. It is like, the more stack you have onto your passive, the more damage you deal. And I think he's dealing the maximum damage with those endless shards. So far, for which he's not getting the best game, even for, Freight with the Hilda, not getting the proper setup. And for Joseph, this has not been the best game. And I think at this point, Aaron is the only person they can rely on. They need to provide all their goals, all their, resources to him to actually let him carry this game, because the late game, it's not the best for the Hayabusa. He can go for the split push as much as he can, and try to steal away this Lord if he can as well, because if you look at it, there is just Unbreakable that can stop him, and the Petrify maybe. But apart from that, there's nothing much they can do. Still, no contest from the side of Team IQR and TX. They've already lost their mid inhibitor, and the only two that are standing will be from the top and the bot. So can they defend here, Baldo? Because it's looking very glim. If you talk about in terms of damage, in terms of gold, they are very behind. And the items are not yet reached for their... 3 items are there for the Nathan, but will it be enough? Like, if all-out fight breaks out? Not enough. He needs to get the Wishing Lantern or something. He needs to get... he needs a lot of items, to be honest, at this point. He needs the Wind of... Actually, you can't even build the Wind of Nature because it's the Amon and the Thamos both will do true damage there. But there it is, Radium. OG Shadow Kill being used up. Joseph caught too low. The shadows are only going to delay your life from just a few more moments as the Debt Collector, Jeho, makes his way in. But on the bot side, there is the Lord. They did try to divert its attention, and they did succeed in doing so. Not before they lose out the top side. Yeah, but now the fight is not over yet. The side of Team IQR and ISHUL will still try to push their one more wave stacked up, and they're trying to lock in the base. And Team IQR and TX, they're trying to push everything. The endless shot connected, but not dealing enough damage. But look at the HP onto us. Afraid he falls. And now the AOG dropped 10, but not really connected. But it has done enough zoning for Team IQSHUL to win out this first game and get already being active. And the Revitalize being popped up by Apex already. So a little bit of early resource being baited out, but now comes the Litho and Team R and TX. They still want to fight for it. The Retribution will secure it. Joseph getting the Retribution properly on point. And the small wins, will kind of give that early lead or early level 4 for this Hayabusa, which could be very important here, Baldu. Oh, definitely. Considering the fact that it's just going to be too hard to kill these players. And looking at what that Thamos is running, he's going in for that attack speed with the Brave Smite, going to opt for sustain rather than any sort of
go. I can see my future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night, but I'm used to a fight, not a new sight. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Still standing for them, and I feel with the amount of goal that they've given to the side of team IQS to win, it's very difficult for them to take a fight and win it completely. I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt. I sit and I plan and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom. Read some books, something written, watch the best. Teach a system I invest, never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take that. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing. मैं हूं दैट्स गेमर, मेरे साथ है सिंड्रा, और अभी के लिए ड्राफ्ट स्टार्ट हो चुका है, बैन भी आ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट भी रहेंगे। सिंड्रा बैन यार एजुअल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ ये मुकाबला एक तरीके से तो ऐसा समझ लीजिए कि प्रैक्टिस होने वाली है। यामा को भी दिखाना है कि उनके अंदर कितना दम है, उसमें कितना पोटेंशियल है, क्या वो IQS के फ्यूल को टक्कर देने के लिए तैयार है, क्या उनको बीट कर पाता है। देखिए नजरें उनके ऊपर भी काफ़ी और की रहेगी। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे गायन आ चुके हैं। अब ये और कैसी है, ये टीम कैसी है जिनको एक बड़ी और की है, वो चाहते हैं कि एक फैमिली और उनके पास आए, तो वो उनके लिए प्रिफर होते हुए दिखेंगे। अगले आपके पास आएंगे सीधा ड्राफ्ट एंड पिक के बारे में आपकी राय जरूर जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए टीम दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे बात करी जाए IQS की, तो उन्होंने एक तो दबदबा बढ़ा के रखा है स्टार्टिंग में, और वो दबदबा अभी तक कोई नहीं पाया है। और हो रहा है यहाँ पे, बात कर रहे हैं यहाँ पे रूमर की, जो हर बार अपना जलवा आके दिखा के चले जाते हैं। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे चलिए आते ही साथ लेंस का लॉस, और उनके साथ यहाँ पे टीवी का आगमन हो चुका है। और इस टीवी के साथ बोलना पड़ेगा कि जो है बहुत खतरनाक आने वाला है। इसमें लगातार यहाँ पे मूव करते रहेंगे टीवी में टेन की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। साइड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बादशाह का आगमन हुआ है, तो बादशाह की तरह यहाँ देखा जाए तो जंगलर ऐसा खेलना पसंद करेंगे यहाँ पे। और उसी के साथ चलिए रम उनको कहते हैं यहाँ पे रेंजर का आगमन होगा, और उसी के साथ हमारे जो रहेंगे लाखों फ्रंट लेनर यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे हमको। ये की तरफ आपकी बात करें अभी तो देख अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखिए टेक्टोनिक चार्ज देते हुए यहाँ पे एपेक्स आएंगे अपने पसंदीदा ग्रॉफ के साथ, और इनके ग्रॉफ की जिस तरह से टेक्टोनिक चार्ज मारते हैं, उनका पूरा ही जो पलटा है वो भारी होता हुआ दिखता है हमको। एकदम तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस बार किस तरह से खेलेंगे यहाँ पे। तब तक आपसे जानते हैं यहाँ पे जिस देख के आपको क्या लग रहा है, और आपकी क्या स्थिति यहाँ पे रहेगी, कि क्या लगता है कि यहाँ पे जो है अर्ली गेम पे कौन डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है इस 3 पिक के साथ। अभी जो ये पिक्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम ये तो देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो जामा है वो जाती हुई दिख रही है थोड़ा सस्टेन की तरफ। वहाँ पे बात करें कि शुरुआत से एंटी हील रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज कर जा रहे हैं शुरुआत में। देखिए IQS ड्यूएल का एक चीज़ हम देख रहे थे, तो ये ऐसा टीम प्रिपेयर करते हैं कि एक आधी ऐसा लेते हैं कि स्टार्टिंग से भी ये डोमिनेट कर सकते हैं, और लेट गेम जो है वो काफ़ी अच्छा रखने की ट्राई करते हैं। पर आज इनको पता है कि वो अर्ली गेम की तरफ भी जा सकते हैं, तो उस तरीके से प्रिपेयर होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ये मुकाबला ये कुछ आजमाना चाहते हैं इंग्लिश के गेम, तो आजमा सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये प्लॉट पक्का है, इन्फॉर्मेशन है इनके पास, प्रैक्टिस ये जो ग्राइंड कर रहे हैं उस हिसाब से लेंगे मुकाबले को, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से दिख रहा है। जो देखिए पसंद करते हैं नेशनल खेलना रैंक वगैरह में, पर हम ज़्यादातर हम देख रहे हैं उस दिन ये मुकाबले चल रहे थे टीम ऑनलाइन स्पोर्ट्स के सामने, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबले थे, तो वहाँ पे वो स्ट्रेटेजीज के साथ आते हुए दिखते थे। तो आज कुछ नई स्ट्रेटेजीज इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और बैन से देखें तो रॉबर्ट खलील जो है जा चुका है, इस तरह से बात करें तो आर्नोल्ड जो है वो बैन कर चुके हैं। अब एनटी के लिए एक और बैन
कह सकते हैं दूसरी तरफ से तो अब कलिया जो है वो भी जा चुका है। यहाँ पे डार्क काफ़ी पसंद करते हैं खेलना एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस का आजकल हम देखते हैं फाइटर का जो मेटा है उसको उसमें दबदबा जरूर रहता है, तो वहाँ से क्या पे खाता है वो भी देखना रहेगा। और बैन इनके पास अभी मौका है और ये टारगेट वही करेंगे। लास्ट में चलिए यहाँ पे छोड़ा जरूर गया, लेकिन आज थोड़ा सा ना प्लेयर में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड जब हम बात करते रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, तो ये भी थोड़ा मज़ेदार तो जरूर रहेगा। ये ऐसे फैन फेवरेट प्लेयर्स हैं, पसंद करते हैं लोग इनको देखना। तो आए हैं अन्ना का स्वागत करेंगे यार। IPL से ड्यूल चेंज हमने देखा अभी, तो उनके लिए क्या पिक रहेगा, वो क्या खेलना पसंद करेंगे जरूर देखेंगे। और यूरेनस को बैन करते हुए दिखे हैं, तो एंटी पता है उनको देखा हुआ यूरेनस को किस तरीके से परेशानी क्रिएट की थी, तो भी खेलना पसंद करता है। तो पिक क्या करता है ये देखेंगे और क्या देखेंगे। IPL से ड्यूल करना था आज उनके फैन जो है हमारे साथ जरूर देखेंगे। काफ़ी पॉपुलर है, फैन फेवरेट प्लेयर है। आप देखते हैं अगर स्ट्रीम वगैरह देखा है तो आप भी महसूस किए होंगे, लोग पसंद करते हैं इनको देखना। बिल्कुल एक देखिए इनका जो गेम प्ले है ना उस तरह से यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रिस्पेक्ट बैन आता हुआ दिख रहा था हमको। और इसके साथ शेलिया जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बैन रहेगा, कि जो इफेक्ट्स हैं वो भी ज़्यादातर शेलिया यहाँ पे खेलते हुए हमें दिखते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप जाते एक की लेन पे तो बात ज़रा कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे एक की लेन पे हमें आते हुए देखेंगे ड्रैगन। और इस ड्रैगन के साथ ना जब आपकी टीम में ड्रैगन आ जाता है तो एक तरीके से कहे जो टर्टल का आपके पास जो है 60% चांसेस रह जाता है कि आपकी टीम के पास जो है टर्टल जाएंगे, क्योंकि उनकी जो अल्टीमेट फॉर्म रहती है उसमें वो क्या है बहुत इजीली यहाँ पे देखिए अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए अपने टीममेट्स को जो है अच्छा खासा यहाँ पे जोनिंग करवाते हैं, अपने एनिमीज को जो है यहाँ पे जोन आउट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो पिक रहता है इस साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी मेज का आगमन आना रहता है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मेज के तौर पे यामा के तौर से यहाँ पे क्या आएगा, क्या हमें ईव देखने को मिलेगी या फिर हमें जो है यहाँ पार्सा देखने को मिल सकती है। चलिए ईव जो है वो तो पहले से ही जा चुकी है, वो बैन की दूसरी का हमें टीम यामा ने जो है दूसरे पे ही बैन कर दिया और वो एंजेला की तरफ जाना पसंद कर रहा है। एक चीज़ हो रहा है कि देख रहे हैं यार एंजेला जो है काफ़ी खेलना पसंद कर रहे हैं, कभी आप रूम की तरफ लेके जा रहे हैं, कभी मिड में भी पसंद कर रहे हैं। ऐसा हीरो जो लोग पसंद ज़्यादा कर रहे हैं और वहाँ पे साथ ही साथ दोनों साथ चुकी है तो वो भी मज़ेदार जरूर रहेगा। और अब वापस इस तरफ जाते हैं शेड्यूल की तरफ, तो हमने रेडियम देखा था और आज भी देख रहे हैं कि ये लोग पसंद करें सस्टेन की तरफ ही जाना, गोल्डन की तरफ जब बात करते हैं तो। और चलिए एंटी के पास आ चुका है यानी कि वो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा डोमिनेट करने में उनका काम बिल्कुल बेहतरीन रहने वाला। लीड गेम कभी परेशानी क्रिएट करता है और शुरुआत और अर्ली गेम के लिए मिड में जो है प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनके पास यहाँ पे यूलॉन्ग है। स्ट्रेटेजी हमने पहले भी देखी हुई है, रेडियम जब यूलॉन्ग खेल रहे थे और एंटी के पास तभी भी यहाँ पे हमें देखा था कि खामोश था, तो एक्चुअल में कॉल ये होना चाहिए था कि शुरुआत में जो है रेडियम डोमिनेट कर सकते, पर ये टीम ऐसी है कि इनको पता है कि कब कहाँ पे किस पर है। रेडियम जो है होल्ड करके रख रहे थे वहाँ पे नतान के सामने खेल रहे थे तब, और एक तरफ से यहाँ पे एंटी जो है स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करना स्टार्ट करती थी खामोश के साथ और ये हम की तरफ लेके गए थे। उसी तरह का कॉम्बिनेशन को बैठाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इस बार जो है अन्ना है तो वो किस तरीके से खेलते हैं। रेडियम थोड़ा डिफेंसिव से शुरुआत में जैसे टीम फाइट की तरफ गेम आगे गया तब फिर वो आए फाइट में और वो एक कमाल का काम कर रहे थे कि जितना हो सके नतान को दूर ही रख रहे थे। वो एंट्रोपी जो होता है नतान का गलती में उसको यूज़ करवा दे रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे उनको ताकि वो जो है टीम फाइट में अपना उतना योगदान ना दे सके। तो एक कमाल का आउटप्ले था उनकी तरफ से, उसको पता है कि स्किल से वो यूज़ करवा दीजिए, यूटिलिटीज को यूज़ करवा दीजिए, फिर आपके पास एक अपर एडवांटेज रहता है। और मैं देखना पसंद करूंगा कि क्या यामा जो है यहाँ पे किस तरीके से खेल पाए। और टोबी का डेथ सोनाटा अगर आ जाता है यहाँ पे प्लस टीवी का कुछ प्लस देखने को मिल जाए यार मज़ा आ जाएगा। और चांस तो यार बिल्कुल देखेंगे कि किस तरीके से जो उभरता हुआ हीरो कभी ये भी खेला करते थे, ये हुआ करता था उनके लिए, ये भी रह चुके उस टीम का हिस्सा। आज उनकी अगेंस्ट में खेल रहे हैं उनके ही साथ मित्र, मज़ा ये भी ज़रूर आएगा कि ये भी एक मीठी राइवल भी जिनको कहते हैं ये भी ज़रूर रहती है कि जब आप दूसरे के सामने खेल रहे होते हैं ये भी मज़ा अलग होता है। वैसे ये भी है ये रियल लाइफ फ्रेंड, ये है इन गेम राइवल। और अभी हम बढ़ने वाले हैं यामा स्पोर्ट्स और IQS ड्यूअल के आज के ये पहले मुकाबले का गेम नंबर 1 की तरफ और देखेंगे गेम नंबर 1 मैच नंबर 1 कौन लेके जाता है वो पहला पॉइंट। 10-3 का ये मुकाबला यामा लड़ रहे हैं अपने प्राइड के लिए, IQS ड्यूअल वो भी लड़ रहे हैं एक अच्छी सेशन भी हो जाए और वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं उनके बाद तो स्लॉट तो है ही, वो भी लड़ेंगे यार अपने सब
के लिए, अपने फैंस के लिए कि वो जितना हो सके और जीत जो है बढ़ाती जाए और अपने अंक जो है और आगे लिया जाए। और चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ चुके हैं लैंड ऑफ डॉन में। युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। दोनों टीम जा चुकी है खेती-बाड़ी के लिए, यानी कि फार्मिंग हो चुकी है स्टार्ट। रोटेशन आना स्टार्ट होगा। मिड की तरफ हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे गोगो के लगना स्टार्ट कर चुके हैं, हमें परेशान करना स्टार्ट कर चुके हैं। हल्का सा डैमेज दीजिए, पीछे आइए, एक कमाल की स्ट्रेटेजी, क्या कहेंगे दोस्त? जी बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए गेम का पड़ाव यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखेगा हमको। और इसके साथ बात की जाए यहाँ पे तो टीम जो है यहाँ पर यामा हमने देखा उनका अर्ली गेम स्ट्रॉन्ग रहता है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इस प्रकार यहाँ पे किस तरह की पकड़ बनाएंगे। एपेक्स यहाँ पे जाते हुए और इसके साथ सीधा डैमेज देंगे, यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज देते हुए देखेंगे। एंजेला बहुत ही कम एचपी निकले, लेकिन फर्स्ट ब्लड लेके यहाँ पे असूना का, और असूना यहाँ पे धाराशायी होंगे, अकेले बचते हुए रहेंगे। यहाँ पे पीछे से डैमेज आएगा, जरूर फ्लिकर का इस्तेमाल करके मार किया जाएगा और वेले को यहाँ पे सीधा खत्म किया जाएगा एंटी के द्वारा। एंटी पीछे पड़ते हुए जाएंगे और इस समय पे देखिए जिस तरह से रोटेशन आता है वहाँ पे ईएक्सपी का, तुरंत आ गए वहाँ पे अपनी जो है टीममेट की हेल्प करने के लिए। बात की जाए गोल्डलेन की तरफ, तो यहाँ पे गोल्डलेन की तरफ थोड़ी पोकिंग जरूर चलती हुई दिख रही है हमको और क्रेंजर की तरफ से। और देखिए क्रेंजर को मारना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अर्ली गेम पे, अगर इनको शट डाउन नहीं दिया गया तो लेट गेम में जो है दिक्कत बनते हुए दिखते हैं। और उसी के साथ मिडिल लेन की एक बार फिर से यहाँ पे पोकिंग दोबारा से स्टार्ट होगी और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए समझ के खेलना पड़ेगा टीम को, क्योंकि अगर समझ के नहीं खेलने दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे होंगी और बहुत ही कम एचपी पे बचते हुए निकली है। चलिए उसी के साथ प्लस्टिक यहाँ पे लैंसलॉट को खत्म करेंगे और टर्टल का आगमन हो चुका है। और इस समय जंगलर का जाना एक खड़ी भूल यहाँ पे साबित होती हुई दिखती है आपको, थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा। 4-3 बंदे यहाँ पे चढ़ेंगे, एक बंदे के ऊपर यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास किया गया है और उसी के साथ अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से एंजेला वहाँ पे चढ़ेगी। अपने बचाने के लिए शील्ड का उपयोग किया गया है, हीलिंग के द्वारा जरूर बाल बचते हुए निकलेंगे। चलिए टर्टल से पीछे खदेड़ा गया वहाँ पे, परंतु अभी चावा देख नहीं पाया। ऐसे मैं यहाँ पे टर्टल किस टीम ने लिया यहाँ पे गोल्ड का इजाफा हम देखें तो यहाँ पे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और वहाँ पे जो ये जो प्लेयर है ना वो कमाल का था। और अभी देखिए किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने होल्ड किया और पीछे हटने के लिए मजबूर किया। आइटमाइजेशन की तरफ चलें तो मैजिकल डिफेंस बूट प्रायोरिटी रखते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सामने की तरफ देखिए किमी जो है थोड़ा सा डैमेज आता है हल्का हल्का स्टार्टिंग में उनको, वो एक रेडिएंट आर्मर आ जाएगा तो थोड़ा सी राहत आपको मिलेगी। उसको रोकने के लिए यहाँ पे जरूरी है उनका भी ये चीज़। और टोस की बात करते हैं तो अब देखिए 2-2 का जो अभी हो चुका है दोनों तरफ से, एक हल्का सा फायदा हुआ टर्टल के मौजूदगी से, थोड़ा सा देखने को मिला वहाँ पे। और जिस तरह से बात किया कि वहाँ पे जा जरूर चुके थे, अभी उनके पास वो मौका जो है वो रहने वाला है। जिस तरीके से शुरुआत किया है ना वो कमाल का है। हम चाहेंगे कि जो यामा ई स्पोर्ट्स है और उनके अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी दमखम है आज दिखा दें, क्योंकि देखिए आपके पास होने के लिए अभी कुछ नहीं है और पाने के लिए काफी कुछ है। एक ऐसी टीम तो मैथिक शोडाउन सीजन 2 में डोमिनेट करती हुई आ रही है, ऐसी टीम को आप हराने में कामयाब हो जाए, ऐसी टीम के अगेंस्ट में आप पॉइंट्स लेते हैं तो आपका नाम दोस्त जरूर याद रखा जाएगा कि ऐसी टीम है जिसने हराया था टीम को। ये तो चैंपियन है टीम, तो जो अब तक जीती आ रही है टीम, उसको हराना है आपको और आपका जो प्राइड है वो लेके जाना है। क्या आप कर पाएंगे? वो सवाल काफ़ी है, उसका जवाब देने के लिए ये मैच तो दिखना जरूर रहेगा और अभी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एस12 ये ऐसी टीम है जो किसी चट्टानों को गिराना जानती है। एक और जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी अक्सर रखते हैं, मैं देखा स्काई पियर को फटाफट डाउन करने के लिए उस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हुए यहाँ पे खूबसूरती के साथ डबल जोड़ दीजिए निकालने में कामयाब हो चुके हैं। तो यहाँ पे उसके पास बैकअप जरूर था, वहाँ पे बैकअप लगेगा ज़्यादातर क्या कर पाएंगे क्लियर कर लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जा चुके हैं टैकल के लिए now. I'm gonna make you bleed out. Listen or repeat now and read out all the weak now. I can make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, ho. उनको गिराने में कामयाब हो जाएंगे, करने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि क्लब टीवी है वहाँ पे मौजूद है। बहुत खूबसूरती के साथ अपना प्ले जो है वो रखते हुए यहाँ पे लेवल ये खूबसूरती के साथ डालते हैं।
देख सकते हैं सामने हाई पर के लिए 7 के ऊपर जरूर है, लेकिन मिड पे पिक्चर हो सकती है 6 और 5 देखने को मिल रहा जरूर है। गोल डिफरेंस आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जो है फर्क क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गेट यहाँ पर की तरफ मिलता हुआ है 4000 का फर्क ले चुके हैं। 11 के साथ आप जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। आजकल ये भी बोल रहे हैं कि हम भी बोल लेते हैं काफ़ी जरूर कर रहे हैं, पर क्या वो खेल निकाल पाएंगे? प्लस सीधी को दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ पे तो एंजेला का तो क्या वो बचेंगे नहीं के साथ वो दिक्कत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डबल को लेंगे, एपेक्स को डाउन जरूर किया है, लेकिन डाउन करने को डाउन करने बिल्कुल यहाँ पे ग्रॉक की तरफ से टेक्टोनिक चार्ट लेकर कर इस्तेमाल करते हुए आए थे और बॉल जिस तरह लगा रहे हैं ना एपिक्स यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा फायदा दे रहा है उनकी टीम को। और एक के बाद एक यहाँ पे देखिए जितनी भी इन्होंने बॉल्स लगाई हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाई है। इसी समय यहाँ पे वापसी करेंगे, टटल यहाँ पे आ चुका है और टटल देने का प्रयास जरूर करना चाहिए। डार्क सामने फ्रंटेन की तरफ खेलते हुए जाएंगे, अल्टीमेट का इस्तेमाल होगा इंजला राउंड के साथ यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास, परंतु पीछे से यहाँ पे जय लेके जाएंगे टटल और उसके साथ आएंगे यहाँ पे अपनी फ्लैग अल्टीमेट फॉर्म में और उसके साथ अंदर जाते हुए पकड़ेंगे यहाँ पे बादशाह को डैमेज यहाँ पे डैमेज, लेकिन डार्क यहाँ पे अन्ना को खत्म करते हुए सीधा वेटिंग की तरफ उसके साथ एलिस यहाँ पे सस्टेन करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन पीछे से अर्जुना का डैमेज यहाँ पे लगेगा उनको बहुत ही ज्यादा तरीके से और उसके साथ मॉन्स्टर स्केल अपने नाम करते हुए जाएगी। ये टीम जो है ये बहुत घातक टीम है, ये डरती नहीं है लड़ने से, ये सामने जो है चढ़ के खेलते हैं। चलिए टावर के अंदर आप टावर हल करेंगे तब भी जो है यहाँ पे आके मारने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन पीछे से ग्रेंजर के ऊपर हमला जरूर होगा। टैमूस अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे अंदर की तरफ मार करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो डैमेज है वो थोड़ा कम पड़ेगा और इसके साथ रोका जाए। टैमूस को भागने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन पीछे से ग्रेंजर किलिंग देते हुए उनको समाप्त करेंगे। उसी के साथ असूना की बात करें तो इंजला को यहाँ पे उन्होंने जो है मृत्यु दंड दे दिया और उसके साथ जो पारी है यहाँ पे इंस्टेंट रिप्ले में देखेंगे जरूर कि किस तरह से आए ओवर के अंदर घुसे हुए थे, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए इंजला बचने का प्रयास जरूर किया। के अंदर पूरा घुसे हुए 2 बंदे घुसे थे, पीछे से यहाँ से ग्रेंजर आते हुए मार करेंगे सीधा, जिस तरह से यहाँ पे टैमूस को मार किया पीछे हटते हुए। इसी साइड पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे देखिए जिस तरह से लड़ रहे थे यहाँ पे रॉक यहाँ पे बचते हुए निकले जिस तरीके और पीछे से आगे डैमेज दे रहे थे यहाँ पे बेहतरीन डैमेज देते हुए इसका इस्तेमाल करते हुए इंजला को मार दिया और गॉड लाइक जो है अपने नाम करते हुए गए। और इसमें गॉड जो दीजिए हो हम यहाँ भूल चुके हैं इंजला को डाउन करने में, की तरफ से वो टावर ले चुके हैं, यानी कि देखने के लिए बड़ा खर्च चुके हैं, लेकिन बीच में तो भी एक समाज की चीज ये की को पता है बैटल फाइट में वो एंगेज नहीं कर सकते। ऊपरी तरफ उन्होंने एक टावर ले लिया तो वो एक ही टावर है जो अभी के लिए जामा के पास है, फाइट में जा सकता है, यहाँ पे दूर है वो मौका है आपके पास सपोर्ट करने की। समाज का बोल जाओ उसकी तरफ से भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है और ये खूबसूरती के साथ वो ध्यान रखते हुए यहाँ पर अभी के लिए टीम की मुसीबत में है, खूबसूरती के साथ वो जरूर खेल रहे हैं, 3 किल निकालने में कामयाब जरूर हुए हैं। ग्रेंजर में वो भी अपना जो दबदबा है एक्सपीरियंस है खूबसूरती के साथ यहाँ पे झलकाते हुए वो लेकिन देखें तो भी माल का वो जो फर्क है वो लेके जरूर चल रहा है, पर उनकी टीम से वो जो सपोर्ट उसको चाहिए वो आ नहीं पा रहा है, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं तो साथ ही साथ हाथ बढ़ाना पड़ेगा तब जाके कुछ हो पाएगा। आज चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आसानी के साथ टीम आई क्यू एस और लॉर्ड भी सिक्योर कर लिया और ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह से हो सकती है वहाँ पे, लेकिन क्या डार्क इस बार जो डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। एंटी दूसरी तरफ कोशिश जरूर कर रहे हैं इस बार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है यहाँ पे उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है राइट वर्सेस ड्यूएल और उनकी निगाह उनकी नजर जा चुकी है और एंजेला जो है पीछे वो जरूर जाएंगे, लेकिन टेक्टोनिक चार्ज का इस्तेमाल करके वो पीछे हटेंगे। जो है ये सुना एक तरह से वो भी पीछे जा चुके हैं, डॉट आ रहा है, इनको पता है
स्टार्ट करता है कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो मौका आया है वेव को डाउन करने के बाद तो कितना वो फायदा उठा पाना है ये देखना जरूर रहेगा। कोशिश अप्रोच उनकी तरफ से पूरा है, क्या वो कर पाएंगे? अभी के लिए लॉर्ड थोड़ा सा आगे जाता हुआ उनको पिता के पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि IQS शेड्यूल एक ऐसी टीम है जो जानती है कि लॉर्ड के साथ 2 प्लेयर डाउन करने में कामयाब होगी, जिसका तक हो जाएंगे दोस्तों। जी बिल्कुल, और उसके साथ ही लॉर्ड यहाँ पे इस तरीके से रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है कि यहाँ पे कम से कम जो है टरेट के ऊपर डैमेज हो और सीधा जो है कम से कम टरेट जाए, लेकिन पीछे से ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आएंगे यहाँ पे जो है और शट डाउन देते हुए जाएंगे टोबी को, और इसके साथ यहाँ पे एंटी यहाँ पे अभी टीजी को यहाँ पे शट डाउन मिलेगा। बादशाह किसी तरह सर्वाइव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन टावर के अंदर सीधा खत्म करेंगे और अन्ना बड़े ही खूबसूरती के साथ चलते हुए आए। यहाँ पे गेम हमें देखने को मिलता है ना, का देखिए वॉल जितने बार वो लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं, इतना सटीक तरीके से वो वॉल लगाते हैं कि सामने वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है। डार्क यहाँ पे अकेले बचे रहेंगे, डिफेंड करने का प्रयास करने का कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन होली शील्ड नहीं रहेगी मिड के टावर पे, और अगर टावर इन्वेटेड टावर टूटा तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी हमारी स्पोर्ट्स के लिए वापसी करने के लिए। 8-18 का स्कोर यहाँ पे होता हुआ चलेगा, और अभी जो है IQS यहाँ पे जो है डोमिनेट करते हुए दिख रही है इस गेम को। तो ये यार टीम ऐसी है कि वो डोमिनेट करना जानती है, और देखिए अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने वो खेला रचा है, उसका जो फायदा हुआ लॉर्ड के साथ आगे आए हैं, और खूबसूरती के साथ चलिए पता है कि पहला है तो डिफेंड हो सकता है, तो आगे जाते गए लॉर्ड के साथ उनको पता है कि टावर निकालने की प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो कोशिश कर रहे थे, वो अंदर की तरफ गए, वहाँ पे वॉल का इस्तेमाल था ताकि रोक सके, जिन्होंने टोनी को खूबसूरती के साथ डाउन किया, फिर एंड किया है, सीजी को डाउन करने में कामयाब हुए। साथ ही पता है कि वो वेव जो है वो जा चुकी है, वो सीधा पुश करने के लिए आगे गए, टावर के बीच में डाइव इन किया, इन्वेटेड टावर, वो जो टावर रहता है उसके बीच में ये जरूर गए थे पर इंतजार किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जिमी के लिए इरेडियम जो है वो बिल्ड करते हुए दिखेंगे। चलिए बाक्सिया की तरफ वो आ चुका है, रेंटी ही स्टार्टिंग से ही डाल दिया है, फिर हम देख सकते हैं कि 3 प्लेयर जो है ऑलरेडी डाल चुका है। अब बात करें वहाँ पे एलिस के पास आ चुका है, लापू के पास आ चुका है, ग्रीनजर जो है वो भी डाल चुका है, सामने की तरफ भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है, तो हमने एंटी हिल जरूर देखे। अभी के लिए लॉर्ड की तरफ जा जरूर सकते हैं, और चलिए वापस ऑब्जेक्टिव में शायद इनको दिक्कतें आनी नहीं चाहिए, इस बार कंटेस्ट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड डांस जो है वो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे IQS ने उनको आगे जाना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ देखिए ये चट्टान जो है ना हर बार रेडी रहती है, एक तरफ है एंटी और एक तरफ है एफेक्ट, वो बॉल बन के बैठे हुए हैं, वो आगे आने नहीं देंगे, इनको पता है कि यहाँ से जो की तरफ से आगे जाएंगे, उनको रोक के रखा है पहले से ही। और अभी चलिए वापस फाइट का आगाज जरूर हो चुका है, दिक्कतें हो सकती है वहाँ पे, क्या एंटी तो मौजूद है क्लच करने के लिए, लेकिन जे हो सीजी को डाउन करने में कामयाब जरूर हो चुके, पीछे की तरफ वहाँ पे गए जरूर थे तो भी, लेकिन चलिए वो भी अभी गिरते हुए नजर आएंगे। 4 किलो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाले थे बिना डेथ के, और अभी उनको भी डेथ का सामना करना पड़ चुका है। ये जो लॉर्ड है वो आगे जाता हुआ इन्वेटेड टावर वो एक्सपोज है, उसके ऊपर प्रहार होता हुआ, लेकिन खूबसूरती के साथ जो है वो वेव को क्लियर करते हुए वेव को क्लियर करने में कामयाब हो पाएंगे। अगर दूसरी तरफ दिक्कतें ज्यादा आ सकती है, ब्लैक ड्रैगन फॉर्म के साथ वो आते जरूर हुए, पता है वहाँ पे अन्ना को टारगेट उनका होना चाहिए टोबी, और टोबी को डाउन करने में वो कामयाब हुए हैं, और किस कीमत पे कुछ लिए हुए तो सही की तरफ धकेला जरूर है। उनको पता है कि ये जो प्लेयर जब तक खड़ा है वो मिनियन वेव को जो है रैप्सोडी की मदद से क्लियर करता रहेगा, तो वो दिक्कतें जरूर दिलाएगा। यानी तो डेथ अब हो चुकी है टोबी की, तो दिक्कतें वो समझ के आए, बात ही हुई। बिल्कुल जिस तरह से देखिए यहाँ पे लॉर्ड आएगा मिड लेन की तरफ, और यहाँ पे देखिए प्रहार जरूर किया था, तीसरे जाने का प्रयास करते हुए डैमेज लगातार मिल रहा था, एलिस यहाँ पे सस्टेन करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सुना वहाँ पे डैमेज दे रहे थे लगातार, उसी के साथ बहुत ही कामयाब चीज पे थैमोस निकले थे, लेकिन जय यहाँ से देखिए डैश करते हुए आए और पूरी डैश स्किल लगाई उन्होंने। अगर एक मिनियन और होता तो वहाँ पे शायद बच के निकल सकते थे, परंतु डैश सारा कंप्लीट होने के बाद उनको जो है स्टूडेंट मिला। पीछे से यहाँ से देखिए अन्ना आया और सीधा मार किया था ग्रेंजर के ऊपर, उन्हें पता था कि वो मरेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मैं जा रहा हूँ तो आपको लेके जरूर जाऊंगा। चलिए हम भी जाएंगे और हम आपको भी लेके जाएंगे, बात तो बढ़िया थी, पर अभी के लिए तो ये मैच यार खूबसूरती के साथ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वर का फैक्टर के बारे में भी बात करते हैं, तो मुंबई है खेलना पसंद करते हैं IQS शेड्यूल, यामा के प्लेयर भी यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, तो एक टावर ही निकाल पाए, हालांकि किल में आधे किल बटोरने में वो भी कामयाब हो चुके। वापस फाइट का आगाज जरूर होता हुआ, वहाँ पे दिक्कतें घेरने के लिए वो पूरी कोशिश चलेगी,
लेकिन असुना ऑन लेजेंडरी ज़्यादा दिक्कत रहती हुई आगे की वापस कोशिश कर रहे हैं, बट क्या वो रोकने में कामयाब हो पाएंगे? तो भी है तो मुमकिन है कि वापस कोशिश करते हुए वो रैप टोनी को डेथ होना था, उनको पता है कि वेव क्लियर करते रहिए, डैमेज देते रहिए। सही समय पे वहाँ पे वाइल्ड जो है वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए जा चुकी है, यानी एंजेला सपोर्ट उनको आ चुका था, थोड़ा सा उनको जो हील है वो मिलता रहता, फील्ड जो है वो मिलती रहती उसकी मदद से वापस जो है वेव को कट करने में कामयाब हो चुके हैं। भाई क्यूएसएफ को क्या करना रहेगा? अगले लॉट के साथ जो है ना उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ताकि लॉट के साथ वेव जाए तो कुछ फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे एडमेंशन देखिए तो ऑलमोस्ट सबके कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, और इस एडमेंशन के साथ अगर देखा जाए तो स्काई पीएसएन यहाँ पे बनाया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जिन्होंने स्वाड यहाँ पे बनाया है, और जिन्होंने स्वाड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। सुना क्या कहना इसके बारे में ऐसे भाई? बिल्डअप हो चुका है क्योंकि वहाँ पे सस्टेन करने वाले तीन हीरोज हैं। बात करने की टीजी की, अगर टीजी की डार्क पिछले डार्क क्लियर ऐसा जरूर है, डार्क कैन टीजी पर अभी के लिए वापस फाइट का आगाज हो चुका है। अन अपने फ्लो में ब्लैक ड्रैगन बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ेंगे, सुना जो है वो डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं एंजेला को। इस बार पता है कि ये वेव जो है उसे हाथ में लेके आना है तो पूरी कोशिश करेंगे, और देखिए जल्दी से वो वहाँ पे रोक कर रहे थे, पता है कि थोड़ा सा रोक पाए तो पता चला कि नहीं रोक पाए, इंस्टेंटली वो रिमूव भी कर दिया ताकि टीम जो है आगे बढ़ पाए। और वही कोशिश कर रहे हैं, पता था वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, खूबसूरती के साथ जे हो बैकलैंड की तरफ आए तो भी वो गिरने के लिए, और चलिए जाते जाते वो डार्क को लेने में कामयाब जरूर हो चुके हैं, पर खुद को पता नहीं पाएंगे क्योंकि एमएसपी वहाँ पे मौजूद लोगों को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। थोड़ा सा फायदा हो डाउन के लिए फायदा हो सकता है क्या? यहाँ पे एंड करने के लिए जरूर जाएंगे, एक और डाउन आप जरूर कर सकते हैं असोना ऑन लेजेंडरी, और ये वापस कोशिश करते हुए तो भी उसको भी डाउन कर दिया जाएगा। वेव जो है निकलती आएगी, लेकिन ये लॉर्ड जो है वो निर्णायक जरूर होने वाला है, जाने में काफी समय लगने वाला है, 30 सेकंड। वो भी जो है वो काफी तेजी के साथ वहाँ पे वेव क्लियर कर रहे थे। साथ आप देखिए लॉर्ड मार्च कर चुके हैं, आगे जा चुके हैं, ये अंत है क्या? देखिए पहले पॉइंट के लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल एपेक्स आगे आएंगे, और पहला पॉइंट गेम नंबर 1 मैच नंबर 1 गेम IQSFQL लेके जाएंगे यहाँ फोर्स को हरा के अपने खाते में। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पारी यहाँ पे हमें देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने खेले। यहाँ पे देखिए लॉर्ड आ गया था, और लॉर्ड डिफेंड करने के चांसेस रहते हैं, लेकिन साइड के जो मिनियंस थे, जैसे कि आपने कहा था कि लेन सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और वो सिंक्रोनाइज होते हुए हमें दिखा। दोनों तरफ से देखिए लीन जो है वहाँ से आ रही थी, और इस प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे रहेंगे असुना, बहुत ही ज़्यादा लगातार डैमेज देते हुए जा रहे थे। डैमेज दिल देखिए इनका 86,000 यहाँ पे देखिए डैमेज दिया इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन बिल्ड के साथ यहाँ पे देखिए एरिया देखिए 13-1-9 का कीड़ी, सिर्फ एक बार बने हैं वो, आज तो यहाँ पे रहती है इस प्लेयर की। बिल्कुल खूबसूरती के साथ वो जो खेल रखा था ना वो कमाल का रहा, एंड एक समय के लिए यहाँ काफ़ी कोशिश अच्छी थी। चलिए तारीफ आपकी भी करना चाहेंगे, आपने जो कोशिश की वहाँ पे इब्राहिम क्यूएसएफ ले गया थी टीम जब तक अनडिफीटेड ही रही वो सीरीज के मामले में। हालांकि बीच में एक आध पॉइंट जो है वो जरूर रहा है, मैच के बीच में वैसे फ्री का मुकाबला होता है, एक आध मैच इधर गया है, पर जो सीरीज जो रहता है पूरा वो उन्होंने अब तक जीता हुआ है। जो राउंड रोबिन की बात करें तब स्टार्टिंग के मुकाबले में जो है वो एक ग्रुप स्टेज के खेलनी पड़ी थी, सेकंड टाइम से वो हार मिली थी, और उसके बाद जो है वो शायद भूल चुके हैं कि उनको एक हार जो है वो तो नहीं थी, और उसके साथ उसको गुजार के आ गया, और बीच में के लिए 7-3 कोशिश अच्छी भी थी, लेकिन तो भी कोशिश यार अप्रोच उनकी तरफ से भी पूरा था। 7-3 तो उनकी तरफ से केडी आया है, बाकी पेज भी के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, और इस तरफ 7-5-10 के साथ है, 5-4-11 के साथ वहाँ पे जे हो है 13-1-9 सोना। बिग मैन जो है वो तो लेके जरूर जाएंगे, अब तक यहाँ से इसकी ले चुका है। देखिए देखिए 20 के साथ हमारे साथ भी है, और टीम के लिए उन्होंने भी बटोरा है, मतलब उनका भी काफ़ी कमाल का रहा है, किल भी है और असिस्ट भी उन्होंने निकाला है। तो एक अच्छा चीज़ है। ऑब्जेक्टिव में आप देखें, ऑब्जेक्टिव जो है वो लेने ही नहीं दिया, तीन लिए तीनों के दिनों लिए टीम IQSFQL लॉट वो भी उन्हीं के पास गया हैड टू हैड। यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छी कोशिश की, अप्रोच अच्छा था, वो एकदम पूरा बराबरी की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे 8 है तो वहाँ पे 8.2 है,
पर वो जिस से आगे बढ़ा वहाँ पर चलिए यहाँ पे ये हो भी जाएगा। ये कमाल के प्लेयर है भाई, ये एफिशिएंट फील्डिंग का भी करता हुआ दिख रहा है और खेलना पसंद करते हैं हमेशा, वो देखा भी हुआ सीन पे जब खेलते हैं। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट लेके भी गए और फिर यहाँ पे चलिए ये तो भाई हीरो वाला है 12 पॉइंट का बहुत ही खूबसूरती के साथ वो खेला यार। और मिड में काफी चलिए अप्रोच अच्छा था कि थोड़ा सस्टेन कर पाए, थोड़ा सा हील वगैरह जो है वो वहाँ पे बैकअप प्रोवाइड कर पाए। और एपेक्स और के सामने अब इस टीम को तो कोशिश इसकी तरफ से भी बढ़िया रही और शानदार 2 का थोड़ी केडीली की जरूर गए और इसके साथ यहाँ पे देखा जाए तो हेड टू हेड पे यहाँ पे रहेंगे एक लेन पे डार्क वर्सेस एंटी। बेहतरीन पारी 11.1 उसके साथ 5.2 बेहतरीन पारी यहाँ पे खेली उन्होंने अच्छी तरीके से कैरी करते हुए देखिए यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। रिच काय अपने असूना यहाँ पे बनेंगे और साइड पे देखा जाए तो कैरी यहाँ पे एंटी बनते हुए दिख रहे हैं। और सैंड बैग की बात करें तो यहाँ पे क्लस्टीजी रहेंगे और सारा डैमेज उन्होंने लिया था। और विंगमैन की बात करें तो वो रहेंगे अपने एपेक्स तो चट्टान लगा के। देखेंगे आप गेम प्ले में बहुत अच्छी तरह इन्होंने जो है वॉल्स का प्रयोग किया, जिस तरह से ग्रॉक का संपूर्ण रूप से इस्तेमाल किया ना, तो पोटेंशियल है वो निचोड़ा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो डिजर्व भी करते हैं यहाँ पे विंगमैन का। यहाँ पे देखिए एक असिस्ट लेते हुए चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन पारी। बिल्कुल चलिए गेम Dead to me, so peace out. Remember you just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen, don't repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before you break. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? ये टीम ऐसी है कि शेड्यूल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर्वर की बात करते हैं और देखते भी कि प्लेयर्स जो है आजकल इतना डिफेंड नहीं देते उस चीज़ के ऊपर, खेलना जानते हैं, वो खेल करना जानता है। थोड़ा सा कैसे शायद हल्का सा फर्क आ जाए, वहाँ से शायद हल्का सा एक कमबैक दिखा दे। अगर ये मैच जीत जाता है तो फिर किसी तरफ जाएंगे, पर क्या वो जीत पाएंगे? सवाल भी वही रहता है। तो गेम में आगे बढ़ेंगे तो देखना ये रहेगा कि क्या वो परिवर्तन करते हैं, क्या वो चीज़ करते हैं, कौन सा जो है एक चीज़ की तरफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादा समय ले लेंगे सीधा पड़ेगा ड्राफ्ट की तरफ। और वही बैक में देखिए इस बार जब भी डाल दिया डाउन में कि थोड़ा देखा कि स्टार्टिंग से परेशान क्रिएट कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि जल्दी खत्म कर दें, तो कर नहीं पा रहे थे रीज़न से। It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless while others out there spitting shit got hits up on the charts. And I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society is swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, who wanna get it? Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Shit obnoxious, but I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll kick a bow. Send the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest but I'm proud. No, I've never had a doubt. आपको जो नहीं से उनकी पोजीशन रिवील कर देता है। हालांकि नर्फ आया है लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है नर्फ आने के बावजूद। और इसके साथ यहाँ पे बात की जाए तो चलिए ग्रॉक इस बार जो है यामा के पास जा रहा है और देखना पड़ेगा इस बार यामा किस तरीके से ग्रॉक का प्रयोग करेंगे। चलिए वो तो देखना जरूर जाएगा कि किस तरीके से वॉल का प्रयोग करता है। नॉन शॉटर की आपने बात कर ली, उनका वॉल देखने को मिलेगा। एंड इस तरफ से सीसी भी आ चुका है, सीसी किस तरीके से लग रहा है कहीं ना कहीं ये नई तरफ देखेंगे सीसी जो है वो तो टॉस खेलना पसंद करेंगे। पर देखते हैं अभी खेलने लगते हैं वो भी जा सकता है, अभी ट्राई करने पर अन्ना खेलते हैं तो मदद हो जाएगा देखने में किस तरीके से खेलता है। चलिए खाली वो इन्होंने ले लिया है, यानी ये सब टीम मिलता रहेगा और कुछ जो गेम है वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे, यानी एचपी वगैरह जो आती रहेगी वो फील के साथ यूज ऑन कार्ड। अब ये मज़ेदार रहने वाला है, इस बार चेंज करेंगे पीसी जो है एंटी जाएंगे और मतलब को ही रहा है क्योंकि लास्ट गेम में भी देखा कि यूज ऑन जो खेले थे तो इस बार थोड़ा सा चेंज करते हुए देखेंगे। अभी ये भी जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है, क्या वो उनकी तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी देखना ज़रूर रहेगा। जियो का पिक भी आना बाकी, इंतजार करवा रहे हैं, शायद सब्र कर रहे हैं थोड़ा, उसके बाद जो है देखेंगे कि किसकी तरफ ये लेके जाना है पिक। ओहो हैरिथ दोस्त
जी बिल्कुल, हैरित यहाँ पे रहेंगे और इसी के साथ जो है क्रोनो डैश हमें देखने को मिलेगी हैरित के साथ और किस प्रकार यहाँ पे रहेंगे। लेकिन थोड़ी-सी दिक्कत मेरे को यहाँ पे ना यामा स्पोर्ट्स के लिए लग रही है क्योंकि अर्ली गेम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो एपेक्स है वो परेशान करने वाले हैं जंगलर को और उनका खलीद हमने देखा भी जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो पसंद करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ना इरिटेट किया जाए, जंगल को फार्म ना करने दिया जाए और हमेशा जो है इस ऐसे हीरोज़ के साथ यही डर लगा रहता है आपको कि हर समय डर बना रहता है कि वो आपके जंगल एरिया पे ना आए क्योंकि आपके पास मोबिलिटी है, आपके पास हील है, आप डैमेज लेंगे वहाँ पे अपना सेकंड स्किल यूज़ करेंगे, उसके साथ ही यहाँ पे जो है हील कर जाएँगे। तो खलीद के साथ बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखना पड़ेगा इसके साथ किस तरह से यहाँ पे जो है डिफेंस करते हुए दिखेंगे हमें। उसी साइड यहाँ पे देखा जाए तो चौथा बैन एंजेला की तरफ आएगा और चाहे इस बैन मैं कहूँगा एंजेला बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए अनोइंग रहती है अपने कूलडाउन के बाद और यहाँ पे देखिए जब से उनके ऊपर यहाँ पे बफ आया है कूलडाउन का 10-12 सेकंड में ही जो है यहाँ पे अल्टीमेट उनका बार-बार पॉप ऑफ हो जाता है और हर बारी जो है अगर आप किसी को फिनिश करने जाए एंजेला का अल्ट लगते ही बचाने की संभावना पूरी तरीके से यहाँ पे रह जाती है और जब कोई 1 एचपी में बच के निकलता है तो उससे ज़्यादा दुःख किसी और बात का तो नहीं होता है क्योंकि आप सामने यहाँ पे दे रहे हो और पीछे से पापी पापी बूम करके आपके ऊपर कोई चढ़ जाए और सीधा आपको बचा के यहाँ पे ले जा ले दिक्कतें होती है वहाँ पे सामने एनिमी वाली टीम की तरफ से। यहाँ पे देखा जाए तो लैंसलॉट बैन आता हुआ दिखेगा यामा की तरफ से। चलिए जय हो, इस बार लैंसलॉट नहीं खेलते हुए दिखेंगे और एमन एक बैन बहुत ही बेहतरीन बैन मैं कहूँगा। अगर एमन खुला रखते तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी क्योंकि इनके पास कैमोफ्लेज रहता है तो इजीली जो है यहाँ पे कुछ हीरोज को डिलीट कर देते हैं सिर्फ एक कॉम्बो में। तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बैनिंग की बात करिए। चलिए यहाँ पे लापू लापू फिर से आएंगे, डार्क खेलना पसंद करते हैं यहाँ पे और देखना पड़ेगा इस बार किस प्रकार से खेलेंगे। पिछली बार कोशिश जरूर करी थी यहाँ पे लेकिन इतना कुछ फायदा हो नहीं पाया था। और उसी के साथ दूसरी साइड देखा जाए तो यहाँ पे कड़ीता का आगमन हुआ है। चलिए अब यहाँ पे एसएम भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कड़ीता के साथ और ये जो रहेंगे एपेक्स अपने और यहाँ पे ये जाने वाले हैं सीधा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस गेम में आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं बहुत ज्यादा गैंग होते हुए और उसके साथ साथ सरप्राइज गैंग होने वाला है। बेसिकली एम्बुश किया जाएगा यहाँ पे कड़ीता के द्वारा क्योंकि इनका जो अल्टीमेट है सीधा एक टारगेट को टारगेट करते हैं और सीधा एक अल्टीमेट के द्वारा गायब हो जाते हैं। और उसी के साथ चलिए जय यहाँ पे सीयू का आगमन होगा तो ये जो है बहुत ही एक कहूंगा यहाँ पे आई की तरफ से ये जो लाइनअप दिख रहा है मेरे को बहुत ही बेहतरीन लाइनअप दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि हम एचपी पे रहेंगे तो यहाँ पे जय वो रहेंगे फिनिश ऑफ करने के लिए। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो जंगलर यहाँ पे वायसेस रहेंगे तो उसकी साइड से यहाँ पे अभी एक मौका रहना चाहिए, मेज का आगमन होना चाहिए। देखते हैं मेज के तौर पे यहाँ पे क्या लेते हैं। क्या लगता है आपको एसएम भाई यहाँ पे कौन सा मेज जो है वो बाजी मार सकता है यामा स्पोर्ट्स की तरफ से? चलिए मार ली बाजी। जी बिल्कुल एफएस एरो का जो इस्तेमाल है ना वो अब देखने को मिलेगा। इसलिए अभी आपके हिसाब से बताएं कि क्या लगने वाला है कि वो स्टन वन जो है वो प्रॉपर कर पाएंगे या तो फिर वो जो वन शॉट डिलीट है यहाँ से आने वाला है क्योंकि स्टन नहीं लगेगा तो यार डिलीट तो पक्का होने वाले हैं। जी बिल्कुल देखिए गैम्बल का तरीका ये हो गया एक तरीके से मान लीजिए 50-50 अगर आपका लगा तो बल्ले बल्ले अगर नहीं लगा तो फिर आप हो जाएंगे नीचे थल्ले थल्ले। तो यहाँ पे ये बात रहेगी और देखना पड़ेगा किस प्रकार से यहाँ पे बल्ले बल्ले होने वाली है या थल्ले थल्ले होने वाली है। लेकिन पारी जो है ड्राफ्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। चलिए ड्राफ्ट हो चुका है यानी कि हम बात करते हैं कि वो जो माइंड गेम कहते हैं मनोभूमि का जो युद्ध कहते हैं वो खत्म हो चुका है। अब देखिए अब एंटी जो है वो सीसी की तरफ जाएंगे, अन्ना जो है यूजोंग की तरफ जा रहे हैं। जे हो इस बार चलिए उनको सुयू खेलने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि लैंसलॉट बैन था, वो आजकल खेलना पसंद कर रहे हैं। वो हमने देखा कि आमोन जो है वो भी बैन हो चुका था। नसुना जो है ये इनके कोर रहते हैं। हम बात करते हैं किमी एंड जो इनके साथ साथ हम खरीदा की बात कर रहे हैं, ये खेलना पसंद करते हैं। ये हीरो इनके पसंदीदा इनके सिग्नेचर हीरोज जो हम कहते हैं उसमें इनका ऐड आप कर सकते हैं। एपेक्स खलीद को खेलना पसंद तो बिल्कुल करते ही हैं, वो भी प्रभावित किया था ग्रेंजर के गेम प्ले के साथ। चलिए मैच नहीं जीत पाए वो एक अलग बात है। ग्रेंजर के साथ जिस तरीके से खेल रहे थे बहुत ही खूबसूरत आउटप्ले था उनका। इस बार देखना रहेगा कि किस तरीके से जमान फोर्स से वो फोर्स कर पाते हैं IQSL फ्यूल के प्लेयर्स के ऊपर।
विस्तृत कर दें यामा स्पोर्ट्स को, ताकि उनके लिए जो है यहाँ पे चांसेस लैंड जाने के वो थोड़े से बने रह सकें। और इसके साथ ये पारी बहुत ही शानदार रहने वाली है। डार्क हम देखेंगे यहाँ पे थैमूस के रूप में खेलते हुए अपनी एक लेन के तौर पे, और उसके साथ नीतन के ऊपर थोड़ी बाजी लगाई है यामा स्पोर्ट्स ने। तो देखना पड़ेगा कि नीतन कितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, या फिर नीतन को सीधा टारगेट किया जाएगा फारसा और एलिस के द्वारा। देखने वाली बात होगी यहाँ पे। तो पहला खेल इसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक पूछना चाहूंगा, बताइए जरा क्या लगता है आपको? पहला खेल एक बढ़िया सवाल तो है ज़रूर से, बट बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे चांसेस तो है दोनों टीम के पास, पर देखना पड़ेगा कि अर्ली गैंग पे जो रोटेशन है वो कौन से साइड पे जाता है, वो एक देखने वाली बात है। तो देखते हैं यार क्या होता है। मुझे लग रहा है कि निरंतर के ऊपर एक प्रेशर बन सकता है अर्ली गेम में, या फिर रेंजर के ऊपर। तो यार वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। आगे मैच जो है वो शुरू हो चुका है दोनों साइड से ही। ब्लू साइड पे टीम यामा स्पोर्ट और रेड साइड पे टीम नॉकूरा। तो देखते हैं यार क्या होता है। ब्लू बफ शुरू हो चुका है, दूसरे साइड पे बेडविन जो है वो अपना रेड बफ से शुरू कर चुके हैं। एक लेन पे हमें फाइट देखने को मिलेगा एलिस और थामूस के बीच। देखते हैं यार क्या होता है। शेरर मून जो है हाइपर के साथ नजर आएंगे इस मैच पे, टीम नॉकूरा। चलो यार EXP लेन पे पहला रोटेशन आता हुआ टीम यामा स्पोर्ट्स का। एलिस के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत बन रहा है धीरे धीरे। सिंड्रा, क्या EXP लेन पे पहला किल हमें देखने को मिलेगा या कुछ और? जी बिल्कुल लग तो रहा है वहाँ पे पूरी तरीके से दबाव जरूर बना रहे हैं। तो शायद मेरे को लगता है मिडिल लेन की तरफ हमें जो है यहाँ पे किल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वहीं से रहेगी। गोले पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से यहाँ पे जो है पारसा के ऊपर मार्क लगा जाए, सीधा उठा के पटकी दी जाएगी वहाँ पे और डैमेज देने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चा वहाँ पे रहेंगे जरूर। पीछे देखा जाएगा तो मिनिट्स करेंगे जरूर। लेवल 4 अभी हुए नहीं है, लेवल 4 होने का आगमन रहेगा कुछ देर में। जो है यहाँ पे टर्टल स्पॉन होने वाला है, उस टर्टल के साथ जो फाइट है वो जरूर इसलिए यहाँ पे वॉल लगाने का इस्तेमाल जरूर किया है। पीछे से आएंगे फेडरेन नॉकडाउन करना चाहते थे, परंतु मौका नहीं मिलेगा। उसके साथ लगाएंगे अलबत्ता डैमेज देते हुए स्टन करेंगे। मेज को पीछे हटना पड़ेगा। मेज को पीछे यहाँ पे व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए पारसा के ऊपर हमला जरूर किया जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसी के साथ ही रोटेशन आएगा, कुछ देर में यहाँ पे आगमन होगा तो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बुश पे छुपे हुए वहाँ पे भाग गया था डार्क ने, अंदर जाएंगे सीधा डैमेज देने का प्रयास। ये टर्टल करेंगे टार्ग बैटरिंग फिलहाल मून जो है पीछे हटते हुए और पूरी तरीके से उसको जो है एक्टिवेट करने का प्रयास किया गया है। डैमेज आता हुआ दिखेगा। टार्ग पूरी तरीके से चढ़ चुके हैं यहाँ पे, वो मौका नहीं देना चाहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट टर्टल लेंगे, उसके साइज का प्रयोग करने का प्रयास किया जाएगा। फर्स्ट ब्लड अपनी झोली में भरेंगे और पारी बहुत ही अच्छी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स का। ये जो स्टार्टिंग है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे नोकोरा स्पोर्ट्स का ये जिस तरीके से गेम खेलते हैं, ये जो रखते हैं ना, ये लेट गेम में इस बात करते हैं पलटने का। ये हमने पिछले बार भी देखा था इनके मैच पे, काश करते हुए देख रहे थे हम लोग जिस तरह से यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी दूसरी टीम, परंतु उन्होंने जो है यहाँ पे एंड मोमेंट पे लॉस हुआ, पूरी गेम को पलट दिया था। तो यहाँ पे ये स्थिति जरूर बन सकती है। उसी के साथ देखा जाए तो डैमेज देने का प्रयास किया जाएगा और ग्रेंजर यहाँ पे रहेंगे और अच्छा खासा देखिए मिड लेन की तरफ आ चुके हैं, ताकि जो है यहाँ पे इनकी जो स्टैक है वो अपने बढ़ा सके। गेम की पारी यहाँ पे बहुत शानदार होने वाली है। के साथ डैमेज देने का प्रयास करना चाहते हैं बॉम्ब में ऊपर जाएंगे प्लेट की तरफ और मौका नहीं दिया गया। वो जो है शील्ड जो है चुराना चाहते थे, लेकिन वो मौका नहीं दिया। उसके अंदर जाते हुए डैमेज देंगे जरूर और उसके साथ एलिस बचते हुए निकलेगी वहाँ पे। देखिए 4 लाइन है, किल सिक्योर किया है। गोल्ड लीड पे अभी जो है वो टीम यामा स्पोर्ट्स है। बाकी एलिस हकूरा और डार्क जो है उनके बीच फाइट जारी है। टॉप की तरफ जो है रोटेशन बनता हुआ टर्टल जो है नेक्स्ट टर्टल जो है वो आएगा टॉप लेन की तरफ। चलिए इधर गैंग बन सकता है और जुक्शन दोनों ही तैयार हैं मिड की तरफ आते हुए। दोनों ही टीम देखना पड़ेगा कि क्या होता है। हाइपर वर्सेस हाइपर बॉट लेन की तरफ फाइट शुरू हो चुका है। फारसा का योजी आ चुका है, खतरा हो सकता है इधर। अल्टीमेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए डाउन किया गया है टाइम पे क्लच टीवी को।
टोका योजिवा आएगा वापस से, आई थिंक डाउन हो सकते हैं इधर एलिस। जी हाँ, एलिस को डाउन किया गया है। जुक्शिन इस टाइम पे डाउन करेंगे एलिस को। बहुत ही लो एचपी के साथ बचने में कामयाब रहेंगे फारसा। 2-1 का स्कोर लाइन हो चुका है। टर्टल जो है वापस से आ चुका है। क्या लग रहा है ये वाला जो टर्टल है सिंद्रा, कौन टीम उठा के ले जाएगा? टीम यामा स्पोर्ट्स या फिर टीम नॉक्टूरा? क्या लग रहा है तुम्हें? ये बिल्कुल देखना पड़ेगा। इस प्रकार जिस तरह से पिछली बार डार्क ने यहाँ पे जोन आउट किया था, लेकिन वो मौका देखना पड़ेगा। उससे पहले ग्रेंजर के दोबारा, लेकिन फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए टावर के अंदर जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे ग्रॉक आएंगे बचाने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन पारी एयर स्ट्राइक का हमला, परंतु बचते हुए निकलेंगे। पीछे से आए हैं, डैमेज देंगे, और उसी के साथ डार्क को दिया जाएगा मिड टर्न से रारमून के द्वारा। और डैमेज देखिए जिस तरह से आ रहा है पीछे से। उसी के साथ रोकने का प्रयास जरूर किया गया। टेक्टोनिक चार्ज मारते हुए लूकास करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे किमी को दिया जाएगा मृत्यु का दंड प्रेस्टीज के द्वारा। और ये टर्टल की पारी यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, लेकिन फाइट अभी, क्योंकि यहाँ पे डैमेज का आदान प्रदान लगातार रहेगा। यहाँ पे देखिए दोबारा से वियोले एक और खेल उठाते हुए लेके जाएंगे, और उसी के साथ 3 पूरी धर दी जाएगी। 3 खेल अपनी झोली में भर चुके हैं इस समय, तो 5-3 का स्कोर होता हुआ, और 2 खेल से आगे यामा स्पोर्ट्स अभी जो मैच है थोड़ा डोमिनेट करती हुई चल रही है। चलिए इंस्टेंट रिप्ले की तरफ देखेंगे। ठीक है, जरूर आप यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने के प्रयास करेंगे हमको। यस, इंस्टेंट रिप्ले की तरफ जो टर्टल है, टर्टल के ऊपर फाइट तो चल रहा था, और टर्टल ले लुकस ने सिक्योर किया था टर्टल, और ग्रॉक का काफ़ी बढ़िया पोजीशनिंग देखने को मिल रहा था। चलिए लुकस सिक्योर करने के बाद पीछे जाने में समझदारी दिखाते और वापस से गैंग ज्वाइन करेंगे इस टाइम पे। चलिए ग्रैंजर को डाउन किया गया, जुक्शिन डाउन कर देगा ग्रैंजर को, और एलिस को भी डाउन किया गया था उस टाइम पे। तो चलिए बढ़िया मोमेंटम क्रिएट होता हुआ टीम यामा स्पोर्ट की तरफ से 7-3 का स्कोर लाइन चल रहा है। फारसा अल्टी लगा के डिफेंड करने की कोशिश करेंगे जरूर, बट चलिए डिफेंड करने में सक्षम भी रहेंगे इस टाइम पे। तो टावर के मामले में अभी टीम यामा स्पोर्ट्स आगे निकल चुकी है। 2 टावर निकाल चुके हैं, नॉक्टूरा को निकालना पड़ेगा टावर। चलिए नतन को डाउन किया गया है, ग्रॉक का बढ़िया अल्टीमेट था, डबल किल लगा चुके हैं ग्रॉक इस टाइम पे। टावर को निकाला जाएगा, बट चलिए एलिस डाउन कर लेंगे वापस से। क्या इधर डाउन कर पाएंगे जुक्शिन? आई थिंक जुक्शिन पीछे जाने में समझदारी दिखाएंगे इस टाइम पे। ग्रैंजर है उधर, चलिए अल्टीमेट था फारसा का उधर, बट चलिए बच जाएंगे अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए। 7-6 का स्कोर लाइन, गेम पलट सकता है, चांसेस हैं, टावर निकाल सकते हैं नॉक्टूरा। देखना पड़ेगा कि क्या होता है इस टाइम पे। चलिए मिड का टावर जो है वो निकाल चुके हैं। हाँ, टावर के मामले में 1 टावर निकाल चुके हैं टीम नॉक्टूरा, और 3 टावर निकाल चुके हैं टीम यामा स्पोर्ट्स। सिंद्रा क्या लग रहा है अभी गेम का मोमेंटम क्या होगा? टर्टल के ऊपर वापस से फाइट शुरू हो चुका है सिंद्रा। जी बिल्कुल, डार्क यहाँ पे देखिए अंदर जाते हुए सीधा मार करेंगे सेरार मून को। उसी के साथ यहाँ पे नेतन पीछे से आएंगे, डैमेज देंगे। उसी के साथ फारसा को दिया जाएगा मृत्यु का दंड, और नेतन को अगर अकेले छोड़ोगे आप तो वो तबाही जरूर मचाएगा। और क्या यहाँ पे खेली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो फाइट दिख रही है यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स, ये जो जज्बा दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको मौका इतनी आसानी से तो नहीं देंगे। यहाँ पे 10-6 का स्कोर हो चुका है, और मिड लेन से ये जो लेन है वो आती हुई दिखेगी। चलिए इंस्टेंट रिप्ले की तरफ जाएंगे तो देखेंगे एक बार किस तरह से ये जो फाइट है वो खुलती हुई हमें दिखेंगी। और देखिए टर्टल यहाँ पे आने वाला था, और उसी के साथ जाएंगे यहाँ पे डार्क देखिए सीधा लॉक इन करेंगे यहाँ पे, और उसी के साथ फेडरिन के ऊपर घुसे, उनको यहाँ पे मृत्यु दंड दिया गया। पीछे से नेतन आते हुए मेज को नीचे पीछे से निकाला, और उसी के साथ एलिस को भी डार्क यहाँ पे देखिए डबल के लिए अपनी झोली में भरते हुए लेके गए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोन आउट करते हुए हमें दिखे थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे टावर लगातार हमला किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रयास किया जा रहा है किसी तरह से जो है टावर लिए जाएं। और देखिए लेन भी काफी अच्छी तरह कंट्रोल करती हुई दिख रही है हमको जो टीम यामा स्पोर्ट्स है वो। और उसके साथ अल्टीमेट लगा देंगे, अल्टीमेट लगा के टावर के ऊपर हमला कर दिया गया है। नेतन डैमेज करेंगे, बहुत ही अच्छी बचते हुए निकलेंगे। एलिस लेकर उनको फ्री यहाँ से पीछे से देंगे, डबल किल अपनी झोली में भरते हुए ट्रिपल किल लेने का यहाँ पे जो है प्रयास किया जाएगा, और ट्रिपल किल लिया भी जाएगा। और मेन ये आगे चुके हैं 7 लेने का प्रयास, क्या उनको मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पे शट डाउन करेंगे, और उसके साथ डबल किल अपनी झोली में भरेंगे। क्या ही पारी हमें देखने को मिली। इंस्टेंट रिप्ले की तरफ जाना चाहेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे देखिए जिस तरह से रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन नेतन अल्टीमेट मार के सीधा आए थे और टावर खत्म किया गया। उसके साथ डैमेज देते हुए दिखे थे, एलिस से निकलने का प्रयास जरूर कर रही थी, लेकिन पीछे से देखिए डैमेज इस तरह से आ रहा था। यहाँ पे डबल किल अपनी झोली में भरी, उसी के साथ ट्रिपल किल ले गए वहाँ पे, टावर के अंदर जा चुके थे और कमिट कर
चुके थे कि मैनियक यहाँ पे लेना ही लेना है। वियोले का बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले, लेकिन काइल यहाँ पे फार्म हो रहे हैं और अगर ज़्यादा लेट किया तो यहाँ पे काइल मैच पलट सकते हैं। तो यहाँ पे इनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और जिस तरह से जो है अर्ली गेम पे ही खत्म करने का प्रयास करना पड़ेगा। जी हाँ, 14-8 का स्कोर लाइन। टीम यामा अभी बहुत आगे निकल चुके हैं और लॉर्ड जो है वो भी आ चुका है। देखना पड़ेगा लॉर्ड कैसे सिक्योर कर पाता है टीम यामा स्पोर्ट। फार्म डिफरेंस 4K, लगभग 4K गोल्ड का लीड। 9-9.5 मिनट का गेम हो चुका है ऑलरेडी। तो देखना पड़ेगा अगर इधर से लॉर्ड अगर यामा स्पोर्ट को मिल जाता है तो आई थिंक बढ़िया मोमेंटम फर्स्ट गेम के लिए अच्छा खासा जाएगा और वो लोग गेम आराम से जीत भी सकते हैं अगर ये लॉर्ड के साथ अच्छा खासा गैंग हुआ तो। बाकी देखना पड़ेगा दूसरे साइड पे टीम नॉकटूरा कैसे डिफेंड कर पाती है इस लॉर्ड को। मुश्किल होगा उनके लिए थोड़ा सा, बट देखते हैं यार, क्योंकि उन्होंने भी 1-2 बार गैंग आई थिंक जीता है ओवरऑल मैच पे। बट देखना पड़ेगा कि क्या होता है। नजर रहेगा जुक्शिन के ऊपर। बढ़िया मैनियक निकाल चुके हैं इस मैच पे। तो क्या लग रहा है वापस से एक मैनियक हमें देखने को मिलेगा क्या सिंद्रा इस मैच पे वापस से? देखिए यहाँ पे जो पारी यहाँ पे रहेगी वो यहाँ पे नेतन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर नेतन को रोका नहीं गया, उनकी पोजीशन दोबारा से अच्छी रही, उनको अकेला छोड़ा गया तो वो सीधा टावर जो मिड का ये टैरेट लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन मिनियंस पूरी तरीके से खाली कर दिए जाएंगे क्योंकि लेन क्लियरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है अभी यहाँ पे नोक्टोरा स्पोर्ट्स के पास भी। तो दिक्कत की बात यहाँ पे रहेगी, टॉप का टावर जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा कल्स्टीजी के द्वारा और उसी के साथ यहाँ पे मिनियंस जो है वो रोकने का प्रयास किया जाएगा। होली शील्ड यहाँ पे जाएगी और होली शील्ड के साथ जो यहाँ पे दूसरा लॉर्ड अगर जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। लॉर्ड अभी भी बॉटम लेन पे जिंदा है तो वहाँ पे उनको रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। वॉल लगाएंगे ग्रॉफ यहाँ पे लेकिन इसका जो टावर है वो धाराशायी होता हुआ दिखेगा। एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करना जरूर चाहेंगे फारसा, परंतु कोई उनकी रेंज में नहीं रहेगा और इसी के साथ मिनियंस के ऊपर प्रहार किया जाएगा। उसी के साथ डिसिप्लिन गेम प्ले दिखाते हुए यामा ओवर एक्सटेंड नहीं करेंगी, पीछे हटेंगी और फिर दोबारा यहाँ पे वेट किया जाएगा। जी जरूर से। बाकी यार देखो वापस से 50 सेकंड 1 मिनट के आसपास वापस से जो है वो लॉर्ड आने वाला है। ये लॉर्ड देखो टावर के मामले में तो यामा स्पोर्ट बहुत आगे है, बट नॉकटूरा के लिए थोड़ा दिक्कत होगा अगर ये लॉर्ड वापस से जो है टीम यामा स्पोर्ट निकाल लेती है, क्योंकि टावर उनके पास ज़्यादा है नहीं इस टाइम पे। अगर टावर डिफेंड नहीं कर पाए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा उनके लिए। बाकी देखते हैं यार, फार्म डिफरेंस की मैं बात करूँ तो 7K गोल्ड का लीड, 12 मिनट का गेम हो चुका है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है अभी 2-3 मिनट और जाएगा ना तो धीरे धीरे ये जो 5K 4K का गोल्ड गैप है ना ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। धीरे धीरे जितना टाइम जाएगा उसके बाद जो है ओवरऑल टीम गैंग मैटर करेगा। तो हाँ, नॉकटूरा के पास चांसेस हैं अभी भी मैच जीतने का, क्योंकि लॉर्ड देखना पड़ेगा। तुमने कहा कि थर्ड लॉर्ड जो है एनहांस लॉर्ड जो होता है वो उसके ऊपर ज़्यादा वेट करता है। तो देखते हैं यार क्या होता है। चलिए गैंग लग सकता है, चांसेस हैं। एलिफ बैकलाइन को मार्क करने की कोशिश था उधर, बट चलिए थामू पीछे से जाएंगे, पकड़ेंगे उधर ग्रैंजर को पकड़ने की कोशिश। पार्सा ने अल्टीमेट लगा दिया है, क्या पार्सा खत्म कर पाएंगे? नहीं, एलिस को डाउन किया गया है और बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो आ रहा है नतन की तरफ से भी। चलिए डबल किल लगा चुके हैं इस मैच पे वापस से जुक्शिन, डबल किल हो चुका है। अभी जो है आराम से जो है टीम यामा को जो है लॉर्ड मिल जाएगा। तो चलिए अंदर जाते हुए अल्टीमेट का इस्तेमाल, घटोत्कचा डाउन कर देंगे इधर ग्रैंजर को। तो घुस के मारा गया है ग्रैंजर को और दूसरे साइड पे लॉर्ड भी लिया जा रहा है। चलिए लॉर्ड जो है वो सिक्योर हो चुका है, फारसा को भी डाउन करेंगे। किलिंग स्प्री लगा चुके हैं इधर जुक्शिन, बढ़िया डोमिनेशन वाला आता हुआ भाई जुक्शिन की तरफ से इस मैच पे। तो मिड का टावर डिफेंड करना मुश्किल रहेगा इस टाइम पे। आई थिंक टावर जो है वो नतन आराम से निकाल लेंगे। और चलिए एलिस ने अपना अल्टीमेट खोल दिया है, क्या डिफेंड कर पाएंगे एलिस, क्योंकि नतन जो है वो बढ़िया डैमेज दे रहे हैं पीछे से। चलिए टावर अगर हिट होता है तो टीम यामा स्पोर्ट ये मैच जीत जाएगा यहीं पे। चलिए मिनियंस का प्रेशर भी है, चलिए वाप्ड आउट जो है वो कर दिया गया है और पहला गेम जो है BO3 का टीम यामा स्पोर्ट जीतते हुए। तो बढ़िया गेम प्ले आता हुआ
टीम यामा स्पोर्ट की तरफ से। सिंद्रा ओवरऑल क्या कहोगे इस मैच के बारे में, क्या सब परफॉर्मेंस लगा? मुझे तो यार जुक्शिन का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बढ़िया लगा इस मैच में। जी बिल्कुल, जूसिन जिस तरह से खेल रही थी आगे चलते हुए, यहाँ पे मौका जरूर रहेगा, लेकिन लैंसलॉट भी कम नहीं है अपने डैश के साथ, जो है इम्यूनिटी के साथ जो अपन सेकंड स्किल मारते हैं तो वहाँ पे जो है बफ चुराने के चांसेस, जो ऑब्जेक्टिव चुराने के चांसेस है वो जरूर बढ़ जाएंगे लैंसलॉट की तरफ। बराबरी का मौका यहाँ पे रहेगा और इसी के साथ पहला ब्लड किसकी तरफ आता हुआ दिखेगा वो जरूर मानने वाली बात होगी। चलिए ब्लू बफ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लैंसलॉट, और इसी के साथ देखा जाए तो रेड बफ से स्टार्ट करते हुए दिखेंगे हमको एडिट। जी, जो फाइट जो है मिड लेन के ऊपर शुरू हो चुका है। फर्स्ट ब्लड हो सकता था फरामिस का, एचपी बहुत ज्यादा लो है, किमी अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं और इस साइड पे क्लच टीवी अपना मॉन्स्टर लेते हुए, फिर मून भी रेडी है, लिथो ले रहे हैं उस साइड पे, 0-0 का स्कोर लाइन है। तो चलिए दोनों साइड के हाइपर रोटेशन डालते हुए ब्लू बफ सिक्योर कर चुके हैं। एडिट इधर अपना ब्लू बफ लेने आए हैं और लैंसलॉट जाएंगे अपना रेड बफ लेने। तो चलिए बढ़िया डैमेज हो सकता है, किमी के लिए खतरा हो सकता है, बट चलिए किमी सेकंड स्किल का इस्तेमाल करते हुए रीजनरेट करेंगे खुद को थोड़ा सा। चलिए टॉप लेन की तरफ नथन वर्सेस ग्राइंडर चल रहा है, बट मिड पे फाइट चल रहा है शुरू से ही, एकदम अर्ली गेम से मिड में फाइट जो है वो लगातार चालू है। तो देखते हैं यार EXP लेन पे होल्ड किया जा रहा है मिनियंस को थोड़ा बहुत। दोनों ही हाइपर EXP लेनर जो है वो मिनियंस को मारने में टाइम लगा रहे हैं। स्लो पुश चल रहा है इधर, चलिए खतरा हो सकता है, घुस के मारने की कोशिश था, पकड़ा जाएगा। फर्स्ट ब्लड इधर निकाला गया है, किमी को निकाला गया है 5 टाइम पे। तो चलिए खालिद जो है वो डाउन हो चुके हैं, पहला किल दे चुके हैं। टीम यामा स्पोर्ट 1 टीम नॉकटूरा 0। तो सिंद्रा क्या लग रहा है, टर्टल आने वाला है इस टाइम पे, तो टर्टल के ऊपर क्या राय रहेगा तुम्हारा? जी बिल्कुल, टर्टल यहाँ पे देखना पड़ेगा किस प्रकार से खेलेंगे, और टर्टल के ऊपर राय की बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है अगर रहे तो, लेकिन डार्क वहाँ पे मौजूदा रहेंगे और अच्छा खासा हमें पता है जिस प्रकार से वो खेलते हैं, वो जाएंगे सीधा अंदर डैमेज देने का प्रयास करते हुए, मार करना चाहते हैं, अच्छा खासा डैमेज आएगा जरूर, और अकेले यहाँ पे लड़ते हुए दिखेंगे। वेल पीछे से यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए आने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन किमी के द्वारा डार्क को दिया जाएगा मृत्यु टेंट, जिसे अबिस्टीजी यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जाएगा, और उसी के साथ कलशील लेकर जाएंगे टीम के लिए। क्या ये पारी यहाँ पे चलती हुई दिखेगी, फाइट अभी भी खत्म नहीं, प्रयास और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किल जो है अपने नाम करेंगे लैंसलॉट। सरार मून यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, चलिए टर्टल तो आपने ले लिया परंतु एक किल जो है अपने नाम जरूर करेंगे। अनुसी की बात करें तो यहाँ पे 3-3 का स्कोर हो चुका है पीछे, और डार्क यहाँ पे खत्म करेंगे। चलिए इंस्टेंट रिप्ले की तरफ देखेंगे। यस, इंस्टेंट रिप्ले की तरफ हम लोग आ चुके हैं। टर्टल जो है बढ़िया फाइट हमें देखने को मिलेगा। डाउन कर दिया गया था पहले फोबियस को और बैकलाइन को मार्क करने की कोशिश यूजोंग की तरफ से, बट टर्टल इधर एडिथ ने सिक्योर किया था। चलिए 2-1 का स्कोर लाइन था उस टाइम पे, और इसी के साथ साथ अल्टी आता हुआ ईव का, बड़े अल्टीमेट था ईव का। फरामिस बचाने की कोशिश किए थे उधर, तो बचाने में सक्षम भी रहते उधर। तो ओवरऑल बढ़िया फाइट हमें देखने को मिला इस मैच में, ये वाले टर्टल फाइट में। चलो वापस से गेम टॉप लेन की तरफ, शायद से टॉप लेन पे वापस से गैंग हमें देखने को मिलेगा। फाइट शुरू होते होते हुआ नहीं, बस 3-3 का स्कोर लाइन लगभग सिमिलर फार्म पे है। तो देखते हैं यार क्या होता है, मिड के ऊपर फाइट वापस शुरू हो सकता है किसी भी वक्त। सिंद्रा जी बिल्कुल, घात लगा के बैठे हैं अभी, मौका उनका रहेगा कि किस तरह से यहाँ पे पकड़ा जाए, और वो मौके की तलाश में अभी कोई भी टीम जो है गलती नहीं करना चाहती है, तो इसलिए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, पीछे रह के खेलना पड़ेगा, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ यहाँ पे सुनामी स्लैम का इस्तेमाल जरूर किया गया था, डैमेज देते हुए एबिस्टीजी यहाँ पे खत्म करेंगे किमी को, और लैंसलॉट यहाँ पे डैश लगाते हुए रोकने का, लेकिन बहुत ही कम एचपी है, बचते हुए निकलेंगे। ग्रैंजर पीछे से रहेंगे, यहाँ पे डैश सुनाता है, मारने का प्रयास किया जा सकता है डैमेज देते हुए, लेकिन उसी के साथ लेके आएंगे, और सही पुल यहाँ पे किया था फ्रामिस ने, परंतु किल की समाप्ति यहाँ पे नहीं होगी, प्राप्ति यहाँ पे नहीं होगी। काइल यहाँ पे डिफेंड करने के लिए इजी रहेंगे, तो पारी यहाँ पे दिखने वाली होगी। देखिए डार्क का पोजीशन देखिए वहाँ पे, और इस तरह से वहाँ पे देखिए अपना जो बफ है वो जो है टर्टल जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए यूजोंग आएंगे जरूर, लेकिन क्लच टीजी यहाँ पे क्लच करते हुए लेके जाएंगे टर्टल, और उसी के साथ किमी को देंगे मृत्यु का दंड। यूजोंग यहाँ पे मौजूदा जरूर रहेंगे, पैसिव का इस्तेमाल करते हुए कर्सर्स का इस्तेमाल किया गया जरूर था, लेकिन तो भी यहाँ पे उनको मृत्यु दंड के
हाथ उतारते हुए। देखिए जिस तरह से डार्क का पोजीशन हमने देखा, पहले ही वहाँ बुश पे जाके खड़े हो गए थे बहुत बेहतरीन तरीके से। लैंसलॉट अभी यहाँ पे देखिए अपना बफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। गोल डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल डिफरेंस अभी चल रहा है और भी शुरुआत हुई है। अगर इसी तरीके से मेंटेन करते हुए चलिए यामा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे पहले वियोले को भेजा जाएगा मिस्टूडेंट के द्वार और बहुत ही बेहतरीन पारी से वापसी करने के लिए कोशिश जरूर की जाएगी। उसके साथ सुनानी स्लैम यहाँ पे दिया जाएगा और डैमेज देने का प्रयास, ग्रेंजर किलिंग स्प्री, डबल किल लेने का और इसके साथ डबल किल ले लिया गया है टोबी ने और बहुत ही बेहतरीन एक जो अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट किल वो यहाँ पे लेते हुए साबित करते हुए दिख रहे हैं। यामा स्पोर्ट्स पूरे जोश के साथ आ चुकी है। 5 ये यहाँ पे बात करें 5/9 यहाँ पे स्कोर चलता हुआ। यामा अभी 4 किल से आगे हैं और परंतु यहाँ पे देखिए टरेट से भी आगे चल रही हैं। एक टरेट पुश हो चुका है, बॉटम लेन पे शायद एक और टरेट पुश होने की तैयारी की जाएगी। यूजोंग यहाँ पे मौजूदा जरूर रहेंगे, प्रयास रहेगा बचाने का, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर हमला किया जाएगा और इसी के साथ उनको यहाँ पे मिडफील्ड देते हुए बॉटम लेन का टरेट वो भी हासिल कर लिया गया है। तो पारी देखिए बहुत बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमला किया जाएगा, शट डाउन दिया जाएगा लैंसलॉट के द्वारा। सरार मून मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक पारी यहाँ पे जो है आगे चल रही थी, इसी के साथ उसको पीछे खींचते हुए लेके आए, पहिए का चक्का गोल घुमाते हुए और ये जो टेबल है इसको फ्लिप करते हुए दिख रहे हैं हमको। जी बढ़िया परफॉर्मेंस आता हुआ वापस से टीम यामा स्पोर्ट की तरफ से, क्योंकि वापस से जो है टावर जो है निकाल लिया गया है। 2 टावर जो है वो टीम यामा की तरफ से निकाला गया है और इधर वापस से टर्टल जो है वो आने वाला है। टर्टल के ऊपर नज़र रहेगा इस टाइम पे। लास्ट टाइम पे टीम यामा ने निकाला था, टर्टल आदित्य ने निकाला था। अभी देखना पड़ेगा टर्टल जो है कौन सा टीम निकाल पाती है। फार्म डिफरेंस ज़्यादा नहीं है मैं कहूँगा। चलिए सुनामी फ्लैम का बढ़िया इस्तेमाल का अल्टीमेट आता हुआ बढ़िया खतरनाक हो सकता है। बहुत ही लो एचपी के साथ बचने में कामयाब रहेंगे उस टाइम पे ड्रैगन। तो चलिए पीछे धकेलने में समझदारी, पीछे जाने में समझदारी और पीछे धकेलने में कामयाब होते हुए टीम यामा। मिड का टावर जा सकता है, लैंसलॉट चार्ज करेंगे, अपना अल्टीमेट लगाएंगे। बट चलिए खालिद को डाउन किया गया है, परामिस को भी डाउन करेंगे नतन इस टाइम पे। 7-11 का स्कोर लाइन, टावर जो है वो निकाल नहीं पाए। देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ब्लू बफ के ऊपर फाइट है, लैंसलॉट से मून अपना बफ सिक्योर कर रहे हैं। बफ जो है वो सिक्योर कर लेंगे आराम से। बाकी देखना पड़ेगा टावर के ऊपर क्या दबदबा बना रहता है, क्योंकि मिड के ऊपर चलिए वापस से जंप लगाएंगे। सुनामी फ्लैम का वापस इस्तेमाल, बहुत ही लो एचपी और ग्रैंजर बढ़िया किल सिक्योर करेंगे ड्रैगन का इस टाइम पे। 7-12 का स्कोर लाइन हो चुका है। टावर डिफेंड क्या कर पाएंगे? ईव अपना अल्टीमेट लगा चुके हैं, नतन घुस चुके हैं गैंग में, एजित पकड़ेंगे। बढ़िया डैमेज, नतन का डबल किल हो चुका है। क्या ट्रिपल किल मैनियाक हमें देखने को मिलेगा? शट डाउन किया गया है वैसे नतन को, फोबियस ने डाउन कर दिया गया है नतन को और मिड का टावर शायद से निकल सकता है। बट चलिए डार्क पीछे जाने में समझदारी दिखाते हुए यूजोंग वापस से उड़ के आते हुए गैंग में। तो बढ़िया रिप्ले था। सिनरा क्या कहोगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मौका देखिए जिस तरह से यहाँ पे इंगेज जरूर अंदर किया था, डैमेज देने का प्रयास, वो टावर जो है पुश करना चाहते थे लेकिन वो मौका नहीं दिया नोक्टोरा स्पोर्ट्स ने। भले किल ले लिए गए लेकिन मिड का जो टावर है वो देने से इनकार किया गया। नेतन का अच्छा एक शुरुआत था, डैमेज देने का प्रयास किया था, एक किल उठाया, दूसरा किल उठाने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे शट डाउन डार्क के द्वारा दिया गया और पीछे से वहाँ पे जो है उनको जो है यहाँ पे मिड के द्वार पे भेजा गया। आप एक बार नोटिस करेंगे नोक्टोरा जो है किल जरूर दे रही हैं लेकिन टावर नहीं दे रही हैं और ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि टावर आपके जब तक खड़े रहेंगे तो आपके जो मिनियन प्रेशर है वो उतना ही कम रहता है और यामा स्पोर्ट्स ये बात को जानती है, इसलिए वो पूरी तरीके से ट्राई कर रही हैं। और लैंसलॉट को देखिए नीचे क्लियर करने गए थे लेकिन डार्क के द्वारा रोका जाएगा उनको, लेकिन फाइट अभी छूटी नहीं जाएगी। सुनामी स्लैम का इस्तेमाल और उसी के साथ मेगा किल टोबी की झोली में और इस टोबी के साथ देखिए 8-1-3 का स्कोर हो चुका है उनका। उनको रोकना जो यहाँ पे जरूरी रहेगा क्योंकि डेथ सोनाटा के साथ जो डैमेज है वो आता हुआ दिखेगा हमें और देखिए मिनियंस जो है यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। विलेन की तरफ डैमेज देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। किमी के ऊपर प्रहार किया गया है, किमी बचते हुए निकलते हुए किसी प्रकार से और काइल यहाँ पे जो है सपोर्ट देने के लिए रहेंगे लेकिन वो मिनियन जो है आने नहीं देंगे। मिड का एक टावर जा चुका है, दूसरा टावर जाने से इनकार करेंगे और उसके साथ जब बात कर रहे थे पीछे क्रिस्टीजी यहाँ पे देखिए लॉर्ड को स्लेन कर दिया गया है तो मौका नहीं मिल रहा है एनओसी को यहाँ पे देखिए किसी तरीके से। नोक्टोरा स्पोर्ट्स वापसी करने का प्रयास कर रही है, छटपटा रही है इस समय और यामा स्पोर्ट्स इस समय पूरे रुतबे के साथ आगे चलती हुई।
टोबी, इस बंदे पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर इसको खुला छोड़ा तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी। तो लैंसलॉट को किसी तरीके से टोबी को रोकना पड़ेगा कि अगर इस बंदे का यहाँ पे टाई प्रेशर नहीं टूटा तो वो प्रेस जब करेगा तो वो बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है यहाँ पे। चलिए प्रयास जरूर करेगा अंदर जाने का प्रयास, लेकिन संभलते हुए पीछे आएंगे। मिड का टावर जाता हुआ दिखेगा हमको। होली शील्ड अभी पर्याप्त रूप से रहेगा। होली शील्ड चुराने का यहाँ पे देखिए कोशिश जरूर रहेगा और इसके साथ होली शील्ड है वो जरूर जाएगा। और अभी टॉप लेन से आएगा, लगता है यहाँ पे कि एंड होता हुआ हमें दिख रहा है या फिर डिफेंड होता हुआ इजीली हुक कर सकते हैं यहाँ पे डिफेंड। क्या लगता है आपको स्पीकिंग भाई? आई थिंक डिफेंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा अंटिल एक सुनामी स्लैम आता है। आ सकता है, चांसेस हैं। चलिए गैंग लग चुका है, शुरू हो चुका है फाइट। बैकलाइन को मार करने की कोशिश करेंगे ड्रैगन, बट अनस्टॉपेबल लगा चुका है लेंसलॉट। फ्लिकर का बड़े इस्तेमाल करते हुए लेंसलॉट क्या बच पाएंगे? लेंसलॉट ने अच्छा टारगेट किया था उधर ग्रैंजर को, बट टोबी को मारना मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा इस मैच पे। टोबी 9 किल के साथ फुल ऑन स्काई पियर्सर का स्टैक है उनके पास। और चलिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मिड से मिनियंस आएंगे, मिड का टावर निकाल लेंगे शायद से टीम यामा स्पोर्ट्स। तो चलिए टीम यामा स्पोर्ट्स मिड का टावर निकालने में सक्सेसफुल रहेंगे। बॉट लेन के ऊपर प्रेशर वापस से आ सकता है क्योंकि इधर फरामिस ग्रैब कर सकते हैं कायल को। कायल को अगर मार सकते हैं इधर तो आई थिंक चांस बन सकता है। बाकी चलिए अभी वापस से जो है आ चुके हैं, वापस से गैंग में 5v5 का सिचुएशन बन चुका है। तो वापस से 1 मिनट के आसपास के टाइम में वापस से जो है लॉर्ड आएगा। तो देखना पड़ेगा ये लॉर्ड कौन ले जाता है क्योंकि पहला जो लॉर्ड है वो टीम यामा ने सिक्योर किया था। चलिए वापस से रिप्ले के ऊपर जाएंगे सिनराम। तो क्या लग रहा है तुम्हें ये रिप्ले देख के कि क्या था? ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे प्रेशर डाला गया था मिड लेन की तरफ, सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए 2 बंदे पकड़े थे। लैंसलॉट ने अच्छा खासा मार किया था, लेकिन इवोली का देखिए अल्टीमेट आते हुए अपनी टीम को बचाया पूरा डैमेज से। और उसी के साथ देखिए वहाँ पंचर इस्तेमाल जरूर किया था लैंसलॉट ने, परंतु मौका नहीं मिला वहाँ पे और डैश इस्तेमाल करने का, उनको खामखा पीछे आना पड़ा। उसी के साथ इसी मुठभेड़ में 2 प्लेयर जो है धाराशायी हुए थे वहाँ पे। और उसी के साथ आइटम बिल्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए आइटमाइजेशन अच्छा खासा यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं हमको, और आइटमाइजेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। ग्रेंजर का ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट हो चुका है। आखिरी यहाँ पे देखिए आखिरी बिल्ड भी वो आ चुका है और इस विनियम एज के साथ मेरे ख्याल से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टोबी को यहाँ मारना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्ड रैंकिंग की बात करें सबसे आगे अभी वही चल रहे हैं। उसी के साथ दोबारा से यहाँ पे अल्टीमेट इस्तेमाल होते हुए जरूर दिखेगा और इसी के साथ डोमिनेंस आप जो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से डोमिनेट करते हुए जा रहे हैं टोबी, इस बंदे को किसी प्रकार रोकना पड़ेगा वरना यहाँ पे नक्सोरा स्पोर्ट्स के लिए ये मुसीबतें और बढ़ती रहेगी। ये कोशिश था ज़रूर से, मैं कहूँगा हकूरा का और सिरर मून का भी बहुत बढ़िया कोशिश था, बट कामयाब नहीं रहे। फ्लिकर का बढ़िया इस्तेमाल किए थे टोबी उधर और बचने में कामयाब रहे। उनके पीछे फेरामिस भी थे, तो बढ़िया गेम प्ले आता हुआ टीम यामा स्पोर्ट की तरफ से। तो ये लॉर्ड वापस से मिल चुका है यामा स्पोर्ट्स को। तो देखना पड़ेगा लेन मेंटेन करके कैसे प्रेशर करते हैं क्योंकि मिड का एविटेड टावर उनके पास नहीं है। मिड से आएगा लॉर्ड और दोनों साइड से अगर पुश होता है मिनियंस तो आई थिंक होल्ड करना मुश्किल होगा इस टाइम पे टीम नॉक्टूरा के लिए। चलिए लेंसलॉट को पीछे भगाया जाएगा इस टाइम पे। तो देखते हैं यार क्या होता है। ग्रैंजर को मार्क करने में सक्षम रहेंगे इस टाइम पे। 9-18 का स्कोर लाइन। लॉर्ड आ रहा है बेस की तरफ। टीम यामा स्पोर्ट्स चार्ज करेंगे इस टाइम पे। चलिए करते हुए फ्लिकर लगाएंगे। फरामिस ने भी अपना अल्टीमेट डाल दिया। मेगा किल को डाउन किया गया है। लेंसलॉट बहुत ही लोग के साथ बचने में कामयाब रहेंगे। शट डाउन किया गया है। 2v4 का सिचुएशन है। ग्रैंजर जिंदा है। इमोटबाजी चल रहा है फुल ऑन। क्या लेंसलॉट को पकड़ा जाएगा? क्या लेंसलॉट को पकड़ के दबोच के मारा जाएगा? जी हाँ मारा जाएगा। करेंगे उनको। मिड से मैच को खत्म किया जाएगा और फुल ऑन रिकॉल बाजी और टीम यामा स्पोर्ट्स सेकंड गेम जीतते हुए 2-0 का स्कोर लाइन। जो प्रेडिक्शन था वो पूरा उल्टा पड़ा सिंद्रा इस मैच में। बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा। यहाँ पे अगर बात करें यामा स्पोर्ट्स की तरफ से 2-0 का स्कोर होता हुआ दिखा। हमें पूरी तरीके से डोमिनेट किया नक्सोरा स्पोर्ट्स को और अपनी जो पारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेली यहाँ पे। और क्या ही पारी थी एकदम, मैं तो कहूँगा एकदम उम्दा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली इस गेम में। चलिए प्लेयर ऑफ द मैच टोबी गोल्डन की तरफ, क्या ही बेहतरीन यहाँ पे खेला इन्होंने। डैमेज देखिए 70,000 का डैमेज यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इनका पारी था वो था। टीडीए की बात करें 12-1-5 और क्या ही
भाई पारी यहाँ पे खेली है यार, और क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स ने दी है। ठीक, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था उनकी तरफ से। ग्रैंजर बहुत ज़्यादा एस्केप किए, बहुत बार उनको मार करने की कोशिश किया गया था, बट हर बार वो बचने में कामयाब रहे थे। और दूसरे साइड पे टर्टल सिक्योर, लॉर्ड सिक्योर में बहुत ही बढ़िया था क्लच टीवी का रेट्री मैं कहूँगा। और दूसरे साइड पे मार करने की कोशिश कर रहे थे लेंसलॉट और खालिद, ड्रैगन भी मार करने की कोशिश कर रहे थे, बट थोड़ा सा पकड़ने में चूक के वो लोग। और मैं बोलना चाहूँगा कि एफ टीवी जो है वो जो कि केलिया खेल रहे थे, बहुत बार हमने देखा है भाई फ्लिकर के साथ सुनामी स्लैम्स। सिंद्रा, आई थिंक तुमने भी बहुत बार देखा होगा, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा होगा उनकी तरफ से। जितने बार उन्होंने सुनामी स्लैम लेके गए हैं सीधा वहाँ पे मिड व्यू, तो उन्होंने जो है बांसुरी वो जरूर सुनाया जैक सोनाटा के साथ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वो गए, तो उनको पता था कि किंग को मार करना है, और जितने बार गए हैं हर बारी सक्सेसफुल यहाँ पे उनके जो है एक तरीके से कमाल लगे हैं, और हर बारी जो है यहाँ पे एक खेल मिले उनके तौर पे। बहुत ही बेहतरीन पारी यहाँ पे चलती हुई दिखेगी। गेम स्टैट्स की बात करें, देखिए बहुत ही अच्छा खासा डैमेज देते हुए दिख रहे हैं ग्रेंजर। देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे डैमेज दिया उन्होंने, और यहाँ पे डेकिंग भाई जो गेम प्ले था, जो दोनों ही टीम की तरफ से बहुत बेहतरीन गेम प्ले था। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लगता है कि नोक्टोरा स्पोर्ट्स की तरफ से क्या गलती हो गई जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है कम बैक नहीं कर पाई? कम बैक करना चाहते तो वो लोग, बट ग्रैंजर को डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट ग्रैंजर को डाउन करना मुश्किल था क्योंकि उनके साथ जो कि फेरामिस था, उनके साथ उनके आसपास फेरामिस था, तो ग्रैंजर हमेशा बच के निकलने में कामयाब हो रहे थे। और दूसरे साइड पे जो ईव था, उनको आई थिंक इजीली मार्क कर रहे थे। टीम क्रूप्स जो है वो नंबर 5 पे है, तो देखते हैं यार क्या होता है आगे। बाकी थोड़ा सा प्लेयर्स का बात किया जाए। अरबी, प्लेयर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? प्लेयर्स की बात करें तो भाई CRQ के जो हमारे एक्सपी लेनर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। कल उन्होंने ताबड़तोड़ जलवा दिखाया था, जो अपने पहले फोबियस के साथ खेल रहे थे, कमाल का गेम प्ले दिखाया था। उसके बाद ग्रेंजर की भी तारीफ करना देखने को मिली थी। एक टीम के पास YSS था, दूसरी टीम के पास हायाबुसा था, और YSS ने पकड़ के मारा था भाई हायाबुसा, क्योंकि जब भी हायाबुसा आता चान करने की कोशिश ज़रूर से करेंगे घटोत्कचा। तो ओवरऑल तो गेम में पहला गेम है, देखते हैं यार क्या होता है। गेम में जाएंगे तभी पता चलेगा कि दबदबा किसका भारी रहेगा, टीम इलूसिविटी या फिर टीम CRQ। तो देखते हैं यार क्या होता है। टीम EVT अभी थोड़ा टॉप पे बैठा हुआ है, नंबर 3 पे है, सॉरी नंबर 4 पे होगा शायद, और CRQ आई थिंक नंबर 5 पे है अभी इस टाइम पे। तो देखते हैं यार आरवी क्या लग रहा है ड्राफ्ट देख के, तुम क्या बोलोगे? फर्स्ट ब्लड, मैं पूछता हूँ, फर्स्ट ब्लड जो है वो ये मेरा क्वेश्चन है भाई, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, मुझे पूछने दो। मैं आपसे पूछता हूँ क्या लगता है? मेरा भी दाव देखने को मिल रहा है शुरुआत से ही, मतलब अर्ली में से ही मिड गेम में मिड लेन पे फाइट हमें देखने को मिल रहा है। जो पहला जो वेव आके मिड कर रहा है ना, उसी टाइम पे फाइट शुरू हो रहा है। तो चलो जो है हाया ने अपना ब्लू बफ शुरू कर दिया, और YSS अपना रेड बफ शुरू करेंगे। तो देखते हैं यार क्या होता है। मिड के ऊपर दोनों ही हाइपर अपना बफ सिक्योर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर जो हायाबुसा क्या चुराने में सक्षम रहेंगे इस टाइम पे? हायाबुसा आएंगे, चलिए लो HP हो चुका है इस टाइम पे, खतरा हो सकता है। फर्स्ट ब्लड, जी हाँ फर्स्ट ब्लड, आरवी मिड लेन के ऊपर ही फर्स्ट ब्लड आ चुका है, और इधर सेकंड ब्लड भी हो सकता है। चलिए गटो को भी निकाला गया है, सेकंड ब्लड भी हो चुका है, तो 2 किल से टीम इलूसिविटी आगे चल रहा है अभी आरवी। तो मिड लेन के ऊपर 2 किल। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही चतुराई से हायाबुसा के बफ के पास आया, उन्हें थोड़ा सा पोक किया और 2 किल निकालने में कामयाब हो गए, जो एक अच्छी शुरुआत प्रोवाइड करता है टीम इल्यूसिविटी को। यहाँ पर अगेन जो हमारे रोमर है कंटिन्यूसली पोक करते हुए नजर आएंगे। हायाबुसा थोड़ा सा संभल के खेलेंगे, थोड़ा सा संयम के साथ खेलेंगे, और जितना ज़्यादा हो चुके अर्ली गेम की जो फाइट्स है ना, उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। बॉट लेन यानी एक्सपी लेन में बड़े प्यार से यूरेनस से लपू देखने को मिल रहा है। टॉप लेन में एस्मा दीदी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। ग्रेंजर की HP यहाँ पर लो हो गई थी, थोड़ा सा उन्होंने अपना रिवाइटलाइज का इस्तेमाल किया, सो दैट वो आराम से वापस आके अपने मिनियंस का जो प्रेशर है उसे हैंडल करने में कामयाब हो जाए। टॉप लेन पे अभी नहीं, ज़्यादातर हमें एक्सपी लेन में यहाँ पर गैंगमैन देखने को मिलेगा। 11 सेकंड के अंदर यहाँ पर टर्टल आ सकता है, टर्टल से पहले यार फाइट लेना बहुत ज़्यादा खतरे साबित हो सकता है, और इसी के साथ एक और किल मिलेगी, बट जान गंवाना पड़ेगा। जंगलर जो थे हमारे वो मारे गए, और जंगलर की मृत्यु के साथ मदारा उठिया यहाँ पर चेज करते हुए आएंगे और अपने शारिंगन से जाम
मौत के घाट उतार देंगे क्या मुझे समझ नहीं आया सीआरक्यू ने यहाँ पर, क्योंकि आपको ओपनर का जंगलर मिल गया था, फाइट को अवॉइड करना था तो थोड़ा सा पीछे आना था, उसके बाद टर्टल पे जाना था, बट नहीं, फाइट को कंटिन्यू किया, मृत्यु के घाट उतर गए और इसके बाद अब बड़े प्यार से जो टीम ईवीटी है लॉर्ड लेने में कामयाब हो जाएगी। मदारा अंदर आएंगे, पकड़ना चाहेंगे, सॉरी टर्टल सिक्योर कर लिया, टर्टल पे परफेक्ट टर्टल मिलेगी, अंदर जाएगी, अरे कि यहाँ पर जान निकल सकती थी, बट अपना एयूजी का इस्तेमाल करके जान बचा के भागने में सक्षम हो जाएंगे। तो ओवरऑल ईवीटी यहाँ पर अर्ली गेम डोमिनेशन दिखाते हुए मिल रही है। आया का जो बफ है कंटिन्यूसली उसे चेज किया जा रहा है, इस बार लेने में कामयाब तो हो जाएंगे, बट मुंह छुपा के उन्हें भागना पड़ रहा है। ज़्यादा देर वो जो रणभूमि है उसमें रह नहीं सकते, क्योंकि उनको किसी भी क्षण मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। अगेन बॉट लेन में कसमकस देखने को मिल रही है, जो हमारे चिंची हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर फोक करते हुए नजर आ रहे थे। 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन थी, जिसको भापते हुए ईवीटी अपने कदमों को पीछे खींच रही है। 80 सेकंड के बाद दोबारा टर्टल आएगा। पहला टर्टल हमारी टीम ईवीटी को मिला है, क्या जो टीम सीआरपी में सेकंड टर्टल के लिए फाइट लेगी, या फिर वो भी ईवीटी बड़े प्यार से लेने में कामयाब हो जाएगी? देखने वाला बात है, बट 3 मिनट का गेम हो चुका है। आरवी और फार्म डिफरेंस देखो, फार्म डिफरेंस लगभग 2K। टीम इल्यूसिविटी डोमिनेट कर रहे हैं मैच को। मैं कहूँगा कि 3 मिनट के अंदर 2K का गोल्ड लीड अच्छा खासा ही गोल्ड लीड होता है। तो फिर टर्टल उनको मिला है, पहला वाला गोल्ड लीड मिलना भी जायज़ है। तो चलिए फाइट जो है वो शुरू हो चुका है, अल्टीमेट लग चुका है दोनों ही टीम का। गटो को निकाला जाएगा इधर वाइल्ड के द्वारा, और यूरेनस जंप करेंगे ज़रूर, बट किसी को नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा लेट आए थे लापू के साथ। तो देखते हैं यार क्या होता है। 1-6 का स्कोर लाइन हो चुका है। लेन पुश, एक भी टावर अभी तक नहीं निकाला गया है। लेवल 7 हो चुके हैं YSS, और दूसरे साइड पे हाया लेवल 6 पे है। तो देखते हैं यार क्या होता है। टॉप की तरफ ग्रैंजर के ऊपर खतरा हो सकता है। ग्रैंजर मुश्किल होगा, घुस के मारा जा सकता है। क्राइसिस जाएंगे अंदर, बट चलिए ग्रैंजर इस टाइम पे बचने में कामयाब। गटो को वापस से लिया जा सकता है। गटो बचेंगे क्या? यस, गटो जो है वो बच जाएंगे इस टाइम पे। आएंगे इधर 4v4 का सिचुएशन बन रहा है वापस से। तो टर्टल जो है वो वापस से आएगा अभी। तो देखते हैं यार इस टाइम पे टीम सीआरक्यू टर्टल को उठाती है या फिर टीम इल्यूसिविटी टर्टल को उठाती है, देखने वाली बात है। तो आरवी, क्या रहेगा तुम्हारा प्रेडिक्शन? सेकंड टर्टल जो है वो कौन लेके जाएगा? मेरे को लगता है सेकंड टर्टल ईवीटी लेने में कामयाब हो जाएगी। उनका दबदबा है, उनके पास गोल्ड की एडवांटेज, और इसी के साथ यहाँ पर अंदर घुसेंगे जो ईवीटी के अल्फा है, उनकी अल्फा नहीं सॉरी, उनके जो महारथ है, उनकी जो एचपी थोड़ी सी लो चुकी है। बड़े प्यार से ईवीटी ने रेट्री के साथ यहाँ पर टर्टल सिक्योर कर दिया। कंटिन्यूसली गॉड स्पीड को चेज किया है, बट अपनी गॉड की स्पीड के साथ भागने में कामयाब हो गए। इसी के साथ पिंची अंदर गए थे, पॉइंट एचपी में बच के बाहर निकलेंगे, अपने रिवाइटलाइज का इस्तेमाल करेंगे, वे एचपी भरेंगे। ये जो टर्टल का कंटेस्ट था बड़े प्यार से जीत गए। यहाँ पर हायाबुसा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, शेक्वाड शैडो का इस्तेमाल किया, अंदर गए। फर्स्ट किल थी उनकी एचपी लो की, उसके बाद अल्टीमेट लगा और बड़े प्यार से गॉड स्पीड को उनकी स्पीड के साथ मृत्यु के घाट उतार दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही जो हमारे सीआरक्यू थे उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें यहाँ पर बूस्ट होगा, वापसी देखने को मिल सकती है। तो केलिया है कंटिन्यूसली हायाबुसा को फॉलो करिए, क्योंकि उनके लिए हायाबुसा भी सबसे ज्यादा एम टारगेट है। ग्रेंजर पे इतनी ज्यादा नजर नहीं जा रही है, ग्रेंजर को इतना ज्यादा टारगेट नहीं किया, और उनका स्काई पियर्सर बन चुका है। कल भी इस व्यक्ति ने स्काई पियर्सर सब बनाया था और उसके बाद किल्स की लड़ी लगा थी। अगर ग्रेंजर को चेकआउट नहीं किया गया तो ईवीटी की दिक्कतें बहुत बहुत ज्यादा बढ़